In this aspect, normally as a BP enterprise head, I'm organizing on alternate Fridays one training program for all the EB staff. Every alternate Friday, we are organizing. So you ask your team to participate actively in that activity. They will be knowing a lot of things, useful things. Secondly, whoever has not attended that, so that training program along with the presentation is also hosted at ALTTC LMS portal. So later on also you can refer to that. A lot of useful information, case studies are available. Problem क्यों है third point का? Success rate is very low in sales activity, particularly enterprise. Normally we assume that for private business acquisition, your success will be 4 to 5%. Means out of every 100 efforts, only 4 to 5 efforts will be fructified. जो भी फेलियर ड्रिवन एक्टिविटी होती है उसमें लीडरशिप का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है. आप लोगों को यू हैव टू कीप मोटिवेटिंग योर टीम. इफ दे फेल then you have to support them, you have to guide them, you have to mentor them. Only then long-term success can happen in EB business. And EB business is basically a long-term game. Probably this year you have made some effort, not convert, but that effort will not go waste. Actually, that lead might get converted in next, let's say, next year or next to next year. So you have to keep motivating your team. Now coming back to one critical aspect, because strategy for revenue growth and how you are going to monitor. We all know that connectivity is becoming slowly commodity business. पहले हम बहुत हाई रेट में दे देते थे, गवर्नमेंट एंटिटी को अभी भी हम दे देते हैं, but even in government sector also, PSU sector also, our competitors are aggressively approaching them. And what we are seeing as a field people also, you must be knowing that rates are sometimes 1/5 of our card rate. Because ultimately it has become a commodity. So not much revenue growth we can expect from providing only connectivity. Yes, there is scope. I would say there is. But still, we have to broaden our perspective. We need to start offering one-stop solution to the customer. For example, at larger scale, let me give some examples. And a smaller scale also we can discuss. For example, Civic, that CBDT, CBIC, we can say, Central Board of Indirect Taxes. We were giving just connectivity, one connectivity. They were taking second connectivity from some other player. They were having their own SI. This time we approached them. We said that we will be offering one-stop solution. Don't bother about anything. Just give us the LOI and we will give one-stop solution. So now they have moved from, we have moved rather from providing just one connectivity to complete solution. What was the benefit to BSNL? Revenue growth of 4 times. Because we are going to provide even secondary connectivity, we are going to provide SI services, everything we are doing. Similarly, in case of DOP, Department of Post, that is also more than 1,000 crore business. And the business I was talking about earlier, that is 600 crore business. Again, we were providing just second primary connectivity. So revenue was just, you can just assume 100 crore. Now we are offering complete solution. So for 5 years, revenue can be more than 1,000 crore. So on annual basis also, we will be earning more than 2.5 times revenue we are expecting. 300 crore around per year. It can go to 1,500 crore.
That is the only way, because in case of primary connectivity in civic case also or DUP case also, you would have to offer at least 20 to 30% discount to the current rate. तो हमारा रेवेन्यू क्या होता, 20 से 30% घटता. अभी क्या हो रहा है, 250% बढ़ रहा है. Right? So this is the case study I just shown in this perspective. ये आप अपने लेवल पे भी करिए. एज अ BA head, I encash that opportunity multiple times. For example, in my area, new medical university by government was being set up. है ही, अजीत जी जानते ही हैं, मेडिकल यूनिवर्सिटी. वहां पर एक ऑप्शन था, 100 MPPS की हम ILL दे देते एज ऑपरेटर, बस हो गया. बट द डायरेक्टर वाज मेडिकल प्रोफेशनल, his total staff was doctors staff. They were not knowing anything about IT. So when I discussed with them, their vice chancellor, their director, they said that कात्यायन जी आप ऐसा करें कि पूरा आप करवा सकते हैं क्या? Yes, why not? पूरा नेटवर्किंग, इवन उनका जो MIS सिस्टम चाहिए, जो टिकट बुकिंग चाहिए फॉर पेशेंट्स, सब हमने कराया. तो एक 100 MBPS या 50 MBPS लीज लाइन की जगह मल्टी फोल्ड रेवेन्यू उससे आया. तो हम सबसे, आई वुड रिक्वेस्ट ऑल द BA हेड्स कि आप लोग वन स्टॉप सोल्यूशन की तरफ मूव करिए. ओनली देन वी कैन इंक्रीज आवर रेवेन्यू. में हमारा एक्सपीरियंस है कि ऐसा ही कोई है ही नहीं, वो सबके वो जो है सबसे बात करो तो कहते हैं सारे एक्सपायर हो गए, नए किसी को कराने के लिए बोलो तो करते नहीं है. तो आप लोग यहाँ से उनसे बोले कि जो SIs हैं उसमें कंजूसी क्यों करते हैं. वो मैंने भी बोला है जैन साहब से, मतलब इसका सोल्यूशन इस बार हम निकाल रहे हैं. और उसमें वो जो एक कंडीशन है वैन के का एक्सपीरियंस की, उसको लोगों को समझ में नहीं आता वैन क्या होता है. और वो या तो अभी एक गुड न्यूज मैं आप लोगों को दे देता हूँ. सर का पॉइंट बहुत, एज अ BA head also I have also faced the same problem since I am now in headquarter. So this is my responsibility to address them, and we are addressing them. We are going to empower all the BA head for empanelment of SIs. कमेटी ने अप्रूव कर दिया है, MC ने भी अप्रूव कर दिया है, और मुझे लग रहा है कि अभी NK गोयल जी आएंगे तो वो बताएंगे और डिटेल में. मैं भी उसका पार्ट हूँ कमेटी का. उसमें वो भी अलाउ करते हो ना आपकी. हम क्या करने जा रहे हैं, बहुत राइट पॉइंट. मतलब कंडीशन में थोड़ा आपको हमने बहुत ही सिंपल कर दिया है प्रोसेस. BA हेड भी छोटे, उसको हम BA सिल्वर करके नाम दे रहे हैं. वो आप सीधे एम्पैनल करेंगे और उसके थ्रू आप छोटे मोटे काम करा सकते हैं. दूसरा फायदा आपको क्या लेना है, एक CPP पॉलिसी में भी मॉडिफिकेशन करना है, चैनल पार्टनर पॉलिसी. अगेन PGM EB2 हमने अपना प्रेजेंटेशन डिवाइड कर रखा है, वो डील करेंगे इस पे. तो CPP में हम क्या करने जा रहे हैं कि कई बार आप कोई चैनल पार्टनर हो जो जो गवर्नमेंट मशीनरी है, थोड़ा उसको स्मूदन कर दे, है ना. तो इसमें हमने क्या किया है कि सभी को अलाउ किया है, और आप एम्पैनल करेंगे जिसको भी, दो चार को कर लिया, वो आपका CPP भी बन जाएगा, है ना. तो उसको बिजनेस एक्विजिशन में भी यूज करना है. प्राइवेट का 10% तो कर दो यार, 8 से. उसमें है, आप 8% भी ठीक है, आप देखिएगा वॉल्यूम के बेसिस पे ठीक रहे. और रिटेंशन रिटेंशन का भी रखा है. रखा है. सो नई चीजें हम कर रहे हैं, क्योंकि कॉर्पोरेट ऑफिस में फील्ड से लोग होते हैं, तो ऑब्वियसली जो फील्ड के इश्यूज हैं स्लोली दोज विल बी एड्रेस. अच्छा, मैं क्विकली फिर से आता हूं आपके अटेंशन के लिए. मैंने कहानी तो सुना दी कि कनेक्टिविटी के साथ साथ आपको वन स्टॉप सोल्यूशन देना है. छोटे मोटे जैसे नेटवर्किंग का, ये तो आप अपने लेवल पे कर सकते हैं सिल्वर SI के थ्रू या सर्किल सिल्वर SI. अब ये आता है दूसरी चीजें जो कस्टमर आपसे मांगेगा. तो SD WAN के लिए आपका CNTX साउथ की यूनिट ने, बैंगलोर बेस्ड जो प्लेटिनम यूनिट है, उसने 12 पार्टनर्स को एनपैनल किया.
उस पे कांटेक्ट डिटेल्स सब कुछ मिलेगा, ईबी पोर्टल पे भी और इंटरनेट। इन पार्टनर से आप कांटेक्ट करिए और एचडी सर्विस वैन सर्विस आप ऑफर कर सकते हैं। राउटर की जगह एक तरीके से आप मान लें कि एक इक्विपमेंट जो कि कनेक्टिविटी को एक्सटेंड करने में आपकी हेल्प करेगा, बस इतना ही मान लीजिए। सॉफ्टवेयर डिफाइंड वाइड एरिया नेटवर्क, You will supply that hardware and या including hardware. यस, ये आपकी अवेयरनेस के लिए क्विकली मैं कर दूं। दूसरा, आईडीसी एंड क्लाउड सर्विसेज में आपको पता होगा मोस्टली बिकॉज इट्स ओल्ड सर्विस, सो एवरीवन नोज दैट cyber security as a service is also huge requirement of our customers many a time, and if it is not, then you have to sensitize them that as a government entity, particularly if some customer is government entity, they are prone to cyber attacks, so they have to go for cyber security. So 3 partners are already in panel by the same unit, CNTX South, Bangalore based Vietnam. सर ये SD-WAN में जो हमारे SIs हैं 12 SIs है ना सर, उनको भी BSNL ने कोई ऑर्डर नहीं दिया है, क्योंकि अभी हमने ट्रेनिंग की बात की उनसे, तो कई SIs ने जो है वो मना कर दी ट्रेनिंग से ना, हम तो फिर 5 या 6 SIs में ट्रेनिंग करा दी हमने। मैं करवा देता हूँ। मतलब कि कोई प्रोक्योरमेंट BSNL की तरफ से कुछ नहीं हुई है, तो हम वी आर नॉट एबल टू प्रोवाइड दैट ट्रेनिंग बिकॉज़ इट्स इन्वॉल्व द पता कॉस्ट। नहीं किससे बात किया, क्योंकि SD-WAN पार्टनर्स की दूसरी जिम्मेदारी बिजनेस लाना भी है, और जो अगर एक्टिव नहीं होगा प्रोबेबली वी माइट ब्लैकलिस्ट। मुझे बताइएगा लेटर ऑन कौन ऐसा रिस्पांस दे रहा है। बट SD-WAN प्रोक्योरमेंट स्टार्ट हो गई है BSNL में, हाँ हाँ, SD-WAN सॉल्यूशन में, लेकिन इसमें SIs तो सर 12 है, 12 SIs है, तो 12 में आपका मल्टी वेंडर इक्विपमेंट्स हाउ इट विल हैंडल। कस्टमर को आप ऑफर करेंगे ना उसको, जो आप तो अपने यहाँ, अच्छा SI में आपको EOI करनी पड़ेगी क्विकली, जैसे SI का करते थे वैसे ही SD-WAN पार्टनर्स का भी आपको करना पड़ेगा, और प्राइस डिस्कवरी करके आप दे सकते हैं। आप साइबर सिक्योरिटी एज ए सर्विस में पार्टनर्स के थ्रू भी जा सकते हैं। दूसरा एक और ऑफरिंग है, दैट इज कॉल्ड एज क्लीन पाइप। अगर किसी को आप ILL दे रहे हैं तो क्लीन पाइप का टैक्स कार्ड भी है, 10% एक्स्ट्रा टू द चार्जेज यू आर टेकिंग। इसमें ऑलरेडी DDoS इक्विपमेंट में लगा हुआ है, ऑफरिंग क्लीन पाइप सर्विसेज टू टॉप 31 कस्टमर्स। सो आप कह सकते हैं कि ILL लीजिए, उसके साथ क्लीन पाइप ILL नहीं, DDoS attacks will be totally avoided. DDoS साइबर सिक्योरिटी एज अ सर्विस में तो हम बहुत कुछ दे सकते हैं, ऑल काइंड ऑफ सर्विसेज आर अवेलेबल थ्रू पार्टनर्स। क्लीन पाइप में बेसिकली आप क्लीन कर देंगे, वेब अटैक नहीं होगा, उनके वेबसाइट पे कोई अटैक नहीं होगा, या उनके सर्वर्स पे कोई अटैक नहीं, 10% एक्स्ट्रा। क्योंकि अभी अवेयरनेस बढ़ रही है लोग, क्योंकि वो सोचते हैं ILL ले लिया हो गया यार, कनेक्टिविटी तो आ गई ना। बट अब सेंसिटाइजेशन बढ़ रहा है, और इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सेंसिटाइज all our esteemed customers that this is critical thing that they should go for clean pipe. हम देते हैं, फायरवॉल भी देंगे, वो एंड टू एंड सोल्यूशन देंगे, एवरी काइंड ऑफ सोल्यूशन। UTM भी देंगे जो टीम। हाँ, सब कुछ मिलेगा। सर मेरा इसमें एक पॉइंट था, जो आईडीसी है, आईडीसी सर्विसेज है, इसमें सर्कलों में हमारे विद इन आवर ओन एम्प्लॉयज इस सर्विस के बारे में ज़्यादा जानकारी हमें मिलती नहीं है। मी बीइंग फाइनेंस, आई बीन आस्किंग मेनी पीपल कि आईडीसी को हम कैसे बिजनेस गर्नर कर सकते हैं या कैसे इसको मार्केटिंग किया जा सकता है। तो हमारे सर्कलों में इसके आईडीसी के बारे में, जो डाटा सेंटर है या जो क्लाउड सर्विस हम दे रहे हैं, उसके बारे में सर्कलों में इतनी अवेयरनेस नहीं है सर। हो सकता है सर बाकी बीएज में सर्कल में हो सकता है, मेरे सर्कल में आई डोंट फाइंड एनीवन। तो इसके लिए सर कॉर्पोरेट की पॉलिसीज क्या आने वाली है? दो चीजें करिए, एक तो इमीडिएट फिक्स सोल्यूशन मैं आपको देता हूँ, bsnl.co.in पे जाइए, सर्विसेज में जाइए, आईडीसी सर्विसेज में, वहां पर आपको पूरी सर्विसेज की डिटेल,
इसकी सर यूएसपी क्या है सर? व्हाट इज द यूनिक सेलिंग पॉइंट ऑफ दिस आईडीसी सर्विस इन कंपैरिजन टू अदर ऑपरेटर्स हु आर प्रोवाइडिंग दिस सर्विस? अदर ऑपरेटर से कंपेटिटिवनेस क्या होगी, इट्स डिफिकल्ट टू से, इसीलिए बहुत ज्यादा हम बेच नहीं पा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा कंपेटिटिवनेस ये है कि डेटा जो है गवर्नमेंट प्रेमाइसेस में, क्योंकि आईडीसी में होता क्या है कि डेटा इज सिक्योर्ड, stored at some location, which is called like data center, right? So data center is within the government premise. That should be our biggest selling. All other features will be same, similar, all whether it's private operator or BSNL. Second one is we are uptime tier 3 certified data centers. So that is the gold standard for data centers. And we were the prime mover. First time in India, our data centers were certified by the uptime. So quality means uptime certified, highest quality. Second, data security, physical security, because data is residing in government. These two things. Yeah. Is there? नहीं, मैंने गोल्ड स्टैंडर्ड बोला, मींस टीआर सर्टिफाइड डेटा सेंटर बाय द टॉप मोस्ट एजेंसी. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग वर्ल्ड ओवर अप टाइम सर्टिफिकेशन इज द गोल्ड स्टैंडर्ड, मींस बेस्ट स्टैंडर्ड. हाँ, और आईडीसी उनको आप भेज सकते हो फॉर गवर्नमेंट पीएसयू, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट. प्राइवेट में भी जब आप क्लबिंग कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल इफ यू आर ऑफरिंग लेट्स से सम सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, उनको टैली का या किसी चीज का दे रहे हैं, तो डेटा होस्ट आप अपने यहाँ कर सकते हैं. दैट इज आल्सो वन ऑफ द थिंग. नहीं बट इसमें कुछ नहीं, 2 लाइन का है ये कि सपोज कोई काम है किसी के पास है ना, कुछ भी उसको सर्वर लगाने 10-20-50, तो सर्वर ना खरीद के हमसे आईडीसी ले लेते हैं. यही है सिंपल. हाँ हाँ. कनेक्टिविटी विद डेटा सेंटर, कनेक्टिविटी विद डेटा सेंटर तो उसमें डेटा सेंटर तो सपोज जयपुर में लगाया, कहीं लगाया, हाँ, उसको यहाँ से आईएलएल लेनी पड़ेगी उसको. आईएलएल लेनी पड़ेगी या इंटरनेट से जो सर्वर है हम्म. उसके साथ जो पाइपलाइन जो भी आएगा वो कंपनी में भी होगा या अलग से चार्जेबल? ये बताएगा क्यों? नहीं, देखिए क्लाउड में नहीं अलग चार्जेबल होगा. होता है, पर जीबी के बेसिस पे होता है, और बाकी में आपको कनेक्टिविटी देनी है. कनेक्टिविटी कनेक्टिविटी के तो पैसे लगेंगे वो तो, क्योंकि कोई बंदा हमारा वो तो ब्रेड एंड बटर है. कनेक्टिविटी जिस दिन हम छोड़ देंगे, नहीं उस दिन क्या करेंगे? नहीं वैसे भी क्या है कि कोई क्लाउड से 10 MB का लेगा, लेकिन सर टाइम 50 कम का है. लेगा, 100 लेट का मी लेगा. फिनिश ऑफ, because see, that's why in beginning itself I told you that kindly go to the portal hosted by ALTTC, that LMS portal. All the training program about the services are already there. हाँ, ये कर जी को अब तो चले गए वहां, तो व्यास में मिस्टर दीपक गर्ग एंड चावला. ठीक है, क्योंकि हाँ, अब आते हैं स्ट्रेटजी पे पुनः. देखिए, बिजनेस एक्विजिशन के 2 ही तरीके. जैसे हम प्रिमिटिव फेज में और सेपियंस वी यूज्ड टू क्या करते थे, या तो हंटिंग करेंगे या फार्मिंग. ओनली 2 ways to get food. Similarly, business can be acquired only by 2 ways: farming and hunting. Hunting means what? You are not knowing anything. You are just wandering in the woods. उसमें जो मिल जाएगा हंट कर लेंगे. बट इसमें स्किल सेट्स की ज्यादा. हंटिंग इज टफर देन फार्मिंग. इसीलिए फार्मिंग सोसाइटी एज एग्रेरियन सोसाइटी डेवलप्ड एज एग्रेरियन सोसाइटी. हंटिंग हमने छोड़ा. बट बिजनेस एक्विजिशन में हंटिंग एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि आपको नए नए कस्टमर्स को अपने से जोड़ना है. कैसे जोड़ें? एक अप्रोच है जिसको मैं डेलिब्रेट करूंगा, दैट इज क्लस्टर अप्रोच. आप बनाइए, आइडेंटिफाई करिए इन योर बिजनेस एरिया व्हाट आर द इंडस्ट्रियल क्लस्टर, आईटी क्लस्टर या ऑफिस क्लस्टर,
वहां पे कनेक्टिविटी इंश्योर करिए, वहां पर विजिट्स बढ़ाइए, वहां पर अपनी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में अवेयरनेस बढ़ाइए, एंड देन गेट सम न्यू बिजनेस देयर। डेटा सेंटर अगर आपके एरिया में है, so that is very good opportunity. So you have to work for data center business, providing connectivity. Second है, जो आपके पास existing customers हैं, आपके पास बीज होती है, खेत होता है, वहीं पे आप फार्मिंग करते हैं, it's easier than to be achieve. So यहाँ पर भी आपको यही करना है कि जो existing customers हैं, उनको आगे तो सर्विस डिलीवरी एंड सर्विस एश्योरेंस से खुश रखिए, जिससे कि रेट्स अगर जब नई साइकिल में बिलिंग होने जाए तो कम से कम रिडक्शन हो। सेकेंड, डिस्कनेक्शन नो, जिसको हम बोलते हैं रिटेंशन, इन ईबी पार्लांस वी कॉल इट एज रिटेंशन ऑफ द कस्टमर। सो दैट इज वेरी क्रिटिकल एस्पेक्ट ऑफ फार्मिंग। एंड द नेक्स्ट एस्पेक्ट इज, once you are having satisfied customer, if you appraise them about whole product portfolio, आप सभी लोगों ने देखा होगा, customers normally feel that BSNL is just connectivity provider. Many of the time our staff doesn't know what kind of services we can offer. तो पहले तो उनको बोलिए, staff को, they should be aware about all the bouquet of services we are offering. कस्टमर को सेंसिटाइज करें, और जब ये करेंगे तो क्या होगा, न्यू एग्जिस्टिंग बिजनेस मिलेगा, आपको एग्जिस्टिंग कस्टमर से you'll get more business. ये हमारा बल्क पार्ट होगा, और इसीलिए that's why this year we have modified our ranking policy also. We are saying that 40% of the marks will be given for retaining the customer, 30% marks will be given for farming. These two are farming activities, getting more business from that customer. And obvious hunting is required. We have to add more and more customers to our kitty. So we need to weightage for 20 marks for new first time customer also. Private, we are yet to achieve big success in private business. So we need to put more efforts towards that, and we have given that kind of ranking policy also. So I'm not going to deliberate on that. I'm just saying that whatever strategy is there, we are also keeping the same thing in your KPI. IPMS, same CGM का IPMS में same होता है. So I hope कि वो similarly it is being passed on to PA heads and down the line also. Their approach मैंने already hunting के लिए बोल दिया है. This is the common sense thing, but normally we are not doing this. This is the sad part. हमें थोड़ा सा इस पे हफ्ते में एक दिन 1 घंटा के लिए एज अ PA हेड हमें निकालना चाहिए. That is my submission to teacher. उसमें देखिए कौन कौन से स्ट्रेटजी पार्ट के लिए कौन कौन से क्लस्टर्स हैं, उनमें कितनी विजिट्स हुई, कनेक्टिविटी के इश्यूज हैं क्या, हाउ वी कैन एड्रेस द कनेक्टिविटी इश्यूज, अगर जरूरत पड़ी तो क्या मेरा DGM गया या मुझे जरूरत है मैं भी जाऊं. सो ये एनालिसिस आपको करनी चाहिए. सो आई एम श्योर क्लस्टर अप्रोच से आपको ऑलरेडी फायदा हो. ऐसे ही आपके अकाउंट रिव्यू करने चाहिए. आपके जितने कस्टमर्स हैं उसमें से एटलीस्ट टॉप 10 कस्टमर्स को आइडेंटिफाई, और इसको मंथली बेसिस पे आई वुड रिक्वेस्ट, एक फॉर्मेट हमने दे रखा है, PPT में भी है, सिंपल चीजें हैं, उसको रिव्यू करिए बट स्ट्रक्चर्ड फैशन में रिव्यू. उससे क्या होगा कि रिटेंशन एंड न्यू एग्जिस्टिंग बिजनेस आपको और मिलेगा. कस्टमर विल बी मोर सेटिस्फाइड क्योंकि आपको पेन पॉइंट्स पहले पता चल जाएंगे एंड यू विल बी एबल टू एड्रेस देम. आपका इंटरवेंशन हो पाएगा. तो ये आपको करना चाहिए. अब मैं आता हूं क्विकली, सिंस दिस इज अ कॉम्पिटेंसी बिल्डिंग एक्सरसाइज ऑल्सो, सो आई एम गोइंग टुवर्ड्स little bit theory part of sales and marketing. So what is marketing? We all know we have to first decide which target market we are going to. At big level,
We can decide in cluster also. This can be used in cluster approach also. Let's say 3 clusters are there. So you can decide which cluster I will be focusing first. जहां पे मेरी कनेक्टिविटी बेटर है या यहाँ पर अपॉर्चुनिटी जल्दी फ्रुक्टिफाई हो सकती हैं. सो यू विल बी फोकसिंग टारगेटिंग दैट मार्केट. चीज तो ये है, आप करिए. फिर उसमें भी आप क्या करेंगे? गेटिंग, कीपिंग एंड ग्रोइंग कस्टमर्स. कैसे करेंगे? नए कस्टमर्स को लेना है, उनको रिटेन भी करना है, एंड देन न्यू एग्जिस्टिंग बिजनेस उनसे लेके आना है. वो कैसे पॉसिबल है? 2-3 एग्जांपल मैंने आपको दिए. बाय क्रिएटिंग डिलीवरी. जैसे मैंने आपको सिविक का एग्जांपल दिया, डीओपी का एग्जांपल दिया. वी आर क्रिएटिंग वैल्यू टू देम because we are removing the pain point that they have to integrate everything by themselves, and that is not their core competence. As a BSNL, we are in this business, so we will be doing better than them. So we are able to create value for them. Now delivery is pending. So I will request support of all of you. Ultimately, delivery is also very critical. And then communicating superior value. अब इस सक्सेस स्टोरी को आप दूसरी जगह भी बताते, कम्युनिकेट करके बिजनेस ले सकते. इसमें क्विकली 2-3 एस्पेक्ट्स मैं कवर करूंगा. फर्स्ट इज मार्केटिंग मिक्स विच इज 4 P's. सेकेंड इज STP, जो कि आपको क्लस्टर अप्रोच में भी यूज करना होगा, दैट इज सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग. एंड थर्ड स्पेसिफिक फॉर एंटरप्राइज बिजनेस एक्विजिशन, दैट इज बाइंग सेंटर कांसेप्ट. 4 P's or STP. This is useful for even SIM selling or FTTS selling. The last one is that is buying center concept is more useful for enterprise. मैं अभी just I'm giving as a food of thought. I would request kindly invest some time to understand these concepts on your own. You can get good videos available on YouTube also. You can go through them. Basically 4 P's है क्या? It's just this is just for the structured thinking. जैसे क्या क्या होता है 4 P's कस्टमर के एंगल से, ये सब चीजें. प्रोडक्ट आपका क्या है? तो आपको पहले तो प्रोडक्ट के बारे में पता हो. अब मान लीजिए एग्जांपल मैं लेता हूं कनेक्टिविटी का ही. तो कोई बताएगा क्या है प्रोडक्ट? एनीवन? कोई बताए? आप बताइए. हाँ, लीड सर्किट. उसमें क्या क्या है? FTTH है. अब मैं आता हूं उसी पे, लेट से लीड सर्किट. उसके बारे में और क्या बताइए? प्रोडक्ट. These are different products. I'm asking, let's say कि वो प्रोडक्ट कौन सा है, उसके बारे में और क्या प्रोडक्ट के फीचर्स हैं, that will be also covered in. अब MPLS की एग्जांपल लेते हैं because everyone knows. हाँ, जैसे MPLS में 2 चीजें हैं, 3 चीजें हैं. MPLS गोल्ड, MPLS सिल्वर एंड MPLS ब्रांच. क्यों आपको पता होना चाहिए कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स क्या है, उसके हिसाब से फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा प्राइस, क्योंकि कस्टमर इज वेरी सेंसिटिव अबाउट प्राइस. तो अब अगर आपने कस्टमर की रिक्वायरमेंट समझा और अपने प्रोडक्ट्स का आपको पता है, तो अगर वो लो प्राइस से आता है तो क्या आप ऑफर करेंगे? MPLS ब्रांच. जब कस्टमर लेके आता है, बोलता है आपको कि जियो वाला तो 30,000 में दे रहा है, आप मुझे 90,000 में क्यों ऑफर कर? आएगा कि नहीं ये क्वेश्चन? तो अगर आपको पता है, तो जियो तो बोल नहीं रहा है कि हम गोल्ड दे रहे हैं कि सिल्वर दे रहे हैं कि ब्रॉन्ज दे रहे हैं, वो तो कुछ भी नहीं दे रहा है, उससे भी नीचे दे रहा है. इवन कस्टमर नो दैट. तो ऐसी सिचुएशन में आपको पता है, तो यू कैन ऑफर देम ब्रांच विदाउट टेलिंग दैट दिस इज ब्रांच, एंड एट रीजनेबल रेट यू कैन ऑफर. दूसरी चीज प्रोडक्ट के बारे में और क्या पता होना चाहिए? मैं इसी पे आ जाता हूं क्योंकि ये क्रिटिकल है. अब आपका वो प्लेस में भी कवर होगा. तो जैसे अब डिलीवरी कैसे हो रही है, MPLS की बात करता हूँ, 30,000 रुपए की बात. अब प्लेस क्या है कि वो क्या दे रहा है? रेडियो पे दे रहा है. आप कैसे दे रहे हैं? फाइबर पे दे रहे हैं.
तो ये यूनिक सेलिंग पोजीशन है कि भाई वो 30,000 में दे रहा है, रेडियो पे दे रहा है, मैं तो आपको ब्रांच दूंगा, अपने मन में सोचिए ब्रांच रेट, आप बोलिए कि 60,000 में दे रहा हूँ, मैंने कहा मैं 60,000 में तो दे रहा हूँ, 60,000 में दे रहा हूँ, बट आई एम गिविंग इट ऑन फाइबर. So service quality will be always better on fiber, irrespective of weather conditions. प्रोडक्ट के बारे में पता है, प्राइस के बारे में पता है, प्लेस के बारे में पता है, प्रमोशन के बारे में भी आपको पता होना चाहिए. उसमें एंटरप्राइज बिजनेस में बेसिक प्रमोशन इज मीटिंग विद द कस्टमर्स. आपका मोबाइल सिम बेचना है, प्रमोशन आप डिटेल एक्टिविटीज करो. इसी में मैं बोलूंगा कि आपको जो मार्केटिंग बजट मिलता है इस साल में, अभी 3 महीने बचे हैं, 3.5 महीने, आई वुड रिक्वेस्ट कि एटलीस्ट एक पेज का 12-14 जो मेन सर्विसेज है बीएसएनएल, उसका पैम्पलेट छपवा करके और मेन कस्टमर जो टारगेट कस्टमर्स हैं उनको, और जो हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनको भी जरूर. एंड आई एम श्योर मेनी ऑफ योर कस्टमर्स will be looking for those services and they are not aware that BSNL is offering them. मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि मार्च में बजट भी एक्सपायर कर जाए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, राइट? अगर उनको अवेयरनेस है तो कई बार ऐसा होता है, मेरे टेन्योर में तो कई बार हुआ जब ये है कि अगर उनको अवेयरनेस है तो खुद ही फोन करके बोलते हैं बॉस मेरे पास 1 करोड़ रुपया बचा है और ये सर्विसेज में आपको नॉमिनेशन. अगर उनको पता ही नहीं है और वो टेंडरिंग कर नहीं सकते, 3 महीने में कौन सा टेंडर होगा, बजट एक्सपायर कर जाएगा, उनको क्या फायदा है? बोलेंगे यार बीएसएनएल को नॉमिनेशन से दे दो, यू विल गेट गुड बिजनेस आउट ऑफ इट आल्सो, राइट? इसका कॉम्बिनेशन आपको हर कस्टमर की डीलिंग में यूज करना चाहिए. और डिटेल में जाने के लिए मैं अभी केस स्टडी सर्कुलेट कर दूंगा, आई थिंक अभी आया नहीं है ना, मैं आप लोगों को एक सर्कुलेट करा दूंगा. We organized one case study competition at Pan India level. We received around 50 plus entries. Different platinum units, gold units ने participate किया था actively, और उसमें से बेस्ट केस स्टडीज को सीएमडी साहब ने सम्मानित किया. उसमें बेसिकली 4 पीस एसटीपी एंड बाइंग सेंटर कॉन्सेप्ट को यूज करके कैसे उन्होंने बिजनेस एक्वायर किया और क्या फिर उसके कितने रेवेन्यू ग्रोथ हुई, ये ऑल दोज एस्पेक्ट्स में कवर. तो आपको 12-15 पेज की केस स्टडी एक आपको दे देंगे जिसमें ये सभी कॉन्सेप्ट्स यूज, और तो आप प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी समझ पाए. अब मैं आता हूं सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग ऑफ योर प्रोडक्ट. 4 से लिंक भी है. फॉर एग्जांपल आपने टोटल मार्केट सेगमेंट कर लिया, कई एस्पेक्ट्स हो सकते हैं. लेट्स से कि you have decided that on the basis of sector in which the customer is active. For example, banks separately, या BFSI separately, then some manufacturing units, then pure government, then state government, then SPSU. You are decided, okay, my segmentation. एक एग्जाम्पल क्विकली देता हूं क्योंकि थ्योरी ज्यादा है, मैं इसमें रखूंगा नहीं. Why I'm saying you need to segment the market? For example, let's say you are focusing on banking. Banking is different segment because their requirement is different. Their total business is dependent upon the connectivity. So what? You can charge huge premium from them if you are able to deliver in satisfactory way. अभी हम सभी बैंक्स को, नॉट ओनली गवर्नमेंट बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स को बहुत हाई प्राइस में कनेक्टिविटी दे रहे हैं. वेदर यू नेम HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, everyone is taking 4 Mbps at around 1,20,000, जबकि Mbps जियो दे रहा है 30,000 रुपए में. तब भी हमसे वो ले रहे हैं. गवर्नमेंट को तो आप मान सकते हैं कि मैंडेटरी यूटिलाइजेशन और ये एस्पेक्ट वो एस्पेक्ट, बट ये बैंक्स और हर महीने वो नए नए सर्किट्स दे रहे हैं, एंड वी आर नॉट एबल टू कन्वर्ट देम बिकॉज वी आर नॉट एबल टू कमीशन दोस सर्किट्स विद इन 15-20 days.
रिमोट में देंगे नहीं, लेकिन मैंने जो नेगोशिएशन किया है उसमें कुछ मेन जगह पे भी देते हैं। जैसे उन्होंने डेटा सेंटर्स में भी हमें दिए हैं। जब मैंने नेगोशिएट किया था, एक तो प्राइस हाई रहेगा, दूसरा रहेगा कि केवल रिमोट में आप नहीं देंगे, लेकिन उनको सेटिस्फाई तो करना पड़ेगा ना, ओनली देन यू विल गेट बेटर बिजनेस। तो ये सेगमेंटेशन जब कर लेते हैं, फिर टारगेट आपने कर लिया कि ये बैंक है, फिर प्रोडक्ट पोजीशनिंग करते हैं कि हम एमपीएलएस का गोल्ड देंगे, और फिर देन यू विल डिसाइड योर प्राइसिंग, और तब आप महंगे दाम पे बेच पाएंगे। बट सेम स्ट्रेटजी इफ यू अडॉप्ट फॉर अ मेडिकल कॉलेज, इट वोंट फाई योर बिजनेस। आपको स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़ेगी डिपेंडिंग अपॉन द सेगमेंटेशन ऑफ द मार्केट। असली गेम तो यहाँ से शुरू होता है जब बीएड, आई वुड से मेनी ऑफ यू वुड हैव सीन दैट। इस साइड से बताइए आगे कि क्या, आप बताइए। दोनों दिख रही है आपको, तो आपने पहले देख रखा है, आप बताइए। हाँ है, हाँ, क्योंकि अगर जिसने नहीं, एक को दिखेगा ओल्ड लेडी, एक को दिखेगा यंग लेडी। मैंने क्यों लेकर के आया, मैं इसकी सेम पिक्चर है, सेम सर्विसेज है, सेम रिक्वायरमेंट है, everything is same, but perception is different from our side and customer side. So as a salesman, as a marketeer, we have to understand the perspective of customer. अगर उसको समझ पाए तो अच्छा, अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो अपना उनको समझा लो। Both the parties should be on the same page, only then business will be generated, right? तो ये गेम बहुत बड़ा है, इसमें सोचना बहुत है। अगर इफ यू थिंक प्रॉपरली, you will be able to convince the customer that my proposition you should accept. The speaker. We all know that SIM is purchased by individual, but enterprise business products are purchased by organizations. Organization means multiple people will be involved. So user will be different person, a different entity, different department. Contract initiator will be different entity. Someone will be gatekeeper, someone will be buyer, someone will be influencing the process, and someone will be approving, or someone will be decider. For example, CTO or CIO might be the decision maker in private sector. Similarly, even in banks also, government sector, CIO is the final authority who decides on these kind of things. But वो initiate तो करता नहीं है, उसको फीडबैक कोई और देता है। गेट कीपर क्या रोल है? गेट कीपर रोल ये है कि आपको एक्सेस ही नहीं मिल पा रहा है डिसीजन मेकर, इन्फ्लुएंसर और यूजर का। आप जब भी बिजनेस प्रोसेस को एनालाइज करें, एंटरप्राइज बिजनेस को, इन सभी एंगल से आपको एनालाइज करना। जो मैं अभी केस स्टडी आपको सर्कुलेट करूंगा, दे हैव कैप्चर्ड इट ब्यूटीफुली दैट इन दैट 2 केसेस आई विल क्विकली गो थ्रू। ये केस जो है वाईफाई फॉर एन इंजीनियरिंग कॉलेज कैंपस। अब उसमें यूजर कौन है? स्टूडेंट्स, वेरी डिमांडिंग, नेतागिरी भी शुरू हो जाएगी। And actually the services were being offered by some other private agency. They are integrated to us. तो आपको जब समझ गए आप यूजर कौन है, उनसे आपने इंटरेक्ट किया, सोल्यूशन डिजाइन आपका ऐसा होना चाहिए भले प्राइसिंग ज्यादा हो। Once you understand the user, then you will be able to convince the decision maker also that this kind of solution will be more beneficial for you. है? फिर डिसीजन मेकर हो गया, फिर आपका इनिशिएटर कौन होगा? हर जगह कॉन्ट्रैक्ट डिपार्टमेंट ही करता है या एडमिन होगा। अब एक एग्जांपल मैं दूसरा देता हूं, गेट कीपर का रोल कितना बड़ा होता है। अब HDFC बैंक का मैं एग्जांपल देता हूं।
I got to know that most of the connectivity taken from BSNL have been slowly surrendered by HDFC Bank, right? And very few circuits were working. My enterprise business platinum unit was approaching them multiple times. Even CGM tried, but they were not meeting, particularly at top level, CIO level. क्यों? क्योंकि उसमें गेट कीपर जो है वो अलाउ ही नहीं कर रहा है कांटेक्ट करने का। गेट कीपर कौन होगा? आईटी डिपार्टमेंट का हेड होगा या नीचे का होगा। अब हमें वो बिजनेस तो चाहिए, क्या करें? Then I told them that send mail to them, their CIO, his board member also, to send a mail to them that BSNL corporate office officials are interested to meet you. They sent it. उसके बाद उसने फिक्स कर दिया कि ठीक है आई। फिर मैं गया along with CGM and maybe head of that unit. जबकि 1.5 घंटा लेट पहुंचा क्योंकि मल्टीपल कस्टमर से मेरी मीटिंग थी। स्टिल देवर वेटिंग। हम भी टेस्ट ही कर रहे थे कि कितना ये सीरियस है। थोड़ा लेट भी हो गया। स्टिल देवर वेटिंग। मीनवाइल हमने वर्कआउट किया कि गेट कीपर है कौन। Why that fellow is not interested to meet us? अब मेरा इंटरवेंशन जब आया कि सीएमडी के बिहाफ पे कोई आ रहा है, सीएमडी बीएसएनएल के बिहाफ पे कोई मिलने आ रहा है, देन ही जब थोड़ा बीच में एनालिसिस की गई, साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग की गई, किससे किससे मिलते हैं, क्या होता है, समझ में आया कि एक जो बंदा है की डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में है, ही इज फ्रॉम एयरटेल, ही वाज वर्किंग अर्लियर एट एयरटेल। दैट वाज गुड इंफॉर्मेशन टू अस। जब मिला गया, उनको समझाया गया, जो मैंने आपको एस्पेक्ट्स अभी ब्रीफ किए हैं, कि ये 30,000 40,000 के चक्कर में मत पड़ो। एयरटेल जियो ये जो दे रहा है आपको सर्विसेज, आप खुद समझ रहे हैं। आप थोड़ा महंगा पड़ेगा बट इट विल बी ऑन फाइन। दूसरी चीज, आपके पास मिस इंफॉर्मेशन जो आ रही है उस पर नजर है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि कार्ड रेट से के आसपास ही जो एसबीआई का रेट है, मैं अभी फ्लाइट लेके वापस आ रहा हूँ, 2x2 GBPS का ऑर्डर उसी समय सीआईओ ने रिलीज किया। मैंने वो 5 साल का ऑर्डर था, मुझे 6 करोड़ का या 7 करोड़ का ऑर्डर, उसने हाई रेट। तो गेट कीपर का भी रोल है, इन्फ्लुएंसर का भी रोल है, डिसीजन मेकर का भी रोल है, और आपको एज अ बीए हेड यू हैव टू एनालाइज द एंटायर सिनेरियो, दैट पर्टिकुलर लीड and intervene accordingly, and then you will be able to generate the business. अब मैं इस पे ज्यादा नहीं जाता हूँ। ये कुछ इंफॉर्मेशन है जो आप देख सकते हैं, जिसको मैंने अभी आपको केस के थ्रू समझा भी दिया। इसमें साइकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, आपका जब बीए हेड मैंने देखा था, एक बंदा था जो एंटायरली नेगेटिव था टुवर्ड्स बीएसएनएल, जबकि जो एडमिन का हेड वो मेडिकल यूनिवर्सिटी में ही था, वो हमारे फेवर में था। तो जब भी कोई फेवर में आपके है, तो मैं एज अ बीए हेड आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग उनको इंफॉर्मेशन दें, उनको सपोर्ट करिए, सो दैट इंटरनल प्रोसेस जो चल रही ऑर्गेनाइजेशन की, उसको वो इन्फ्लुएंस आपके फेवर में कर सके। क्योंकि गवर्नमेंट एंटिटीज में बहुत बार ऐसा पाया जाता है कि मेनी ऑफ की डिसीजन मेकर्स डोंट वांट हैसल्स, so they will support you provided you supply enough information and they are confident that you will be able to deliver, क्योंकि उनकी भी जिम्मेदारी है ना ये डिलीवरी ऑफ सर्विसेज। तो आप पूरी एनालिसिस करिए, फिर सेलिंग स्ट्रेटजी उस कस्टमर का बनाइए, दैट इज वेरी गुड। तो आपको फिर एक्शन प्लान बना लेना चाहिए। जब आपने पूरी एनालिसिस कर ली, तो अब क्या क्या है, कनेक्टिविटी की क्या रिक्वायरमेंट है, फिर अपग्रेडेशन देने की जरूरत तो नहीं है, एडिशनल सर्विसेज और क्या दे सकते हैं, सर्विस डिलीवरी हम कैसे कराएंगे, ये ऑल दोज एस्पेक्ट्स वी ऑल नो। अब मैं आता हूँ, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो कि which is very useful for CM sales as well as we have to align our all activities of sales and marketing with the local conditions, and we have good backing of
management literature also. Now management is shifting towards incorporating the local cultural aspects in big way. क्यों ऐसा होता है? प्रैक्टिकली भी हमने देखा है, थियोरेटिकली भी स्टैब्लिश हो रहा है। क्योंकि जो आप पढ़ते हैं अगर लोकल कंडीशन से मैच नहीं करती तो आपके दिमाग में क्विक डिसीजन जहां लेना होगा वो काम आती नहीं, राइट? तो लब्बो लुबाब ये है कि अल्टीमेटली जो भी सेल्स एंड मार्केटिंग एफर्ट्स होंगे वो लोकल कंडीशन के साथ। आपके बीए में जो फेस्टिवल अच्छे से मनाया जाता है, जहां पर मेलाज होते हैं, उनको आपको टैप करना है। मैंने इनिशिएटिव लिया था होली में भी, दशहरा में भी, क्योंकि लोकल कंडीशन में है तो टॉप कस्टमर्स को मैंने भी कॉल किया, सीएमडी साहब से भी कॉल कराया, डायरेक्टर एंटरप्राइज साहब से भी कॉल कराया। त्योहार पे अच्छा लगता है, लोग बातचीत कोई आता है, थोड़ा फीडबैक भी मिल जाता है कुछ बिजनेस में। तो आपको बेसिक टेक अवे फ्रॉम दी स्लाइड्स आर, बाद में आप पढ़ लीजिएगा, लोकल फेस्टिवल्स एंड मेलास आर अपॉर्चुनिटीज फॉर शोकेसिंग दिस। उनको प्रॉपर वे में यूज करिए और आपका फायदा होगा सेल्स एंड मार्केटिंग। ये मैंने कवर कर ही दिया है आपको, इसमें भी मैं नहीं जाता हूँ क्योंकि क्या टाइम हो गया। सो 5-7 मिनट्स आई डू हैव बाय दैट टाइम। मैं आता हूँ अब प्राइसिंग। In opening also I told you that there is one empowered committee on tariff and corporate level, and normally we approve the discounted pricing for customer. ये products के pricing available है ILL, ILO, MTLS, TLS, multi-caste, and again for Kani also, and then for Lakshadweep also new rates have been released. So लक्षद्वीप में भी कहीं कनेक्टिविटी अगर आपके कस्टमर को चाहिए तो वी कैन ऑफर ऑन फाइबर एंड दैट इज। ये 18 पॉइंट का फार्मूला है। बेसिक आइडिया क्या है? जब भी आप कोई भी ईसीटी केस बनाते हैं, ईसीटी क्या देखना चाहती है? आप मेरी चेयर पे होंगे, क्या देखना चाहेंगे वही होंगे। क्या अल्टीमेट क्या है टेस्ट ऑफ एनी केस? बीएसएनएल को कुछ मिल रहा है कि नहीं? अगर आप बताएंगे कि इस रेट में आप दे दीजिए और बीएसएनएल को लाइसेंस फीस काटने के बाद कुछ नहीं मिल रहा है तो कोई मतलब नहीं। तो 18 पॉइंट में आपको जो कुछ दिया गया है, बेसिक आइडिया केवल एक है कि बीएसएनएल को कितना और कोई चीज छूटनी नहीं चाहिए। ये ना हो कि आपने अगर कोई कनेक्टिविटी दे दी, जैसे वीपीएन ओवर एफटीटीएच का एक ऑफरिंग हमारी है, या आपके पास ILL ओवर एफटीटीएच भी एक ऑफरिंग है, ILL ओवर जीपान के नाम से। अगर हमने 28,000 रुपया में ले रहे हैं तो आपको देखना है कि टिप को कितना देना पड़ेगा है? अगर 500 मीटर तक है तो 7,200 तो आपको टिप को ही देना है। फिर 8% जो आपका 30,000 था उसमें से 8% मैंने 2,400 रुपये उधर जाना है, तो 10,000 रुपये तो आपके सीधे आउटगो हैं। तो कोई हिडन एस्पेक्ट्स नहीं होना चाहिए उसमें। जितने हम क्वेरीज भी भेजते हैं सर्किट्स को इसीलिए भेजते हैं कि उन्होंने प्रॉपर एनालिसिस नहीं किया। जितने कॉस्ट इन्वॉल्व हैं आउटगो फंड फ्रॉम बीएसएनएल वो सभी फैक्टर्ड इन हों और ओवरऑल बीएसएनएल को फायदा हो रहा है तो इट विल बी अप्रूव्ड। Right now we are average approving time taken by corporate office is 1.6 days. जिस दिन आता है नॉर्मली उस दिन या उसके नेक्स्ट हम अप्रूव करते हैं। दिस इज आवर 3 days में हमने टारगेट रखा हुआ है, बट नॉर्मली वी आर डूइंग इट इन 1.6 days. यस, मान लीजिएगा कि एक लीज लाइन है 100 MBPS का, कार्ड रेट अपना 86 है और उसमें हमारे को टीआईपी से 500 मीटर से कम है तो 7,200 रुपये देना है साल का। तो जब हम डिस्काउंट कैलकुलेट करते हैं, अब उस हमने जैसे ओटीसी चार्ज दिया, ओटीसी चार्ज उसने मना कर दिया कि हम कुछ नहीं देंगे, वो डिपार्टमेंट ऑफ कोई स्टेट गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है। तो हमने टीआईपी मॉडल पे गए, उसका 7,200 किया
और जो डिस्काउंट हमने बोला कि अब डिस्काउंट उसका हो गया, जो हम पहले 15.5 कर रहे थे वो 19.5 हो गया। नाउ जब हम केस देखते हैं कि अब ये किसके पावर में आ गया, तो उसको हम उस डिस्काउंट को, मैंने उस डिस्काउंट को उसमें ऐड किया, मतलब सॉरी टीआईपी के अमाउंट को उस पर ऐड किया कि मेरे को ये भी ऐड करो, क्योंकि ये मैं एनुअल आउटगो है मेरा और वो ओटीसी नहीं दे रहा है। तो मेरे लिए इफेक्टिवली आई एम गिविंग डिस्काउंट ऑफ 19.5 इंस्टेड ऑफ 15.5। इसको हम इस एंगल से भी देख सकते हैं, ये तो एक एनालिसिस में आना चाहिए कि नेगेटिव ना जाए, बट अगर अपना भी अगर हम फाइबर यूज करते तो उसको भी मेंटेन करते ना, तो उस एक तरीके से वो कॉस्ट भी है। अगर 7,200 है या 15,000 जा रहा है और आपका 1.5 लाख का सर्किट है, तो वो डिस्काउंट में ओटीसी नहीं चार्ज देने से मना कर दिया, इसलिए मैंने वाला पॉइंट ओटीसी तो आजकल कोई देता नहीं है। हाँ। अच्छा, ओटीसी में भी हमने एक 1 ARC का भी कॉन्सेप्ट लेकर के आए। वो आपको जब एलसी पर एड्रेस करेंगे ही विल बी। तो मेरा पॉइंट दूसरा था, तो उसमें जब हम इसको ऐड करके आपको हम 15 डिसाइड पे करते ही हैं कि पावर हु इज देखना, गोइंग टू अप्रूव, वो एक इशू नहीं आता है। आपको 15 पे ही अप्रूव करना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो इसीलिए हम एडिशनल पॉइंट लेते हैं कि कितना आउट हो गया, बट इट डजंट मीन, क्योंकि वो तो कॉस्ट है ही ना। सर्विस डिलीवरी अगर हम भी देते तो कुछ कॉस्ट तो इन्वॉल्व होती ना, उसका मेंटेनेंस की कॉस्ट तो होती। तो विल से ऑन द ग्राउंड की हम उसको जस्टिफाई करें कि दिस इज गोइंग टू बी इनकर्ड ईदर बाय गिविंग टू समबडी एल्स और बाय डूइंग बाय आवरसेल्फ, देयरफॉर दिस शुड बी केप्ट अपार्ट फ्रॉम दिस। ओके, 18 पॉइंट एजेंडा गाइडलाइंस भी हैं, आप उसको पढ़ लीजिएगा। फिर मैं बहुत फोकस नहीं करूँ, क्योंकि ये गाइडलाइंस आपके पास होनी चाहिए, दैट्स व्हाई आई हैव इनकॉर्पोरेटेड। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये ईबी पोर्टल पे जो आपका सेल्स फोर्स मूवमेंट की मॉनिटरिंग, एक्सेस आप लोग करते ही होंगे, नहीं करते होंगे तो आपके पास एसएमएस आता ही होगा कि आपने ईबी पोर्टल इतने दिन से एक्सेस नहीं किया। उसमें बहुत कुछ है, आप जाइए, अगर आप यूज नहीं कर रहे हैं तो एक बार उनके रिपोर्ट्स को देखिए, डिटेल्स देखिए। लेकिन क्विकली मैं एक एस्पेक्ट पे करूंगा, दैट इज सेल्स फोर्स मैनेजमेंट फंक्शनैलिटी। अभी हमने ईबी पोर्टल में मॉडिफिकेशंस आईटीपीसी से करवाए हैं, जिसमें मान लीजिए क्लस्टर में आपने किसी जेटो या एसडी भेजा है, उसकी एंट्री होनी चाहिए सिस्टम में। वो कस्टमर जिससे मिलने गया, अभी तक ये था कि कस्टमर जिससे मिलने गया अगर वो एंटर नहीं है तो उसकी विजिट एंट्री नहीं कर पाता। तो उसमें हमने ये प्रोविजन करा दिया कि 0 एंट्री करेगा, माने कोल्ड कॉल एंट्री करेगा। आगे तो वो एंट्री करे, फिर वो कैसे करे, 2 तरीके उसके हो सकते हैं। एक ई पोर्टल में जाए और वहां पर एंट्री का प्रोविजन है। दूसरा तरीका हमने ज्यादा इजी बनाने के लिए मोबाइल ऐप के थ्रू, तो मोबाइल ऐप वो डाउनलोड रखे और इसके बाद एंट्री वो कर। ये मैं इसलिए कर रहा हूं कि आप लोग इसको इंश्योर करें, और मैं तो कहूंगा कि आप केपीआई में भी डालिए, आईपीएमएस में भी डालिए कि कितनी विजिट उसको महीने में करनी है, और उसको मॉनिटर करिए इसकी। अब हम मोबाइल ऐप को और मॉडिफाई करने जा रहे हैं, जिसमें फाइनल वर्जन विल बी रिलीज शॉर्टली। इन दैट इवन टैगिंग विल बी देयर। राइट नाउ जियो टैगिंग इज नॉट देयर, बट दैट विल बी टैग्ड, क्योंकि कई बार होता है कि कस्टमर से कोई मिलने ही नहीं जाता, उस चीज को अवॉइड करना है, या जो न्यू अपॉर्चुनिटी जा रही है वहां पर भी कोई नहीं जाता। तो ये उससे एंट्री करवाइए, फिर लेटर ऑन एज अ रिपोर्ट यू कैन सी कौन कब कहाँ गया था, क्या मिला, और उसमें डिटेल डलवाइए कि किससे मिला था, क्या डिस्कशन हुआ। 4-6 लाइनें तो लिख दे, बहुत ज्यादा बड़ा रिपोर्ट नहीं देना है तो 4-6 लाइनें तो लिखे कि किससे मिला था, क्या बात हुई, उस पर्सन का क्या कांटेक्ट नंबर है, आगे का एक्शन है। लेट हिम आस्क, लेट यू आस्क टू डू दैट। ये मैंने स्क्रीनशॉट्स मोबाइल ऐप के डाले हैं। मैंने बोला था आईटीपीसी को, आई थिंक आईटीपीसी के लोग आज नहीं आ रहे हैं, इसीलिए मैंने इंक्लूड कर दिया, नहीं तो ये आईटीपीसी की स्लाइड्स में होता। Any query, any discussion? एक्सक्यूज मी सर, Yeah, please. इंटरप्राइज बिजनेस में सर जैसे वो नेम केम आपने इंट्रोड्यूस किया सर,
दैट्स अ गुड स्टेप, बट इसको इन्फोर्स कराने की जरूरत है सर। उसका सजेशन ये है कि सपोज अगर किसी एक कस्टमर का बिलेबल अमाउंट इफ इट इज मोर देन 1 लाख रुपीज, तो उसमें क्वार्टरली एक विजिट मैंडेटरीली इन्फोर्स करना चाहिए सर नेम के अंकुर। वो वहाँ से परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्ट्री का सर्टिफिकेट लेके आए, नहीं आता है तो ही विल बी रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि वही मेंटेन कर रहा है। उससे क्या होगा सर, अगर 1 लाख से ज़्यादा वाला बिलेबल अमाउंट का हम विजिट कराएंगे तो उससे एक तो लाइजनिंग अच्छी हो जाएगी सर, उसके ग्रीवेंसेस दूर होंगे सर, अप टाइम जो है वो डेफिनेटली ज़्यादा होगी सर। लाइजनिंग जब अच्छी होगी तो ये सब चीज़ें ठीक हो जाएगा। और एंड में क्योंकि हमारा ऑपरेशन मेंटेनेंस और मार्केटिंग दोनों ठीक हो गई है, तो रेवेन्यू एज वेल एज रियलाइजेशन हमारी अच्छी हो जाएगी। श्योरली अप्रिशिएटेड। देखिए इसीलिए हमने ऑनलाइन मॉनिटरिंग शुरू कराई है। क्वार्टरली क्या इंपॉर्टेंट कस्टमर है तो उनके यहाँ मंथली मीटिंग तो होनी ही चाहिए, और इम्पोर्टेंट कस्टमर्स सीआईसी को तो बीए हेड को भी क्वार्टरली तो मिलना चाहिए उनके टॉप मैनेजमेंट से। ये मेरा थिंकिंग है। और ये अब एंट्री अभी आप नैम कैम या जो आपका ईवी स्टाफ है उससे पक्का करवाइए, उसको मॉनिटर करिए। जैसे आईएफए लेह ने बताया, मिस्टर ताशी, तो ये भी आप इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि आप केपीआई जब डिजाइन करें, आईपीएमएस करें, उसमें डाल दें उसके 10 कस्टमर हैं तो आप उसको डालिए कि कब कब वो विजिट करना है, लेट हिम विजिट एंड रिपोर्ट इट प्रॉपर्ली। हाँ वो करेंगे। नहीं, हम तो सीजीएम्स को मैंडेटरी करते हैं ना, सीजीएम्स बीए हेड को करते हैं, बीए हेड को इनको करना है। केपीआई डिजाइनिंग की प्रोसेस तो यही रहेगी ना, क्योंकि अल्टीमेटली रिस्पांसिबिलिटी के साथ ही डेलीगेशन ऑफ पावर जाना चाहिए। सो इट हैज टू बी देयर। एनी अदर क्वेरी? नो? So thank you very much. Sir, thank you very much, sir, for leading such a wonderful session. It was very informative and well explained. So let's have a big round of applause for them. Now I would request Shri MC Singh ji to present a moment to Parliament. ये तो अब मैं देख रहा था क्योंकि लोकल फेस्टिवल्स में we were hosted together in Himachal Pradesh. Shimla was CMTV Shimla, I was CMTV Manali, और हम लोग काफी ज्यादा लोकल फेस्टिवल्स में कराते हैं। तो इसे भी इसका करने का अलावा ग्रुप में डालते हैं। बहुत अच्छा है, लेकिन एक बार बहुत सारी प्रवक्ता हो गए आप लोग। हेलो हेलो। Good morning, everybody. Myself, Upendra Tiwari, GMLC at Corporate Office. Lease circuit is one business which is a very certain business. After sales brings the orders, we have to deliver it and we have to maintain it.
Generally, I joined some 2 years ago in corporate. Earlier, I was at Gurgaon. So the focus for lease circuits per se in corporate is very high, especially from CMD and director level, because this is one of the sections which brings huge revenue. 3,100 crore basket is there. So I would just cover some basic things, some things which you should know, some things which are required to be faster and agile in the market. First thing, let's go for revenue. As BA heads and IFAs, we should be knowing हमारे lease circuit का revenue जो है segment wise, product wise कितना है. अगर आप देखेंगे तो approximately, चूंकि इसमें हमने सारी bifurcate करी है ABF वगैरह लेकर के, and the actual billing for the last year, so we could come out that one lease circuit basically gives you an average revenue of 1.5 lakhs per annum. तो इसमें कुछ हमें सब्सिडी वगैरह मिलती है DOT वगैरह से. If we move it out, at least you are getting 10,000 rupees per month from one lease circuit. So the effort which we do in retail for FTTH or for broadband or for a CM product, उससे ज़्यादा हमें यहाँ आता है. What is happening? EB is considered to be the last. Since I worked in SSAs and BAs, I have seen EB is generally given the last priority, that also at the end of the month. You need to have culture, a practice, जहाँ पे we start delivering it as we are doing for the local products, the retail products. So this is a fact. MPLS की ये है, P2P, internet lease circuits and all. ये मैंने एक सर्कल वाइज लीज सर्किट की आरपू बताई है. जस्ट गो थ्रू जस्ट फॉर एकेडमिक्स, एंड थोड़ा आपको पता होना चाहिए कि किस सर्कल में कितना रेवेन्यू. आप देखोगे छोटे सर्कल में भी यहाँ रेवेन्यू आरपू जो है इज वेरी हाई compared to the number of circuits. That is because legacy wise we have booked these circuits in the older times at very higher rate and still continuing. So that market somehow we have got that. हमारे पुराने कस्टमर होंगे, सरकारी होंगे, अभी तक ज्यादा पैसा दे रहे हैं. But if you go to market, these prices are almost 4 times, 5 times lower by our competitors. So they are denting inside. It's just for your knowledge purpose. ये हमारी objectives हैं. This is basically very clearly told by CMD sir. Recently we had many reviews and all. So all circuits should be commissioned in a month. ये तो पहला मोटो है. 15 दिन में 40% कीजिए, 75% 30 डेज में. बट डिलीवरी जो है, कोई भी सर्किट आती है आपके बकेट में रहती है, 30 दिन में लग जानी चाहिए. दैट शुड बी आवर एटीट्यूड एंड that should be our intention to deliver it within a month. We cannot put the circuits on hold or pendency for more than a month, because that is being taken into care by the top management. Faults 75% to be removed in 6 hours, 95% on 7 days, same day. अभी क्या है, हमने MTTR निकाले हैं MPLS और P2P के. पैन इंडिया देखता हूँ तो बहुत बढ़िया वाला जो है वो 11-12 घंटे होता है इन आंध्रा एंड ऑल, और यूपी ईस्ट बहुत खराब होता है, इट गोज अबव 40 आवर्स. P2P में और भी हालत खराब है. सो बेसिकली क्या है, ये एक फिगर हमें बेसिकली स्टार्ट करना है. वी हैव टू मूव आवर MTTR less than 10 hours and slowly we have to move to the industry standard of 4 hours. Rest other major objectives, month on month basis pendency देखनी है, fault reason updating in trouble class 90%, fault rate should be brought below 0.75%. Actually, these are the criteria which basically help you in getting more orders and retaining the existing customers. So on that basis, all these things, and they keep on changing depending on the focus which is done by the top management. Now comes the service assurance part. आज की डेट में जो fault flow chart है, टोल फ्री नंबर्स हैं, देन SBI की हमारे पास 20,000 से ज्यादा सर्किट हैं, तो उसकी एंटिटी रेमेडी में API इंटीग्रेशन करी हुई है. सो दैट वे इट गोज टू दी एग्जैक्ट पोर्टल जहाँ पे ये फॉल्ट्स डिटेक्ट हो रहे हैं, एंड देन एज यू मूव इट, उनके सिफी से दे करेक्ट इट एंड दे सेंड इट. तो इस तरीके से वी हैव अ वेरियस टाइप ऑफ फॉल्ट फ्लो रिकॉग्निशन एंड क्लियरिंग of the faults. Slowly with the commencement of the CDR3, many new features will come wherein too much automation will happen.
in which you can remove the fault from your WhatsApp thing and all. I suppose it was told to us in this retail customer, they are doing like that, fault booking, new circuit booking. So slowly it will come across like that only. This is what I have just shown. You should be knowing as a head, you should be knowing what is the general perception and how we are working. This we took from Hyderabad. Those people have basically, what happens, we work in silos. We have island-wise working. Many a times people like to talk to the GM on. Problem आई नहीं कि GM को फोन करते हैं. But इंडस्ट्री में ऐसा नहीं है. They have a call center type of scenario. तो आज की डेट में जो मैं दिखाता हूँ, that is also partial. जो डॉकेट सिस्टम में बुक होते हैं उसी की मॉनिटरिंग हो रही है. जो जीएम के पास आते हैं, जो एसडी के पास आते हैं, वो तो पता ही नहीं चलता है. लाइक इन अंडमान देयर इज नो फॉल्ट. इफ यू सी वेरी लेस फॉल्ट्स, ऑफ कोर्स सर्किट्स आर आल्सो लेस, बट इन द पीपल एट दोस प्लेसेस दे आर नॉट सो मच हैबिचुअल इन बुकिंग फॉल्ट्स. बट अभी स्लोली क्या होगा, दिस विल चेंज. तो हमें सिस्टम को मॉनिटर करते रहना पड़ेगा. मैंने 3 टाइप के सर्कल्स बनाए थे, लार्ज सर्कल्स, मीडियम सर्कल्स और स्मॉल सर्कल्स, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ वर्किंग सर्किट्स दे आर हैविंग. तो जो स्मॉल सर्कल्स हैं वो बेसिकली 7,500 सर्किट्स तक हैं. 7,500 to 15,000 circuits is with medium circles, and large circuits have more than 15,000 circuits. 15,000 circuits. So if you see, this is basically benchmark. We have kept 1%, rather 0.75. The fault rate up to 30th November of Kerala, Rajasthan, Tamil Nadu, Karnataka is quite good. गुजरात, महाराष्ट्र फॉलोज. बट अभी ठंड का टाइम है, चीजें ठीक रहती हैं. एज वी मूव टुवर्ड्स वार्मर साइड, दिस फॉल्ट्स इंक्रीज. बट इन नो केस वी नीड टू गो बिलो 1% or 1.25, something like that in peak of fault season. The point here I want to make is Kerala is having almost 16,000 circuits, but their fault rate is very low. And I have seen it across the year. They are the circuits which bring the value of the fault rate pan-India to a very high level. UP East, UP West, Jharkhand, they deteriorate. So it reflects our working philosophy. This Maharashtra circle, Maharashtra circle is a unique circle. All big orders, since it is having a platinum thing, so all big sales orders are with them. All big circuit orders are with them. But their overall faults are very high. We will come in a subsequent slide. So this we have basically brought down the analysis of faults. Similarly, what I would require is at your BA head level or operational front, the BA head should be knowing what is the major reason of fault. Once you start working on that, then you can, because now what is happening, everything is becoming centralized. BA head is only allowed to do a purchase request. The PO will be generated by MM section in circle. So what is going, your almost all financial powers will be taken away. In that scenario, all IT systems have to be in such a way that any problem which you are happening, you should be preempting. अब पूरे साल में मुझे मान लीजिए इतना फॉल्ट आता है, इतना फाइबर चाहिए, इतना जॉइंट फ्लो, पहले ही आप परचेज रिक्वेस्ट रेज कीजिए. The more you are agile, the more you are alert, only then things will happen. What I just came to know in Surat and all, I think Gujarat has implemented this MM centralization project and all, and huge problems are happening because we are not used to such things. So this is just a tinker to all of you. What is happening, since functions are getting centralized, resources are not allocated properly, तो क्या होगा, आपके बीच में हॉस्पिटल और वहां जहां जरूरत है वहां कुछ होगा नहीं. You will face acute shortage, acute problems, और हम आपको सारा वो देंगे ऊपर से कि आपने ये करना, आपने ये करना. You should be very clear when you have raised the PR and all. So वो those things, this physical analysis helps you on that particular front. This is the medium circle. Now, if you see UP East, Bihar, UP West, these are the circles which basically deteriorate the figures of the entire country. UP East, I have been shouting, though I myself belong to UP East. Every time I come, I tell this in every forum, but UP East has got lot of opportunities for improvement. They have to do something, probably after battery power plant, they are working on things, but still, I'm still to see the fault rate and all those figures to improve. AP is another circle which is very good in fault rate, 0.41%.
Haryana and Punjab, having said so, Haryana and Punjab are two circles which are very alert. I was in Haryana circle. Generally, the people there are very alert. They may be doing some management also. I don't blame that. But then they are very alert. They know कि कहाँ mistakes है. So they are able to take faster action. In UP, things are very laid back. This is a small circle. यूपी ईस्ट के बारे में बताना चाह रहा था कुछ। यूपी ईस्ट किधर है? मैं था पहले यूपी ईस्ट में, हाँ जी, अभी आसाम में हूँ। हाँ हाँ तो उसमें क्या है कि सीतापुर में मैं बीए हेड था पहले। हाँ हाँ तो वहाँ क्या है कि हमने जब ये कॉपर टू फाइबर कन्वर्ट कर दिया लीज लाइन, तो हमारा फॉल रेट पूरे सर्किल में सबसे कम आ गया। तो ये अच्छा है कि हम लोग सारे कन्वर्ट कर दें मैक्सिमम, तो फॉल रेट कम हो जाएगा। वहाँ पे अभी भी बहुत ज्यादा सर्किट कॉपर पे है। नहीं, वो अभी तो खैर यूपी ईस्ट काफी काम कर रहा है। सर्कल पूरे पैन इंडिया का जो फाइबराइजेशन का ड्राइव है, वी आर एट 75%। 75% हमने कॉपर के सर्किट चेंज कर दिए फाइबर। अभी एक हमारे यहाँ भी थोड़ा सा मार्केटिंग चल रहा है। बॉम्बे वी आर गोइंग, एसबीआई के सीएमडी और हमारे सीएमडी वी आर होस्टिंग एन इवेंट। बीएसएनएल होस्ट कर रहा है, जिसमें 99% ऑफ ब्रांचेज ऑफ एसबीआई हैव बीन फाइबराइज्ड। कल तक का डेटा 90। तेजपुर में 100% एसबीआई सर्किट उसमें चल रहे हैं। हमारे जो पहले जीएम थे उनको एसबीआई ने रिकॉग्नाइज किया था। नहीं, दिस इज ए थिंग एक्चुअली। क्या है, स्लोली ना, देखिए कॉपर अब रहेगा नहीं। और कभी कभी राजस्थान जैसे सर्कल से मेरे पास फीडबैक आता है, जी हम ये कॉपर को नहीं चेंज कर सकते क्योंकि इसमें जो है उसमें चेंज करेंगे तो इसमें ज्यादा खर्चा दिखाने लग जाते हैं। डिक्टम बड़ा क्लियर है। और कॉपर को मेंटेन करने का पैसा भी तो लगता है। अगर आप उस मॉडल में है तो वहां पैसा दे रहे हैं, और अगर आपका एमएलएलएन है तो उसका रेंट भी तो दे रहे हैं। रेंट आप ले रहे हैं बट उसकी एएमसी तो मैं दे रहा हूँ। तो आप पे इन तो देखते हो, पे आउट नहीं देखते। कॉपर वी शुड इमीडिएटली, आज के कुछ 35,000 के आसपास सर्किट कॉपर के पैन इंडिया रह गए। वो धीरे धीरे वी आर टारगेटिंग इस फाइनेंशियल ईयर में विल बी क्लोजिंग इट। वही आज की डेट में किसी और कोई ऑपरेटर कॉपर पे नहीं काम करता। हम लीगेसी में हैं, तो दैट वी शुड अवॉइड। This is any to fault analysis. Of course, I don't consider this to be very big because here when you see copper handling fault is 41%, OFC handling, but वो any to वगैरह थोड़ा सा hilly area, उनका network ठीक नहीं है. That is why such issues are there. Yeah. This is the fault region analysis. ये मैं मांगता रहता हूँ. Yeah. We compile it. Basically, if you see what is the major region, तो पहले क्या था, copper के faults बहुत होते थे. तो this is just for an analysis. We keep on month wise हम review करते हैं. तो उसमें we clearly see, like you see UP East electricity issue. ये पिछले 2 साल से electricity issue चल रही है UP East, and there is no solution. तो अभी जो हमने what we have thought, rather I propose that we should put an SD-WAN box at customer premises, and we take a bandwidth of 4G or something like that from other cross operator or कोई local ISP से ले ले, but customer end का काम चलता है. हमारा नेटवर्क तो एक्सचेंज ही बैठ जा रहा है. So something has to be done because UP is having a huge problem of this particular issue. Pan India fault analysis, if you see, copper handling fault is, since the number of circuits have decreased 27%, OFC handling fault 37%. The rest other various regions are there that you can go through. This is the summarized version. What is the issue and what is the contribution of other factors. Coming to service delivery, now ये थोड़ा आप लोगों के लिए अच्छा, स्पेशली एट हेड्स. हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सर्किट आज के डेट में 2,84,000. इस साल हमें 3 लाख तक पहुंचना है. तो डिस्कनेक्शंस पे आई कीप ऑन फोकसिंग. डिस्कनेक्शन का रीजन जो है रिकॉर्ड हो, एंड इट शुड कम आफ्टर द अप्रूवल ऑफ CGM टू अस. हैविंग सेड दैट, लेट मी वेरी क्लियर दिस, आई हैव बीन टोल्ड टाइम एंड अगेन बाय CMD सर, यार मैं तुम्हारी एनालिसिस को मानता नहीं. तो he has a way of checking it. So he can surprisingly check, keeps on telling the things, we keep on answering the things. But मैं अपनी ओर से अपना रिकॉर्ड पक्का करके रखा हुआ है. आपकी सर्किट कट रही है, आप जरा ध्यान रखें, do not give any absurd reason. कल को अगर कहीं ऑडिट हो गई and some checking happens, things will become bad. तो whatever you say, आपके जो रीजन है, राइट, सर्विस एश्योरेंस में भी वन ऑफ द रीजन, बट आपके पास अगर कोई ऐसा है जिसके चलते आप नहीं कर पा रहे हो, तो दैट शुड बी रिकॉर्डेड प्रॉपर्ली एंड केप्ट इन योर इंटरनल डॉक्यूमेंट. So this is what you see. MPLS circuits we have almost 1,74,000, P2P 62,000.
ILL 46,000 and dark fiber something like that. If you see copper, we have 34,000 circuits and OFC we have got 2,34,000. This 34,000 is slowly going to be changed to fiber. And this is the way, and future also, if you ask me frankly, what is going to happen on access part, you will have all these cable operator or जो third party operators have FTTH दे रहे हैं, यही लोग संभालेंगे access. अब ऐसा क्या है P2P में there are specific, जैसे आर्मी they specifically ask for P2P. जो आर्मी का जो P2P थे, जो MPLS हुआ है, तो उनको मैंने लिख कर दिया था कि MPLS में करो, और MPLS इज मोर सिक्योर्ड, और उन्होंने फिर 6 महीने डिसीजन लिया एंड दे हैव कन्वर्टेड टू MPLS. Slowly they are doing it. मतलब वो तैयार ही नहीं हो रहे थे, और They're like that only. उनको 6 महीने तक मैं कहता रहा कि तुम्हारा P2P चलेगा नहीं, MPLS पे ले लो, और फिर उन्होंने राइटिंग में पूरा आई गिव इन राइटिंग. Actually क्या है, it all depends on what is their requirement का standard मतलब मैं protocol कह रहा हूँ कि ये चीज अब मतलब एक नॉर्मल आदमी को सूझ सकती है मेरे जैसे को, तो ये कॉर्पोरेट ऑफिस को क्यों नहीं सूझी है? नहीं, कॉर्पोरेट को पूछती है, बट क्या फिर है, वो तो उन्होंने पूरे इंडिया में डिसीजन ले लिया उन्होंने. नहीं, अभी धीरे धीरे कर रहे हैं, दे आर नॉट वेरी हाँ मतलब देर उसमें उनकी लिमिट है, लेकिन वो टाइम थे मतलब ये P2P तो मतलब आज से 10 साल पहले भी नहीं मेंटेन होता था. अब वो तो कि आज की डेट में आस्क मी फ्रैंकली व्हाई P2P इज फेलिंग. तो लिंक फेल होते हैं बहुत सारे. हाँ, क्यों फेल हो रहे हैं, व्हाट इज द रीजन? केबल कटती हैं. नॉट ओनली केबल, हाँ. आपका जो इक्विपमेंट पड़ा हुआ है ना, OTN एंड ऑल, हाँ. वो आपका जो NTR का नेटवर्क है, STR या जो भी NLD है, दैट इटसेल्फ इज चोक्ड. वो सब ऐसे इश्यूज हैं, वो आप हैंडल ही नहीं कर पाते. नहीं वो चोकिंग तो एक अब चलो. उसकी वजह से क्या होता है, दिस P2P इज फेलिंग बिटवीन डिफरेंट लिंक्स. हाँ तो केबल कटती है ना, केबल कटती है वो. क्या है, दैट इज नॉट द ओनली सॉल्यूशन. जैसे DRDO है, नहीं they specifically ask for P2P. नहीं बात ये, लेकिन कोई P2P लिया है, नहीं मतलब they are not अरे going अरे correct. मैं कह रहा हूँ कि कोई प्राइवेट कंपनी देगी P2P क्या? है ना, मैं पूछ रहा हूँ चाची करके बहुत बढ़िया कंपनी मैं बैंगलोर में भी है. अरे मैं फिर बोल रहा हूँ, कोई प्राइवेट कंपनी की एयरटेल जियो पर P2P देगी क्या? गधी है क्या वो देगी क्या? हम क्यों दे रहे हैं? Actually देखिए नहीं, basically मतलब let us move ahead. My point is P2P is a legacy thing which we had taken right from beginning. अब क्या है, अगर आप उसका टैरिफ देखिएगा, if you see the tariff, वो P2P के हम बहुत पैसे ले रहे हैं. आज की डेट में 99% डिस्काउंट भी देते हैं, स्टिल वी आर कवरिंग हायर देन. तो वो P2P जो एक बार है हमारे सिस्टम में, वो अभी चल रहा है, धीरे धीरे हटेगा. वो इट ऑल डिपेंड्स. अब टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, स्लोली दे आर मूविंग टू IP एंड ऑल, तो वो चेंज होगी, बट इट विल टेक सम टाइम. बट आप देखिए स्टार्टिंग में MPLS महंगा था, इसलिए कस्टमर P2P लेता था. आज की डेट में देखिए क्या उल्टा है हो गया ना अब. ना, अब आज की डेट में देखिएगा, आपके जो कॉस्ट है ऑफ द सर्किट और जो कॉस्ट आपको प्राइवेट ऑपरेटर दे रहा है, बहुत फर्क है. ऑलमोस्ट 2 टाइम्स 3 टाइम्स हमसे तो डाउन मैं बताया 2006 में 2006-7 में मैं जयपुर में था, तो राजस्थान पत्रिका का जो MPLS है, वो MPLS जो है रिलायंस का 1/10 रेट पे था, 1/10. और उसके बाद रिलायंस ने नहीं लगाया, तो फिर उन्होंने हमको ऑर्डर दिया. हमारे को वो कुछ नहीं मिलते हैं. हाँ. बेसिकली वी तो डिलीवर वेयर नोबडी एवर डिलीवर. हाँ. गाँव में कहीं मिलेगा, दैट इज अ फैक्ट. जहाँ क्यों कहते हैं ना, जो रबड़ी है, वो तो इन्हीं को मिलता है. लेकिन उनकी इनएफिशिएंसी होती है प्राइवेट की, कि उनकी ERP में फंसा हुआ है, उनके सेल्स ऑर्डर में फंसा हुआ है, तो डिलीवरी नहीं कर पा रहे हैं. अरे केप्टिविटी सिस्टम, but just for this thing, MLLN. Now, if you ask me MLLN, this is another thing which we are carrying from legacy. It should also be phased out. That needs to be phased out because इसमें हम AMC का pay कर रहे हैं, but this is just for your statistics part. Now, this is the trend of commission disconnections, net circuit upgradation. वो जो pink वाला है, this figure, this is what I want to be positive. शुरू में हमारे ठीक रहते थे, but probably 2021 के आसपास नेगेटिव हुआ, नेक्स्ट 21-22 नेगेटिव हुआ, स्लोली वी स्टार्टेड बिकमिंग पॉजिटिव फ्रॉम 22-23 एंड 23-24. आज की डेट में वी आर नेट पॉजिटिव. बट इसके साथ एक कैविएट ये है कि मैंने ये कहा था, ऑलमोस्ट 4078 सर्किट्स लोगों ने छुपा रखे हैं DRPDR क्लैरिटी में, डिस्कनेक्शन के ऑर्डर कंप्लीट ही नहीं किए, छुपा के रखे हैं नेट पॉजिटिव दिखाने के लिए. तो वो मैंने बड़ी पुश किया कि इसको साफ कर दीजिए CDR में जाने से पहले. Probably जो मुझे डेटा है, almost 95% people have done, but there are still 5% people who have not removed these circuits. जो ऑलरेडी आपके पैसा आना नहीं है, GST का नाटक चलता रहेगा. Why should we keep this junk? So at your BAs and all, try to complete the disconnection orders. Same thing, gross disconnection net upgrade. If you see West Zone,
even though they have high figures of commissioning and all, but their disconnections are heavy. And basically, if you ask me frankly, as on 1st December, West is at a negative uh, value than the other people. Now, this is one thing which I want to, एक हम लोग चलाते हैं मेरा circle सर्वश्रेष्ठ circle campaign. Now, this campaign is basically what we do is we collate various parameters and award marks to each and every parameter. Now, those parameters depend on the focus area of the top management. किस item पे focus है जिस पे हमें result चाहिए. And we basically hold these campaigns in beginning of the April, June, September, April, July, September, and then December onward, December, January, February, March, these campaigns are regular monthly. So इस पे we award marks and we find a very good result in MCSC campaigns because people just to get marks, they keep on fighting. And I have seen this fight even at the topmost level. Like at CGM level in Himachal, when Sahota sir is there, he was becoming second by one circuit and he made to reach everybody. Leave apart me, everywhere from ITPC somebody is calling. So such type of sensitivity basically what allows that the parameters go above. Their marks in MCSC campaigns are almost above 90. Haryana and Punjab, they fight neck to neck. Punjab is also very alert, Haryana is also very alert. They watch each other. So this sense of competitiveness allows us to improve the parameters. तो ये मैंने इस बार के दिए हैं जो करे हैं, जैसे फाइबराइजेशन की ड्राइव जो है फोकस है तो उसको हमने मार्क्स दिया है. फिजिकल पैरामीटर जो है फिजिकल सर्किट वेरिफिकेशन दैट आल्सो हैज बीन रिटन हियर. ये रैंकिंग ऑफ सर्कल्स है. अब देखिए हरियाणा एंड पंजाब, दिस इज एवरेज इन ऑल लास्ट 6 MCS. इस बार हम लोगों ने HOCC में भी डिस्ट्रीब्यूटेड सम felicitations also. So if you see Haryana is at 97.76, Punjab is at 93.63. So all marks are basically normalized at 100%. So this is the mark, but the lowest one, if you see UP East is at 37 marks. ये रेंज कम होना चाहिए, सब 50 के ऊपर होने चाहिए, क्योंकि इसमें सर्विस डिलीवरी, सर्विस एश्योरेंस, ऑल रेलिवेंट and actual parameters which you achieve, they come. If you see Maharashtra here, Maharashtra must be at very low, 59.36. And this is what I point out every time. In sales and EB, they will boast very big values. But when you see the overall parameter, they have a very bad figure comparing the Maharashtra circle. Revenues are okay, but then revenues of other telecom operators in the same circle are too high. Hamari, if you ask me, my market share in enterprise business is again 5 to 6%. और जो बड़े वाले हैं, जो दूसरे ऑपरेटर्स हैं, they are not only in the local area, they do the international thing also. So IPLCs and all those, they earn a huge revenue. ये मेरी डैशबोर्ड है. इफ यू सी आज के डेट में मेरे पास 284846 है. मेरे पास काम करने को 6462 सर्किट्स है, द लास्ट वन. अब जैसे क्या होता है सेल्स में, ईवी में दिखाते हैं जी इतना करोड़, इतना करोड़, उतना करोड़, तो उतना करोड़ ऑर्डर में नहीं पंच होता. मेरे पास करने को इतना ही है, 6462 सर्किट अगले 4-5 महीने. सो इफ वी हैव टू इंक्रीज द रेवेन्यू, we need to have more number of circuits booked, acquisition of orders, punching in the system and getting it commissioned. That basically closes the entire story. So यहाँ पे we still have very less figures, should be more than 10,000 per se. Upgradation we are at a pretty good figure. Upgradation की हमारी percentage 150%. जैसे से आप फाइबर लेते जा रहे हैं, upgradation के orders आ रहे हैं, and it is easy for us to upgrade. ये हम LC डिस्कनेक्शन के एनालिसिस करते थे. इफ यू आस्क मी फ्रैंकली, 2023-24 और 2022-23 में कौन से फर्स्ट रीजंस हैं? जैसे डिस्कनेक्शन ड्यू टू नो फर्दर यूज ऑफ सर्विस, कुछ सर्किट पर टेम्पररी लिए गए, या मान लीजिए कोई ऑफिस बंद हो गई, या किसी ऑफिस के पास बहुत सारे लिंक्स थे, किसी को बंद कर दिया, तो वो प्राइमरी रीजन हो रहा है आज की डेट में फॉर डिस्कनेक्शन. इट वॉज सेम इन द अर्लियर ऑल्सो. सेकेंड इज कस्टमर माइग्रेटेड टू अदर टेलीकॉम ऑपरेटर. अब ये एरिया ऑफ कंसर्न है हमारे आज की डेट में. इस साल ये रीजन ऑफ डिस्कनेक्शन सेकंड नंबर पे आ रहा है. फिगर्स भी हमने दिए हुए. एक्चुअली इफ यू आस्क मी फ्रैंकली, हमारा सेक्शन बेसिकली गिव्स यू ऑल फिगर्स, तो यहाँ देयर कैन नॉट बी एनी मैनिपुलेशन. जो करोगे वही मिलेगा, एंड वी चेक बैक विद CDR एंड ऑल. So basically what is happening, we have collected this data and this you should go through.
कि इनमें कौन सी चीज कंट्रोलेबल है, कौन सी नहीं. तो दैट गिव्स यू जस्ट एन आइडिया ऑन दैट. Now this is what is the physical verification revenue assurance का है, what we have physically verified and in the CDR system, whether दोनों कर रहे हैं, बराबर हैं कि नहीं. तो पैन इंडिया वी आर एट 98.22%. कुछ लोगों को भी काम करना है, लाइक झारखंड, जम्मू कश्मीर, दे नीड टू बेसिकली फिजिकली वेरीफाई. वो क्या रहा है, CDR में है, वहाँ नहीं है, वहाँ है, CDR में नहीं है. तो all these things, all these reconciliation has to be done. दिस इज दी ली सर्किट फाइब्रेशन ड्राइव स्टेटस. कॉपर देखिए धीरे धीरे नीचे जा रहा है एंड फाइबर इज मूविंग अप. कुछ वही बताया 32-33 हजार सर्किट जो है आज के डेट में कॉपर पे चल रहे हैं. सेम थिंग रिप्रेजेंटेड इन डिफरेंट वे. दिस कॉपर बैंड डिटेल 2 Mbps ऑलमोस्ट 22,000 सर्किट है, 64%. सो दिस नीड्स टू बी इमीडिएटली कन्वर्टेड टू फाइबर सो दैट यू गेट मोर अपग्रेडेशन. जनरली हम क्या देख रहे हैं, बड़े बड़े बैंक्स इमीडिएटली द मोमेंट यू मूव देम टू फाइबर दे आर गिविंग एन अपग्रेडेशन ऑर्डर. तो दैट हमारे पास वो मतलब वी शुड हैव दिस थिंग क्लियरली कि हम अपने सारे कॉपर हटाएं. जो 64 की यूपीएस है वो मेंटेन नहीं कर पा रहे, क्या करें उसका? 2 MB पे उनके पास इक्विपमेंट नहीं है. आप लोग यहाँ से कुछ देखो. अब उसका एक इशू है, ये कुछ ऐसे इशू है क्योंकि 64 की आपका उसमें और कहीं सिर्फ इसी में चलता है. हाँ, वो पीआरएस है उनका, हाँ. पैसेंजर रजिस्ट्रेशन सिस्टम है, और वो अब वो 64 पे. देखना पड़ेगा, somebody from sales has to go and convince नहीं them मतलब of alternate technology. रेलवे बोर्ड पे बैठ के थोड़ा सा उनको बताना पड़ेगा, भैया आप कैसे चलाओगे आप पीआरएस. We will take it up. Actually क्या है, रिसेंटली जैसे हम लोगों ने रेलवे में गए थे, वी कमीशन दो 50 Mbps सर्किट फॉर 3-4 days. वो जो हमने किया था 500 जैसे जगहों पे. ध्यान आया तो मैंने बता दिया. हाँ, इसको आपको रेलवे का भी थोड़ा हो पाए तो देख लो. yes we'll try to do it. एक बार इनको ही पुश कर, क्योंकि आज की डेट में फ्रैक्शनल इवन का कोई फंडा है नहीं. कौन देख रहा है यहाँ पे रेलवे को? रेलवे सेल्स में देखते हैं ना, कात्यन कात्यायन जी या दूसरे साहब. वाले गोयल साहब. वैसे अगर आप देखें तो 2% सर्किट हैं जो 64 से 256 के बीच में हैं. 2% 1 Mbps के हैं, 256 के ऑलमोस्ट 3%. वी हैव गिवन द डेटा. बेसिकली क्या है, somebody has to go and convince them of the alternate technology immediate deployment, क्योंकि उनके सिस्टम भी काफी ट्रेडिशनल है. ये कुछ चैलेंजेस है. TNF नहीं लग सकता. काइंडली पुट इट इन योर conscience that we cannot escape by saying this is TNF. आज की डेट में almost everything has to be made feasible, क्योंकि वैसे ही आपकी मार्केट शेयर 5% है. जो सर्किट आ रहे हैं अगर हम वही नहीं लगा पाएंगे तो then things will go in a very bad way. अभी क्या है, we have guidelines for this TNF thing. आप जो EB सेक्शन है, BCA जो है, उसको you can ask for budget, but one ARC अगर उस सर्किट से आपको एक साल में कुछ पैसा आ रहा है तो उतना पैसा आप खर्च कर सकते हैं. दैट्स एन अप्रूवल, स्टैंडर्ड अप्रूवल फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ द सर्किट ऑन एनी मीडिया. रेडियो पे लगाइए, फाइबर पे लगाइए, कुछ भी लगाइए. दिस इज वन थिंग. सेकंड थिंग विच वी हैव पुश्ड इज बेसिकली, मैंने अभी NNI का कंसेप्ट, हालांकि मैं कॉर्पोरेट में कर रहा था, बट हमारे यहाँ कॉर्पोरेट में इट टुक इन ए डिफरेंट वे, तो आई हैव सेंट इट टू मुंबई. So what Mumbai people have been told to do POC with private operators. नेटवर्क इंटरफेस लगा देंगे. तो क्या होगा, कस्टमर के यहाँ से वो जो भी बैंडविड्थ से लाके आपके एक NNI पॉइंट आपका कोई एक्सचेंज होगा वहाँ दे देगा, वहाँ से यू पुट इट इन योर नेटवर्क. तो वो जो लास्ट माइल है वो आपको कंस्ट्रक्ट नहीं करना पड़ेगा, बट उसके स्टैंडर्ड चार्जेस और हमसे बहुत कम है जो हमारे स्टैंडर्ड चार्जेस. तो POC चल रही, वंस दैट इज डन देन यू कैन जस्ट हैव एन NNI विथ एनी ISP, एनी TSP. उसमें ऐसा नहीं, वैसे भी हम कोई तोप नहीं कर रहे हैं. एयरटेल को अगर खाना होगा तो खा ही जाएगा. The point is, this will allow you to commission your circuits in a faster. NNI is established norm. So this norm is getting POC done in Bombay. Once they do it, they will circulate the things and the tariffs will be fixed. तो उससे क्या है कि you can just ask for जो भी आपके पास वहाँ ऑपरेटर, and we have allowed ISPs also. एक पॉइंट जो कल मैंने भारद्वाज जी के सामने उठाया था कि कोई हमने ईवी का सर्किट कमीशन करा, उसमें खर्च हुआ 25,000 रुपए. 25,000 बजट ही नहीं मिलता. नहीं, उस सर्किट से पैसा साल में कितना आता है? 25 लाख रुपए आ रहा हो तो भी नहीं मिलता. अब देखिए वो तो क्लियर कट. नहीं, मतलब बात ये है ईवी वालों का बजट नहीं है. नहीं, EB की बजट के लिए तो स्टैंडर्ड ऑर्डर है. अरे बात है स्टैंडर्ड ऑर्डर है, ट्रांसमिशन वाला देता नहीं है. कौन नहीं देता? ट्रांसमिशन के पास भी खत्म हो गया अब तो. ट्रांसमिशन के पास भी नहीं है, इसके लिए ईवी के पास भी नहीं है, कहीं है ही नहीं. अब क्या करो आप? द पॉइंट इज, देखिए ऐसा है, नहीं, आप कॉर्पोरेट ऑफिस से हो, आप इसको उठाओ उस पॉइंट को कि मतलब आप काम तो करा लिया,
कल से वेंडर बोले कि बिना पीओ के मैं काम नहीं कर रहा, तो हो गया कमीशन फिर तो। आप मत कीजिए वैसे, पुट दैट एस्केलेशन। अब नहीं, मैं देखिए तो बड़ा स्टैंडर्ड है, एक ऑर्डर है जिसमें लिखा गया कि एक एआरसी आप खर्च कर सकते हैं, लिखा हुआ है। अब उस ऑर्डर को इंटरप्रेट करके आपको लेने में क्या दिक्कत है? अरे लेने में दिक्कत नहीं है, एआरसी का इशू नहीं है, इशू है कि बजट ही नहीं देते। नहीं तो बजट क्यों नहीं देते आप? उसको एस्केलेट कीजिए। ऐसे कौन अरे से केस है? अरे वो अब जैसे मैं कल बताया था, कल भी क्या केस था, एक हमारा ऐसे 25-50 लाख का एनुअल केस था। उसमें हमने 2-3 किलोमीटर केबल डाली और केबल नहीं थी हमारे पास 24 फाइबर। अब उसके प्रेमाइसिस के अंदर ही था, फर्दर उसमें फाइबर लगता थी लगना, तो मैं 6 फाइबर केबल डाल दी बाजार से, कॉन्ट्रैक्टर से कहा तुम लेकर डाल दे उसमें, उसने डाल दी। अब कहते ट्रांसमिशन वाले कि आपने अंडरग्राउंड में 6 फाइबर को डाल दी, हम तो नहीं दे रहे बजट। हम्म। क्या कर लोगे आप? वो तो आपको बी हेड पे देखना पड़ेगा तो कैसे मतलब बीए हूँ। तो उसका आपको मैनेज कर तो करना ही तो मतलब पड़ेगा। बात ये है कि मतलब व्हाट देखिए कॉर्पोरेट, नहीं देखिए व्हाट आई एक चीज नहीं आपको नहीं समझा, एक सेंटेंस बोल रहा हूँ मैं। लेट मी एक्सप्लेन टू नहीं यू। आप एक्सप्लेन कर दिएगा, मैं एक सेंटेंस बोल रहा हूँ कि ईबी आपका वर्टिकल है, तो ईबी में आप कुछ बजट रखो 2-4-10 करोड़ का। आप ईबी का बजट दे दो, हम काम करा लें। आप वो ट्रांसमिशन पे, सीएफए पे, इस पे उस पे क्यों डिपेंडेंट रहते हो आप लोग? नहीं नहीं, हम लोग नहीं रहते तो आपके बेसिकली। बजट ऐसा नहीं देखिए कर, ऐसा है, मैंने उसमें आप कहाँ पे हैं? इंदौर पे है ना, मैं गुड़गांव में था। हम्म। मैंने ये सारे ऑर्डर्स इंप्लीमेंट करे। इट ऑल डिपेंड्स हाउ यू परसू। सिस्टम है, नहीं सिस्टम को नहीं सिस्टम नहीं है ना, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। सिस्टम आई एम ट्राइंग टू से कि ईबी इज ए बिजनेस, it is getting executed through transmission or some other wing, okay? तो ईबी भी अपने पास 2-4-10 करोड़ का बजट रख ले तो क्या दिक्कत है? बजट तो दिया हुआ है उनको। ईबी पे ईबी ईबी मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ईबी में खुद का बजट क्यों नहीं है? वो दिया हुआ है इनको, वो तो ऑलरेडी इन्हीं को नहीं अप्रूव करना है, नहीं, बिजनेस ओनर यही है। ईबी के पास खुद का बजट नहीं है। आई डोंट नो। मतलब ये आप एक बात बताइए, आप सर्किट लगवाएंगे तो कैसे लगवाएंगे? मेरे को- ट्रांसमिशन से लगवाएंगे? ट्रांसमिशन में बजट नहीं है आपके नहीं, पास? अभी तो खत्म हो गया वो। यानी खत्म हो गया तो आप दोबारा उसको रिकूप अरे वो कराइए। तो हो ही नहीं रहा, 6 महीने से नहीं हो रहा, 1 साल से नहीं हो रहा, वो तो चलो छोड़ो छोड़ो वाली बात। बात मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ आपको कि सपोज मेरे को कहीं कुछ केबल डलवानी है ना? अब मेरे को सपोज 4 फाइबर केबल डलवानी है, बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरे को 4-5 केबल आधा 1 किलोमीटर खर्च करानी है, डलवानी है, ठीक है ना? अब 4 फाइबर केबल डजंट कम इन ट्रांसमिशन, ओके? अब 4 फाइबर केबल की जो लेइंग है वो किस बजट में जाएगी? उसका पीओ किस उसमें जाएगा? ट्रांसमिशन आप किसके थ्रू करा रहे ट्रांसमिशन 4 फाइबर है ही नहीं। हैं? नहीं आपका ट्रांसमिशन आप किसके थ्रू करवा रहे हैं, ये मैं बताइए। किसी वेंडर के थ्रू करा रहे हैं हम, वो वेंडर किसका है तो आपका? कोटेशन बेसिस पे किसी से करा लेते हैं हम। नहीं तो आप उसका जो है आप स्पेसिफिक प्रोसेस अरे बनाइए। मैं हमने आप अरे बात ये है कि सुनिए, रेंडर देखिए आप पहले मेरी बात सुनिए। आपको कॉर्पोरेट से क्लियर कट एक गाइडलाइन दी चलिए गई छोड़िए, अब मैं कन्विंस नहीं कर पा रहा, आप नहीं है। समझ। एक एआरसी हमने अलाउ कर दिया है। पता केस कह रहा हूँ नहीं आपको नहीं, आपको एक और बात बताता हूँ। कि मतलब बात ये है कि यदि मेरे को 15,000, 25,000, 30,000 काम कराना है तो मैं उसको इलीगल किसी भी हेड में बुक कर रहा हूँ, वेयर एज इट इज ए प्योरली ईबी कोई वर्क, illegal करने की जरूरत नहीं। नॉट कवर्ड इन ट्रांसमिशन। कोई मतलब इस चीज को, मतलब आई हैव टॉक टू फ्यू जीएम्स इन ईबी, लेकिन पता नहीं वो सीएमडी ने मना कर रखा है, किसने, आई डोंट नो। नहीं नहीं, किसी ने कोई मना नहीं किया। हमने अभी आपको और बताता हूँ, महाराष्ट्र ने क्या किया। अभी उसने एसबीआई की फाइब्रेशन के चक्कर में उसी ऑर्डर को इंटरप्रेट कैसे किया। मेरी एसबीआई के 20,000 सर्किट है, 300 करोड़ रुपए आता है। यहाँ पे 25 सर्किट लगने हैं जो नॉन फिजिबल है, बजट अलॉट कर दिया उसने उसके हिसाब से। अब बजट उसने बीसीए ने अलॉट कर दिया। बीसीए ने उसने बजट अलॉट किया ट्रांसमिशन में, हाँ, उसने अपने ईबी सेल्स के थ्रू बजट अलॉट कर दिया। नहीं ईबी अब ईबी सेल्स के थ्रू मैं कह रहा हूँ, ईबी में तो बजट है ही नहीं। आप वो चीज एक्चुअली क्या है, व्हाट मैं इज मेरा आप मेरा कौन सी पॉइंट बजट चाहते हैं ये बताइए। आप काम किससे काम कराने के लिए। काम कराना किस हेड में कराएंगे? ट्रांसमिशन से कराएंगे, एफटीटीएच ऑपरेटर से कराएंगे, किससे कराएंगे? हर एक नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ, तो मैंने आपको बताया ना कि मैं एक जो है, जो एक मेरे को ली सर्किट देनी है, ली सर्किट देने के लिए मेरे को सब दो। अपना शायद इशू ज्यादा है। आप अभी नहीं देखिए नहीं, इशू Google इशू not- नहीं है, इट इज बेसिक। जैसे मैं एक कितने सर्किट आपके यहाँ कमीशन होते हैं महीने में? महीने में 50-60-70 होते हैं। 60-70 हो रहे हैं, तो मतलब उसमें कितने में प्रॉब्लम अरे आती चलो छोड़िए, मतलब आप अब मैं है? दैट इज व्हाई आई विल टेल यू। ठीक है ना, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ कि बीएसएल में फैक्स मशीन थी ना, आज से 30 साल पहले। तो चलिए फैक्स I फैक्स think अभी फैक्स मशीन वाज फैक्स मशीन। टॉक इट लेटर, ये दूसरा फोरम अच्छा, है। माय ओनली एक पॉइंट चीज मेरा भी इशू था माय ओनली पॉइंट इज आपके पास नहीं नहीं नहीं, बड़ा देखिए क्लियर आप कट ऑर्डर्स हैं। अब आप उसी को रेट कीजिएगा बार बार। व्हाई डू यू वांट टू रेट? वी आर गोइंग इन ए डिसिप्लिन मैनर, हम अपने ऑर्गेनाइजेशन डिसिप्लिन बना रहे हैं, तो डिसिप्लिन में पार्ट है कि जो जिस चीज का है उस बजट में उसका What काम you हो। want to convey is that the discipline is going to be followed only in your circuit or your SSA or other SSA. I have not seen anything like this.
मैंने तो कभी देखा नहीं ना एस्केलेशन। आप तो डीओटी पुराने जमाने के आदमी है कि जो मैं रेस करता था कि आपने क्या आपकी प्रॉब्लम आ रही बात। मैं एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। एक जमाने में सीजीएम की पावर 4 लाख की थी। लेट अस मूव अहेड, फालतू आप बात करते अलग हैं। से डिस्कस कर लेंगे। एक हमारा पॉइंट था, हाँ हाँ। वो जो अपना जो सी पेन का इक्विपमेंट तो सब जगह क्राइसिस हो रहा है, और जो अपना जो मैन का इक्विपमेंट आ रहा है जिससे हम सारी जगह कनेक्ट करेंगे, तो जब भी हम मैन की बात करते हैं, अभी जितना हो गया, बट उसमें हम जो कनेक्टिविटी करते हैं उन्हीं पॉइंट से करते हैं मोस्टली, जहां जहां हमारा बीटीएस है, एक्सचेंजेस है, वट एवर। तो वहां पे उसकी कैपेसिटी कम से कम मैन में इतनी होनी चाहिए, जैसे मान लीजिएगा कि अपना बावल है, आप बावल को समझ रहे हैं, बिल्कुल तो बावल में मेरे को मैं बोला कि मुझे यहाँ पे 10G चाहिए, तो वो मैं सीएम वालों को कन्विंस नहीं कर सकता। तो उसमें थोड़ा सा ईबी वाला पोर्शन जरूर रहे, उनको भी दिमाग में रहे कि ईबी की भी रिक्वायरमेंट इसमें ऐड जल्दी आएगी। देखिए क्या है, हम लोगों की लीगेसी वर्किंग रही है ना, हर एसएसए इंडिपेंडेंट काम कर रहा है। आप वहीं देखिएगा एमसी सिंह के यहाँ कोई भी चीज़ इंप्लीमेंट हो जाती है, उसके इनोवेटिव सोल्यूशंस होते हैं। कुछ हम लोग प्रोसेस के अनुसार चलते हैं। अब प्रोसेस में अगर कॉर्पोरेट से पूछते हैं तो वहाँ बहुत बुद्धिमान लोग हैं, मैं भी उनमें से एक हूँ। तो the point is, most of the times you will find not a very good solution from corporate. So it is better you interpret the orders, do it in that way. The budgets also get approved. ऐसा कुछ है नहीं। अभी जैसे मैंने अभी क्लैरिटी मांगा कि जैसे एसबीआई का 20,000 सर्किट है, पूरी बजट आपने 300 करोड़ करके छोटे छोटे टुकड़ों में सर्कल्स को दे दिया, दे डिड दैट। तो हमने अभी पुटअप किया नहीं, अब ये लिंक वाइज आपका जो रेवेन्यू आता है उतना ही पैसा खर्च कर सकते। अरे वो क्लियर कट ऑर्डर इज वेरी क्लियर, यू कैन पुट इट। आप रेडियो लगाना चाहते हैं रेडियो लगाइए। सो कमिंग टू दिस इज द पॉलिसी एनेबलर्स विच वी हैव गिवन। ओपेक्स मॉडल में बहुत सारी चीजें हैं। सो बेसिकली व्हाट आई हैव ट्राइड टू डू, जस्ट गो थ्रू दिस स्लाइड्स। इसमें हमने अलाउ ये किया हुआ है कि किस तरीके से आप लगा सकते हैं। यू सी वी हैव नॉट कम फ्रॉम द outside world or from office only. We were there in the midst of the BAs. I worked in Gurgaon, I worked in this place also, Karnataka also. I worked in UP West also. So basically we understand the problems in the field, but how we have to go ahead about it, that we have to see within the realms of the orders which are given to us. And so if you ask me frankly, in Lee circuit, I have put in many things like this NNI. It was severely objected even by my director sir only. He was not convinced. Then a committee was formed. The committee kept on deliberating for 8 months. Then I could see it could not happen. Then slowly I moved it to this Mumbai, because they need circuits. Tata के साथ उनको POC करना है. Sometimes what happens, corporate is also helpless because of too much of intellectual the way we do it. If I send it to field, you will be able to do the POCs fast. Once you do it, nobody questions it. So the point is we have to be very agile. और क्या है corporate में we think of broader policy. Ground की छोटी छोटी issues को generally it has to be taken in a very good way so that it becomes systematic. तो वो slowly चल रहा है. We'll work on it. Now these are all the policy enablers. Kindly see to it. We have done everything here. एक compendium भी हमने बनाया हुआ है, उसमें सारे policy enablers हैं. ये हम रिपोर्ट मांगते हैं प्रोजेक्ट वाइज। बेसिकली क्या है, किसी सर्कल में हम सर्कल को देखते हैं, आपके पास एक ही कस्टमर के 50 सर्किट हैं, 100 सर्किट हैं, तो हम उसकी प्रोजेक्ट मांगते हैं। जनरली होता है क्या, सब चल रहा है, कितना चल रहा है, सडनली किसी दिन पूछा जाएगा तो सारा लोग उसी में लग जाएंगे। इंस्टेड ऑफ दैट दिस रेगुलर फीडबैक शुड कम। डिस्कनेक्शन के गाइडलाइंस वी हैव क्लियरली टोल्ड, डिस्कनेक्शन इज वन थिंग, काइंडली सी टू इट। कोई भी सर्किट अगर डिस्कनेक्ट होता है तो उसका डॉक्यूमेंटेशन आपके पास प्रॉपर होना चाहिए, एंड you should try to arrest the disconnection people, because this is going to be checked by third party. ये CMD सर ने 3-4 बार मुझे रिव्यू में बोला है। वो मानते ही नहीं है कि दूसरे ऑपरेटर ले गए, या मानते ही नहीं है नहीं हमारा एश्योरेंस का प्रॉब्लम है। मेरे पास तो डॉक्यूमेंट है, बट व्हाट आई फील इज अगर किसी दिन कॉल सेंटर से किसी थर्ड पार्टी ऑडिट करा दिया तो यू शुड बी पक्का इन योर डॉक्यूमेंटेशन, आपने सारे प्रयत्न कर लिए फिर भी रोक नहीं पाए। दैट यू शुड बी वेरी क्लियर ऑन योर पार्ट। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू। Sir, thank you very much, sir, for giving such a wonderful session. And it was very informative and interactive also. Let's have a big round of applause for that.
बीचों बीच, नहीं बीचों बीच सेंटर। For 15 minutes. Thank you.
Okay, I would like to welcome all the participants for this particular house. Now we do have our very own the part of LTTC, Shri Ashish Dayalji, GM in Marset, and we are about to welcome Shri Ashish Dayalji. Let's have a huge round of applause for Shri Ashish Dayalji. Now I would like to ascribe the topic for this particular session is the VSET and the INMAR and sir, the dice is all yours. Thank you, and a very good afternoon to all of you. Myself, Ashish Dayal, and I am looking after the Inmarsat part. So Inmarsat is having a gateway here, and BSNL in partnership with the Inmarsat is providing the services. And there are four kinds of services. One is the most common, that is the satellite phones. And we have around 9,000 satellite phone connections, mostly prepaid, some are the postpaid, plus some other essential services, mostly in the maritime sector to the vessels, the emergency GMDSS service, in the fleets, little bit broadband, and now the IFMC license also is there with the BSNL. So in the maritime and aviation, in association with Inmarsat and Nelco and few other service providers, we'll be selling the airtime and having the business in that category. So I'm looking after that part, but there is a separate unit looking after the VSAT business that is based in the Bangalore. Sir would be knowing that, and we have to cover that. So I will cover that also. So firstly, I will cover that VSAT part, the VSAT business, and then on the Inmarsat services. So, and from the business perspective, we'll see, but as a VA head or in the SSAs, there would be requirement of the VSATs. So we have to take care of there are some points that VSAT unit wants more proliferation, because in this segment, BSNL is providing the services, VSAT services presently in KU band only. KU band, if we understand, that is 10 to 14 gigahertz band, but it is not there presently in the C and extended C band. So as part of proliferation strategy, the BSNL is thinking of having the VNO so that the C band and extended C band services in the VSAT market can also be tapped. So starting with the revenue figures and the number of the VSAT connections. So as of now, around 6,391 VSAT connections of the BSNL are working. And this is the latest figure. And the revenue earned is around 38 crores up till November. And the annual figures of the previous years also we see, so it has been around close to 90 crores, last year around 111 crore. So this is the VSAT business. In the recent times, there have been good response. A lot of work has been done by the Bangalore unit, and we have got the PO from the NDRF, PO from Army. So the two kinds of connectivity. One is the end customer connectivity where the revenue is less. But if we give the lease line, of course, not the full lease line, mostly wherever to the Army and other organizations, BSNL has extended the lease line through VSAT, that is as a backup media only. So that is there. We see the business earned figures here. And they are doing the unit is actively participating in the tenders now. Through the GEM, they have participated in most of the tenders. They are trying to earn more and more. VSAT services, बहुत सारे लोग देते हैं, Hughes networks देता है, private में तो there are n number of operators. In the Bombay side, that is Nelco. Nelco, it's a Tata company which is having the biggest market share. And if we see the VSAT, we see that VSAT traditionally as a this 1.2 meter dish that is there on the that is our say our dish antenna also, or at the
bank ATM, but a lot of advancements have taken place. And now the flat panel antennas are also there. And so these the VSAT services, they were earlier coming under the fixed satellite services. The mobility was not there. So if we look from the licensing perspective, there are two kinds of the licenses that are there for the VSATs. One is the VSAT CUG commercial license, and other is the GMPCS license. So these are the two licenses. But with a lot of advancements in the satellite technology, the availability of the flat panel antennas, and so a lot of new applications have come. And from the licensing perspective, they try to fit all those services and applications into these two licenses only. So a lot of private players, particularly Nelco and other things, organizations, they are actively into the kind of business. We also have got the flat panel antenna, and we are also working on that and able to compete. But वो that depends how you configure that. Low bandwidth रहती है, but all those applications, like in the end-to-end applications, they are carrying very less bandwidth. 2 Mbps कम होगा. Okay. 10 MB to 50 MB on the 1.2 meter diode. That again depends on the kind of bandwidth that you allocate, the transponder bandwidth, and how you configure that. So exact figure I am not able to comment because SI. हाँ हम कराते हैं किसी से. I don't know about that. Yes. No, you can contact the Bangalore unit. They can tell. They have the system integrators. The setup is there. So then any further business also, because when I had spoken to them today morning only, their concern was that a lot of people don't know about that unit. So, but they wanted that in the SSS, there could be one person in the EB team, one person could be specifically allocated, and there could be targets for the VSETs, and that person could coordinate with the Bangalore unit. PGM Mr. Vinod Chandran is there. PGM VSET unit is there. And, under Murali Mohan, CGM CNTX, Vinod Chandra is the PGM VSAT. And up to 100 Mbps also they are giving it, some particular zones. And 50 Mbps easily, 10 Mbps easily they are giving. So we have GSAT 8, GSAT 11, and THICOM. We have the satellites through which we are giving. So mainly in the KU band, we'll see that. So these are some new proposals that are there. The technical part of it will come to it shortly. Steps taken to improve the market share. A lot of things are being tried. They are participating more and more into the tenders. That is one thing. We said business opportunities. Okay. So that is there. We said this, we know. I think these are the technical part. I had added some commercials before that. These bands we understand. Okay. Okay. Coming back to this, your question. So we are basically BSNL is providing VSAT services in KU band through IP Star.
And this GSAT 8, GSAT 11, and GSAT 19 through NSIL, that bandwidth we are hiring and giving the services. And this IP star is at Sikandrabad, the gateway is at the Sikandrabad. 8 is at Bangalore, and GSAT 11, we have the 4 regional hubs. One of the regional hubs is in the Ghaziabad itself, in our premises, where the Inmarsat is situated. The GSAT 11 regional hub for the North Zone is at Ghaziabad itself. Exact number of the VSAT connection as on date is 6391, that I have already told. Okay, this was something from the corporate office. Radio cell is one of the BSNL corporate office that is responsible for the VSAT and Inmarsat business. So BS can share VSAT voucher with all the EB customers because they are in touch with the prime customers. So they can tell us a lot of things are being tried. I had been told that they are maintaining a separate web page and new pamphlets that are being designed so that, and that will be shared with all the BAs so that we can share that information with the customers. We may take up with the PSUs, government agencies who have already taken the VSAT connectivity from the private operators, so we can pitch for the migration. That is, wherever there is a mandate for mandatory utilization of the BSNL services, we can ask for BSNL services. Okay. So this was a little bit about the VSAT part. I think we already shared, sir has already shared that there is a Bangalore unit and Mr. Vinod Chandran is the PGM, and other details can also be shared. So we can have it, be in touch with them, and whenever we are interacting with our customers, we can also tell that we also have the VSAT services and they can avail these services. A little bit more, can you elaborate? My question is, as you said, these services can be extended into aviation sector also. When should we expect those services in aviation? Inmarsat service. On flight. On flight, say there are two aspects of it. One is you provide the services through the satellite, and one is you can provide through the cellular network, the ground-based towers. So what we are here referring is that the satellite-based IFMC service. Now the satellite-based IFMC services are very typical because it takes long time to manufacture an aircraft. And while manufacturing itself, the VSAT we fit into the body of the aircraft itself. We call it that AES, Aircraft Earth Station, because VSAT itself is the Earth Station. So before there is a long gestation period of about 5 to 6 years. Today you enter into the contract, and then you will be able to come into this. So if we look the market globally, Inmarsat, with which the BSNL has the partnership, they are mostly into the maritime sector, and they have about 10% share in the aviation sector. In the aviation, globally, it is the Panasonic which is the market leader. Now, we are trying to go into this. We have IFMC license, and based on the IFMC license, IFMC is not a separate license. In fact, it is an authorization. And based on our authorization, any VSAT service provider, BSNL is a service provider. Based on our authorization, we have given the authorization to about 6, 7 more. Go to the duty side, there is a list, NELCO, UJS, Electronic Lab, all those organizations. So we have entered into because now giving the services, the Inmarsat services or the satellite-based services, basically for the use of internet into the aircraft is
lot of challenge here, because what model is followed is that you one is the satellite service provider, which is giving the satellite services. Now there is a third party which is involved into that, which will provision the internet connectivity, have all those authentication and authorization. And then there are a lot of guidelines that have to be abided by that. Uh, the passenger manifest, through the passenger manifest, how you are able to pinpoint exactly or not to a specific user who has sent the data. So that job, a lot of regulatory challenges are there. So what we have presently done is that we have entered into an agreement with the 5-6 franchisees and organizations who will be providing the services. They will be having their own third party agency, and they will be basically buying the airtime from the BSNL. So this agreement is already there and has not yet taken off, but Inmarsat itself is also the one which has signed an agreement with us, and they will be taking the airtime with us. And as learned that they have agreement now with the Air India. So in the Air India part, they will be giving the services, and then we will be getting the airtime business. So very soon, maybe in this last quarter also, we expect revenue from IFMC. So that is the model. Through the present uh, BSNL is offering the satellite airtime to the agency, which is giving the services for in the flight. So that is one part. There is a other business also, like the aircrafts which are just passing through our airspace. So as per the regulatory policy of the country as of now, the existing connection should be broken and the connection should be re-established through a satellite having the gateway in India, and then those services should be extended. So in that segment also there is expected to be the business, but in the next 6 months or so. Only BSNL is coming. I'll come to that. So basically, we are giving the 4 services as we saw. GSPS, Global Satellite Phone Service, is the satellite phone service. And in 2014, BSNL had been given sui generis license. That is a license of its own kind, special category license. So no one in India can give the satellite phone services of Inmarsat except BSNL. And like other satellite phones, service providers like Intelsat and Thuraya, those are not having the gateway in India. They have not been provided. They cannot provide the services. So presently, the satellite phone service of only Inmarsat is possible, and that too only through BSNL. So these are the revenue figures from the EB business perspective. We are the platinum Group B unit, and the current target in the target for the 23-24 is 100 crores for our unit. And by the end of the up till now, this is giving the 68.9, but we have achieved around 83 crores by this time. So Inmarsat phones, Inmarsat prepaid, postpaid. Then there is another service that is fleet broadband, giving the broadband in the vessels. So that is the customers are mainly all the 3 commands of the Navy, SNC, ENC, and WNC, Indian Coast Guard. So they have taken, and in this service, we have the highest margin of about 35%. So that is the biggest revenue earner, fleet broadband service. And then there is the Inmarsat C service or the satellite C service, which is a mandatory service. Any ship which is going into the international waters should have this
service. Basically, from the distress point of view, if the ship is there and anytime there is some fire or some accident, so they can press some button, the message comes to the MRCCs. We call that the Maritime Rescue Control Centers, like Indian Coast Guard is one such center. So the message will come, then they will extend the assistance to the vessel. So that is Inmarsat Sea service. That is the mandatory part of it. But apart from that, there are some messages also which can be exchanged. So that is the commercial part of it. So we have the good revenue in this segment also, satellite sea service. There are Indian ships which are in Indian territory that is giving some revenue, but there are a lot of foreign vessels that come into our Indian territory, and we get a lot of revenue from those, like in roamers category. Sir, one more query. Yeah, please. Can we market this among private customers also? This GSPS service. Yes. Recently, what happened? One traveling company who does trekking in high mountain ranges. They inquired from me, and then I contacted somebody in ALTC only. They said in J&K, it is not allowed. Some regulation restrictions are there. That is there. Actually, the present license is very restricted. First of all, we can provide services in India only. The satellite phone international roaming is not there. So if someone has taken the SIM and goes out of the country, it will not work. We cannot give. That is one thing. And secondly, the certain zones are defined. So from the security perspective, there are certain boundary areas which are barred. So generally we don't extend, but most of the defense forces, they have taken the connection, and in those border areas, there is no other kind of connectivity. So what we do is that based on the request of those defense forces, we enable the services in those areas. So, but yes, definitely there are some areas where we will not extend the services. Like Punjab is also one area where we don't. So if we give the address of the Punjab, we cannot give the services. But a lot of inquiry from the private. Recently there was a flood in the Himachal Pradesh. So a lot of tourist operators and hotel owners, they have inquired. At that time, we were not having the handsets, but now we have got the handset, because this handset is also has to be taken from the BSNL only. No one can import this and ask for a SIM from the BSNL. We will not allow that. So hardware as well as the services have to be from the BSNL. Now we have around 1,000 handsets we received in the October month only, and 1,000 more lot. So we have sufficient stock. We can extend the services. Earlier, we were not able to give for about past 6 to 8 months. Yeah, I think it's not barred, or entire J&K. I have to look at the beam structure, but not entire part of the J&K would be barred. Okay, we can just inquire also. So if I think there should be possibility in the Leh and some regions of the J&K. Okay, we can. नहीं वो which beam वो उस beam wise there are the entire area is divided into beams, so those beams you will not be able to get. सिग्नल होगा लेकिन उसको accessible नहीं होगा. Generally it will be barred, only certain numbers will be enabled. Beam is like a whole state area, around 21 beams, they are covering the entire India. So this was about the revenue part of it. From the GSPS segment, around 6 crore, that is new business acquired in this year.
Fleet broadband, the biggest revenue earner to the ISRO and others, we had provided some new SIMs, so it is from those. From the GX IFMC, that is some fixed revenue, 7.5 crore annually for the in roamers. We have agreement with Inmarsat that is there, and Inmarsat C new customers 2.2 crore. Others, Ashish ji, what is the speed of this field broadband service? less than 2 Mbps. Less than 2 Mbps. More than 1 Mbps. More than 1 Mbps, but around close to 2 Mbps, up to 2 Mbps. Okay. These all are L-band services. Our GSPS service also works in L-band. That is the handset to the satellite communication is in L-band. So these services come under the L-band category. And in L-band, there is a limitation of the bandwidth. Similarly, the IFMC or Inmarsat, in Inmarsat terminology, we call that as GX. So we have a gateway for the GX also, that is in KA band. So in KA band, much larger bandwidth is possible. And fleet broadband, the 3 commands, then the Shipping Corporation of India, that is also a big customer. And around 41 vessels, on their 41 vessels, we are providing the services. And all those, they have been now migrated to GX service. Earlier, they were working for the fleet broadband, but they wanted the higher throughput. So they have been now migrated to the GX, where the higher throughput, based on the Inmarsat plan up to 3 Mbps, 5 Mbps, that is possible. FBB. In that satellite phones we'll just cover. The satellite phones broadly around chart also we share. It is also there in the PPT. Per call rate is around 18 rupees per minute. Per the FBB. FBB again is based on the plans. Okay, that we can share. That is not there in the presentation. FBB plans. नहीं vessels में कैसे दे पाएंगे on move? This is particularly actually the fleet broadband service, but there is a for the land they have other service which we call it the BGAN broadband, and we don't have the license, but only few defense forces we are giving that. For the land, that would be useful. BGAN terminals, recently we have given 2 BGAN terminals to NDMA. That is being used for M2M services. But in this mining case particularly, I think the BGAN service would be applicable. And tariff actually for the fleet broadband and others also based on the Inmarsat tariff in the corporate, presently corporate office has done. For each customer, the different tariff is there. So separate tariff orders have been issued for SCI. That I can share afterwards. Fleet broadband is because very, very typical. So, and if you look at the Inmarsat tariff, that is multiplicity. So similarly, our tariff also there, we can share that. So this year, new business in terms of the new business, some new fleet broadband connections, then GX connections, some of the vessels we have provided the KA band higher throughput connections, and that is the revenue that we are expecting annually. Apart from that, a lot of retention business from Shipping Corporation of India, Indian Navy, Indian Coast Guard, SATC. SATC alone itself is giving around 10 crores of the business. And GSPS postpaid around 23 crore. So DG Shipping, where we also provide another kind of service, long range identification and tracking service, which is an add-on service over the
existing Inmarsat services. And this also we are providing with another operator, PDDI Japan, in association with that. So that is helpful in identification and location tracking of the vessels. So that is giving around 1.5 crores. Plus a lot of GSPS connections, small, 1, 2, and more number of orders are also there. So this all started with this kind of license that is only with the BSNL, and Inmarsat earlier was part of the ITU. The IMO was the name, International Maritime Organization. Later on, it got converted into the commercial wing and commercial entity, and it was some time back a UK-based company, but now it has been acquired by Viacom of the United States. So it is now Viacom Inmarsat. Okay, this is voice broadband global express, nothing great, safe perspective. So when we are saying L band, in the L band, FPB, GSPS services are there. C band for the feeder ring, Ka band for the GX service we are using. Services at Ghaziabad LES. There's a gateway. I4 F2 was earlier the satellite, but now they have upgraded. There's a I6 F1 satellite, 6th generation satellite of the Inmarsat. So we have the gateway and radio section, and we have a MSC. No switching is done at this gateway. We have a separate Ericsson MSC at Meerut, and that is the switch for this GSPS service. And generally in this L band, inside this room, it may not be possible to have the communication if we are the signal is good enough, but that is not ensured. So if some customers recently the Prime Minister had visited the Uttarakhand, he had a short program in October, and this Adi Kailash, Parvati Kund and all. So there was no kind of connectivity. So we had extended this connectivity. We had given 6 Inmarsat phones. But in order to ensure all the time connectivity, there is a separate outside antenna that is required. And then there is an inside unit, just like our patch panel antenna of the WLL and things like that. So that is known as docking unit. So a separate docking unit is required to ensure the all time connectivity. And this docking unit, BSNL does not provide, but if there is a requirement, we arrange it through the franchisees because there is a network of franchisees. We cannot go to at every places. So there's a franchisee who takes the handset and deliver it and give the services. So it is the franchisee just on the goodwill, they provide the docking unit, which is then returned back. But it is the docking unit which will facilitate the full-time connectivity. Very typical, say this is just a block schematic, how this works. So this is the L band, which is giving the user connectivity. Then there's the gateway. Then there's the mobile switching office, which is the MSC at Meerut, and which will then give connectivity to the PSTN or any other network. So that is how a typical mobile satellite service or a GSPS system works. So in our case, it is the I6 F1 now satellite, which will have, and in order to have the management and other things, that is managed by the Inmarsat team sitting at Netherlands. Broome is the place. So we have a 10 Mbps managed keys line, which is for the management of the O&M and any other things. So that is the gateway high level. This is how it looks like, the satellite phone, the very handy one. The present model is iSat phone 2. So this is iSat phone 2 that is giving the services. This is the tariff for GSPS postpaid. So one is the annual plan and other is the monthly plan. And the cost of the handset is 90,000
That is what BSNL takes for one handset. Neither the set nor the SIMs they can be taken. And our SIM is the one which works in India only. Recently, there was a case when some security agencies had found some 30 global SIM. There is apart from this, there is a global SIM of the Inmarsat also, which works everywhere, but there is no license for that. Prior to these services being migrated to India, Inmarsat was working through some of the franchisees here in India, and then global SIM was also there. But since services have come to BSNL, the BSNL license is presently for services in India. This it will be extended based on all the security clearances and other things. We will be given international roaming facility. Utter. During disaster. That is during disaster. 12 rupees only during disaster, but mostly in the normal time it is 18 rupees. And pulse rate also is 60-second only. So whether you take for half a minute or 1 full minute. So this is the postpaid one, and similarly that is a prepaid plan. Whether it is postpaid or prepaid, the call charges are same, 18 rupees per minute. Since a few of the customers had taken the postpaid, and where we give the invoice also, where in the government sector, the invoice is important. But now our emphasis is to give the prepaid only. And we are also trying to migrate because of the collection difficulty because some 1 and 2 handsets to the places getting regular bills, that poses a challenge. So we are trying to migrate them to the prepaid business. So that is one thing. Yes, yes. But say in the normal, say our metro areas, only those who want to have something extra or just want to have some privilege, those are. Okay. So this is how it is. The gateway is here only. So I'll just quickly wind up. Inmarsat C service I have talked about, the emergency service. And these are all the technical details. Technical terms, L-band services, all these are all L-band services. This broadband global area networks for land. Actually, in this L-band, we have either fleet broadband, swift broadband also we are giving in the aircraft, in the L-band. And the BGAN service. BGAN, few terminals we have given, we are expecting to have the license in this. So technical details that I will leave here. GX getting expanded. KA gateway is there. Those are the kind of antennas, special kind of antennas on the vessels, which give the directivity all the time because of the disturbances in the level and other thing, the directivity is not loose. This is just we are in Indian Ocean region. From the SAT-C perspective, the entire oceanic region is divided into the number of areas. So we are in Indian Ocean region, and through that the satellite SAT-C service or Inmarsat C service is there. We know that we have covered this revenue part. So that is all from my side. Any questions or anything we have? This is a very niche segment. So only when some
emergency communication or in the areas which are not covered by the regular in the forest area when there is a visit or something like that, then there is a requirement and immediately we have to fulfill this requirement. So we can tell all the district administration, state heads that this kind of service is available with the BSNL. And in case of any such, because these exigencies come off and on, and at that time we should be able to. Unit 7, they are taken. But as a BA head, we should be aware that such kind of service is there, and we can pitch for that service. So, आशीष जी, बहुत सारे एरिया जैसे होते हैं जहां पर हमारा we are not able to provide lease circuits. Whether live streaming is possible for any event? I think vegan it will be possible. Because right now, then VSAT can work there, no? अभी मथुरा में एक इवेंट थी, मोहन भागवत जी वहाँ आए थे और बड़ी एक गौशाला का उद्घाटन किया. And we did not have any connectivity. So finally we refused that we are not able to live stream this. If this is the case, if this can be done, then we should have a provision of some temporary period connection. We may charge higher, and in such cases we can make available these services. So we will not say no at least. Yes, anywhere we can give the service. That tag we can continue with the BSNL. Yes, actually the temporary plan is there. Apart from the monthly, temporary rental is also there because some less period if for some elections and very short duration they have taken, that period is there. But I think the VSAT can also work in such cases. But again, the how will require sort of installations also. How quickly then some vendor will come in the how quickly that can be done. I think we have to just check up with the. We will discuss afterwards also because sometimes it is required, and we only get some 24 hours or so. We have to provide the service. That is the time is the factor. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you for such an informative session by Ashish sir. Now on, I would like to invite PGM sir, PN Dohre sir for presenting a memento to Ashish sir. Now, without further delay, I would like to, on behalf of this house, I would like to welcome Shri N.K. Goel sir, PGMEB to BSNL Corporate Office, to have a very short, crisp, and to the point presentation on the topic of the evolution of the EB and the EB products and the analysis of sales funnels. Let's have a very huge round of applause to welcome Shri N.K. Goel sir. Thank you, sir. The presentation start kar de. I think this is okay. Yeah. आप मुझे वो pointer. Good afternoon, everybody. This is pre-lunch session, but still you'll have to bear with me at least for an hour or so. Before I start, my request to everybody will be kindly either put off your mobile, switch off, or maybe on the vibration mode. And if it is very urgent to attend the call, kindly go outside and then come back. Otherwise, just keep your mobile one side for an hour or so. This session, I'm quite sure, will be very useful for you. Reason being, most of you are doing the enterprise gold business. We have dedicated platinum units in field, but majority of the BA heads are doing only the gold business, and I'm in charge of gold business in corporate office. So basically your proposals and your queries are majorly related with my section in the corporate office. So kindly feel free wherever you want some queries or feedback or anything is required. Otherwise,
ठीक है. So straightway coming, like which topics I'll be covering during this session. Broadly in 5 parts. Overview of the enterprise vertical, like what different units of enterprise vertical in corporate office are doing, their contact details and organization structure. Then brief about the enterprise business goal, means what my section is doing in corporate office. Then my section has given two well-defined policies, highlights of those two policies. One is the CPNE guidelines. Broadly in the field, we call it SI policy. Then the channel partner policy. And the good part is recently, just last week only, we have modified both these policies. And these policies are likely to be put on the intranet maybe by today or latest by tomorrow. Then what are our expectations from the BA heads for doing the enterprise business? So coming to the overview of the enterprise vertical, historical background, if you go see, most of you might be knowing that earlier there used to be the concept of, say, director operations, director planning, etc. in corporate office, and there was no verticalization like CFA segment, CM segment, and enterprise business. Way back in 2009, BSNL corporate office engaged BCG consultant, who of course gave this verticalization structure to BSNL. As per that, CFA vertical, CM vertical, and EB vertical were formed. And the basic purpose of forming the EB vertical was that EB business is generally totally different than the retail segment business. CFA landline like broadband and FTTS business, and for that matter, prepaid and postpaid business are totally different. Enterprise customers are to be handled in a totally different and dedicated way. And similarly, the revenue from such enterprise business, say if you talk of the ARPU, ARPU of an enterprise customer is generally 1 lakh and above per year. So those are the high paying customers, and we call them as the low hanging fruits. So enterprise customers are to be handled in a totally different way. That was the main reason that BCG told that this separate vertical should be there. And this growth of this segment is quite rapidly increasing, and such customers are to be dealt in a different way. Then several type of enterprise customers are there, like platinum, gold, silver, etc. So basically we can say there are 4 type of enterprise customers. Large customers, we can call them platinum customer as well. Then medium customers, we can call gold. Then small means silver. And the fourth and quite rapidly increasing category is the SOHO type of enterprise customers. SOHO means small office, home office, shop office, home office, whatever we call, but totally a small category. They are more similar to the retail type of customers and are to be handled in a totally different way. So this slide just shows like which customer will be calling as the large, medium, or the small, depending on the turnover and the number of employees. This is there in the slide, not to be talked much about that. Of course, the presentation will be shared with all the BA heads. So next, of course, platinum account, gold account, and silver account. Generally, like we call a customer as the platinum customer, depending on whether it belongs to the IT sector, telecom sector, BFSI segment, manufacturing segment, or the services segment. So if you go by the turnover criteria, if a customer, enterprise customer belonging to the BFSI segment or the IT segment or the telecom segment is having the annual turnover of 100 crore and above, we categorize it as a platinum customer. Whereas in case of manufacturing, services, and government customer, if the turnover is above 500 crore, we call it a platinum customer. Similarly, in case of gold customer, if it belongs to BFSI, IT, or the telecom, and the turnover is above 50 crore up to 100 crore, we call it a gold customer. Whereas in case of manufacturing, service, and government, if the turnover is between, say, 50 to 500, 100 to 500 crores, we call it a gold customer, and similarly this silver customer. And of course,
average spend of a platinum customer, gold customer. This is all based on certain calculations, but of course it will be different from different customers. Like SBI is a platinum customer, their telecom spend over a year is about 500 crore. Similarly, some platinum customer may be spending less than 5 crore per annum as well. So it may differ from customer to customer, but the data shown here is just an average data and the requirement of a customer. Like for a platinum customer, presence of a telecom operator on pan-India basis and the reliability of the service is most important, whereas the price is secondary. Whereas in case of silver account, presence on pan-India basis is not required, but the price is more important for them. So this slide just shares with you like which are the characteristics of different customers. Then as per this slide, like there are different ways of handling the customers. Platinum customers are generally handled by way of national account manager and gold customers are handled by way of key account managers, whereas the silver customers are generally handled through channel partners. And this is the segment which we are missing a lot. We are not able to handle the silver type of customers, or we may call them MSME segment or so, because we are generally not doing the enterprise business through channel partners, in spite of the fact that the channel partner policy is in existence for the last 3 years. So of course, in the later part of the presentation, we'll be discussing about the SI policy and channel partner policy. But my request to all the BA heads present here and of course the IFAs as well, that let us utilize the channel partner policy as well for adding additional enterprise business to BSNL Kitty. Several times we say that once we are able to do the business ourselves, why to give commission to the channel partners? But that is totally wrong way of thinking. Whatever business we are in a position to do ourselves, let us keep on doing. Purpose is not to give commission to the channel partners. But whichever customers are not with the BSNL and we, because of the paucity of staff, are not able to tackle those customers, let us engage the channel partners and give liberally the commission due to them. They will be earning revenue to BSNL. Out of that, a small part will go to them. So that thinking and that mentality has to go, of course. This is, of course, you might be knowing that our EB portal is there, and every enterprise lead is handled and moved through EB portal only. And each lead is, we call it stage 1 lead, stage 2, 3, or 4. Stage 1 is nothing but whichever enterprise business comes to our knowledge, and there appears to be a remote possibility that the business could come to BSNL. That business has to be entered in stage 1. Once the negotiations start with the customer and some rate is offered to them, the lead is to be moved to stage 2. And once the negotiations are almost finalized and the offer is submitted to the customer, the leads need to be moved to stage 3. And stage 4 is nothing but the final booking of business with BSNL after getting PO from the customer. Stage 5 is nothing but dropping of the business. Business from any stage, maybe stage 1, 2, or 3, can move to stage 5. Once it becomes clear that the business is gone away from BSNL and it is now more a live business as far as BSNL interest is concerned, it will be moved to stage 5. So my request to all BA heads will be, kindly issue instructions to your CAMs and EB people in the field that bigger ticket size leads should not be moved to stage 5 without your approval or maybe discussion with you. And it all depends on the size of the BA. Suppose a BA is like Bangalore BA or so, maybe each and every lead moving to stage 5 may not be possible for the BA head to monitor. So you can very well define the value, say any lead about 10 crore in value is not to be moved to stage 5 without the approval of BA head. Similarly, say any lead above 1 crore value should not be put to stage 5 without the approval of DGM concern. 50 lakhs could be with the AGM concern. That you can decide as per the size and the ease of handling. I'll say, if in case of smaller business, smaller BAs, you can always issue instruction that no business lead should be moved to stage 5 without discussing with the BA head.
And 1, 2, 3, of course. And another thing you are to ensure in your BAs that no lead should be kept in pocket of the CAMs. Whatever business is coming to the knowledge has to be entered in the EB portal so that the monitoring of the same is possible at the level of DGM, at the level of GM, CGM, or maybe directly by the corporate office. Because corporate office also is continuously monitoring such leads which are pending for months or years together in the portal. So corporate office if monitoring does not mean that we are like taking class of BA heads. We are just helping the BA hands for booking of the business. Moving further, like now the earlier there used to be a time that we will sell the product as per our ease. Like you will be asking the customer, you takes 2 Mbps vanilla bandwidth from us, you take landline connection from us, that is available with us. But no, now the time is you are to sell the products as per the requirements of the customer. If the customer says, I want managed service, not only the vanilla bandwidth, but along with say router, modem, converter, or maybe 4 of his computers are to be connected by creation of a local LAN or so. So you have to provide the service. So now basically the time is for product selling, not the solution selling you have to do, not the product selling. Landline connection also customer may say, I want a CUZ group, I want a PABX, whatever requires customer, we have to sell. So this is again the point where BSNL is lagging. Generally, we try to sell whatever is available with us and we are not succeeding in our business. We have to sell as per the requirement of the customer. We are to find what solution will be suitable for him. Maybe in totality, you are not able to deliver from BSNL kitty. Sometime partners may be required. So happily, and we are to engage the partners and we have to be partner friendly as well. For delivering a circuit, if you are able to earn say 1 lakh per annum from the vanilla bandwidth, maybe 10,000 additional will be required to be paid to the partner and customer will happily be paying say 1.25 lakhs or so. So we have to be very proactive and very friendly in engaging the partners for the enterprise business. So this is broadly the first part I will say. If you have any question up to now, otherwise I'll be moving to the second part, like what is the structure in the corporate office, which will make you clear like which unit you are to talk to if you have any issues. So should I move or some query or some point up to this? Okay, there are no points so far. So as far as director enterprise segment is concerned, this vertical is concerned, in the corporate office, under direct enterprise vertical is NFS unit, means network for spectrum, which all of you may not be involved. Then core network operations and planning, then enterprise business for platinum and gold, then delivery of lease circuits, then this ILD business for, of course, international, this long distance, whatever could be the requirement. Say you are to deliver some circuit in USA, UK, Singapore or so, and for that the tariff or the partner may be required. So ILD wing is there. SP means like a submarine cable project like Kenny bandwidth, you might, some of you might be knowing. Then KLI bandwidth for this Kochi and Lakshadweep Island. So that wing also is under direct enterprise. GM radio, under which this VSAT and Inmarsat services are coming. So that unit also is with the direct enterprise. Then material MM cell. MM cell for whole of BSNL procurement, including CM and CFA vertical, is under direct enterprise. Then telecom factory and field units. Field means all the for our core network operations and planning. Say CNTX, North, South, East, West, and NE, and the East zones. Those are coming under the director enterprise. And these are the contact details and the unit head's name as well as their designation along with email IDs. So you can accordingly contact whenever required these unit heads. Then of course, yes, next coming to the policies by different units of corporate office.
For doing the enterprise business, several of the policies are required to be operated, mainly for engaging the partners if the solution is to be offered to the customer. For vanilla bandwidth, of course, no policy may be required. So in the field, there is confusion in the mind of people many times that which policy in the corporate office is handled by whom. So this slide shows like which policy is handled by which unit and who are the contact persons, like who, which the DGM, AGM or DM is looking after the policy. And unit heads contact details, of course, in the previous slide you might have seen. So accordingly, you can contact if required and for any policy in corporate office. Next, coming to the I was telling enterprise business is rapidly growing. So if we go in the BSNL perspective, like this enterprise vertical was formed in the year 2010-11. And in that year, our enterprise business booked was 2,258 crores. It is increasing gradually. And last year we could book a business of about 9,000 crore. This year, of course, I'm quite sure we'll be crossing the landmark achievement of 10,000 crore. So if we calculate the annualized growth of business, it is coming at 11% on YOY basis. And similarly is the revenue. So if we see how enterprise business is contributing to the BSNL revenue, you might be knowing that BSNL revenue more or less is fixed or maybe coming down also, but enterprise revenue is going up. So if you see the percentage, 5 years back, enterprise business revenue percentage to the BSNL revenue was 11%, which is increasing rapidly. And for the last 3 years, it is somewhere in the range of 25%, 26%, or 29%. So here comes the importance of enterprise business. By making a little bit extra efforts, growth in enterprise business and revenue is tremendous. So you have to basically put sufficient and suitable staff for EB sales in the field so that revenue of the BA will be increasing like anything. And I have the data with me, of course, but I'm to complete within 1 hour. Whichever BAs have posted sufficient and suitable staff in the BAs, their revenues are growing more rapidly than the other BAs. So that was the first part so far. Any questions, any feedback, any suggestions so far? Otherwise, I'll move to the gold part of the presentation. Coming to those two policies will be coming. This is the general part, and those two policies will definitely require more discussion and feedback from you. So coming to my section, how the working structure of enterprise business 2 in corporate office. This section is headed by a PGM level officer by me. Then 1 DGM is there, 3 AGMs are there. And under each AGM, 2 DMs are there. And 1 DM is in charge of 1 particular zone. And remaining 2 DMs are looking after general issues. So their all contact details along with mobile numbers are there. If any doubt is there, anybody accordingly can be contacted. This slide shows what roles and functions my section in corporate office is doing. So basically my section is handling all the gold customers business, silver customers business, broadly the state government business. Then these 2 policies, SI policy, which we call CPNE guidelines, then channel partner policy, then issuance of IPMS and KPI for the enterprise vertical as a whole, not for EB2 only, for the enterprise vertical as a whole. Then ranking policy guidelines for finding out which is the best performer circle, and based on the policy, every month we are declaring which particular circle is the best or the second best or the third accordingly. I'm quite sure that some of the circles in turn are finding within the BAs also which is the best BA or the second best BA. Then some other issues whichever your queries regarding conveying ECT approvals to the field units,
then guidance or clarification, particularly for the raised tariff issues, or maybe guiding the field units for the reverse auctions or the tender, like if any tender is there, which rate you should go for. So many circles keep on discussing with us. So these are all the functions being handled. And of late, we have started a new thing like one-to-one VC with the circles. In this financial year, we have started that my section holds VCs with the circles, which are handled, which are attended by circle head, EB head, and all the BAs are the OA heads and the CAMs. Such VCs have been conducted with around 50% of the circles, and good results are coming out of that. And this is just an overview of how the pan-India basis gold units are able to perform. The new first-time business targets given are 1,060 crores. The new existing business targets are 1,350 crores. Retention business 2,090. Private category of customers business 1,250 crores. And total stage 4 is 4,500. Proportionate so far it comes to 3,000 crore. Our achievement on pan-India basis is 111%. But in the last SOCC, many of you must have attended the proceedings through VC, through this live streaming. CMD BSNL had categorically told that consider internally that your targets are 120% what has been assigned by corporate office. So if you go by the 120%, our achievement is 111% against the target of 120%. Broadly, we are able to achieve the targets. Next coming like which business is getting booked how much, and in which business we are like on YOY basis we are better or we are lagging. So here as you can see FTTH broadband is the most prominently coming up business. In this year we have been in a position to almost double the last year performance. So the red means wherever the booking of business is less than the last year, but in the greens as well you will find that MPLS, although it is not less than the previous year, but overall on YOY basis, our business is around 20 to 30% more than the last year. So that way our core business is not growing at that pace. And that is a real cause of concern, because stickability of the core business like MPLS business, ILL business, and P2 business, once it comes to BSNL, chances of its retentions for year together are more. But in case of landline, this broadband FTTH business, maybe the business today is coming to us, next year it will run away from us, particularly the push SMS business, M2M SIM business. That business is not for long period, I'll say. So you have to strive more for the core type of business, means lease circuit business. Then we have given a clear cut circles monitoring mechanism, means ranking guidelines. So this year we have given 4 targets: new first time business, new existing retention in private. Accordingly, the marks in the ranking policy have been given. Then there is a provision of bonus marks. Bonus marks means if you are performing more in the core, 5 or 10 bonus marks you may get. And then if you are performing more than the assigned targets, accordingly, as per the right hand side table, bonus marks will be given. Then on pan-India basis, we have divided all the circles in 2 parts. Group A circles are the bigger circles. Group B circles are the smaller circles. Every month ranking, which circle ranks where, that rank is given on the EB portal in this internet. And then 2 top performing circles per quarter are appreciated in the form of excellency certificate by CMD BSNL, and 3rd and 4th in the form of appreciation dues by direct enterprise. This is just to share with you which circles as of now is stands where. Like in group A, Odisha is at number 1 position, Madhya Pradesh is at number 2, whereas Rajasthan is in the last. Similarly in group A, Himachal Pradesh continues to be at the top and Jharkhand continue to be in the last. This is just to share with you. Similarly, I'm quite sure your circle might be declaring which BA is at top, which BA is at the bottom. Then just I like attention on this particular slide from the BAs. Like I was telling you, we had been conducting one-to-one VCs with the circles.
and some of the common observations which may be of use for all of you, that in such VCs, basically what we are doing in these VCs, your CAMs, your BA heads, OA heads, EB head of the circle and the circle admin CGM are on one side, and my team in the corporate office is on the other side, and we are reviewing the performance of circles, and very strong IT tools are in existing in BSNL now. You might be seeing that as far as enterprise business is concerned, we are not taking any statement from the field generally, and each and every data is taken from the EB portal only. Today also, whatever data is being shared with you is from EB portal only. Similarly, for monthly VC, HOCC, generally the EB portal data is shown. So if you are doing anything hanky-panky, like any circle is just trying to manipulate the things, one way or the other, you will be caught. For example, our instructions are there, you are to post at least 4% of the total staff for EB sales activity. Suppose you are just showing, instead of 4%, you are putting 2%, and you are showing the figure that 4% has been put. Then there is another target, monthly visits per CAM. So per CAM visit, if you are just showing fake figures as far as the CAMs are concerned, then monthly visit per CAM data will be poor. Accordingly, so what we could find through such VC, just to share with you, that the number of exclusive sales back to the data shared. Then EB portal credentials of several exclusive sales staff are not yet created for months together. That shows that such people are really not working in EB. Otherwise, an exclusive CAM without EB portal credential, how can he work? How can he create the lead? How can he move the leads? So basically, such data we consider to be fake. Then whichever logins are created, it was found that for weeks together or months together, they are not logging in the system. So if the logins are created, but a CAM is not using the portal, not logging the portal for a month or so, that shows he is practically not working in the EB. It is just shown in the papers only. Then of course, many of the CAMs are having zero leads and nil business. Again, that gives indications for that thing only, that CAM data given by the field is wrong. So the purpose of showing this slide and discussing with you, kindly try to be very transparent and fair in giving the data, and let us not show any fake figures to corporate office or the circle office, or otherwise maybe 2 of your parameters will become better and another 4 parameter will become poorer. So let us be quite clear in all the parameters. Then one another thing, like it was found that wherever new CAMs have been posted, and if I'm asking anything from the CAM, that fellow shows I joined just a month back and I'm not aware of the things. So basically that shows that a skill set transfer or the hand holding is not being done. If a CAM is getting transferred and new CAM is coming, it's the duty of the BA head to ensure that everything is transferred in a proper way. Like rather, I will say it's the duty of the old CAM that he is to take the new CAM to the respective customer and he is to get the hand holding done. And the customer must meet the old CAM as well as the new CAM whenever the transfer takes place. And accordingly, the proper charge making or taking over has to be done. It should not be the case like new CAM is coming and for a month or so he is saying, I'm not knowing anything because I'm the new to join. And some of other things which you can go through, of course. Sorry. Yeah, now coming to the two well-defined policies, which we call CPNE guidelines and our channel partner policy. Basically, CPNE guidelines are in exist. Any questions so far? Huh. Should I move to that one? Are you done? This one? This one? Yeah. Last but one point. Yes, new bundle services with ILL FTTH in partnership with professional.
Basically, again, that comes to that vanilla bandwidth selling is not so easy as of now. You are to sell it as a product. For example, in your BA, there may be some industrial area, say shoe manufacturers are there, or maybe stainless steel utensil manufacturers are there. Their requirement may be totally different than the requirement of some other industry state area. And you find some 1,000 industries of shoemakers are there, and those shoemakers need these some extra facilities other than your bandwidth, maybe some GST compliance or something like that. So you can form a product in the BA, like along with this partner, I am offering this service. Say Tele also is bundled with your bandwidth for accounts keeping. All the bigger people will be having their accounts people separately and Tele software also. But a very small person, say startup company or MSME, may not be in a position to purchase a Tele software generally costs 50,000 or so. So he may be interested in utilizing your shared service. And you may find some chartered accountant who may be in a position to provide on shared basis the accounting services to such MSME. So you may offer the say ILL bandwidth or the FTTH bandwidth along with the shared basis after this tele service. Accounts keeping. Similarly, accounts keeping. Any accountant will charge a minimum of 20,000 per month or so on Pan India EOC. But there may be a very small company, say maybe only 3 employees are there. Their salaries are to be released on monthly basis. Their TDS is to be deducted. And the owner may not be in a position to handle all such things. He is to do his technical work as well. So in the market, people are there on shared basis, accounts keeping services, say at a rate of 5,000 per month or so. So you can make some bundle product. That is what we require. So in each BA, we find that so many industrial areas will be there. And requirement of one type of industry is different than the other type of industry. So you are to launch a product as per the requirements of that BA. And that is what your competitors also are doing. You will be finding that Airtel or Jio are launching such services. You are to read the model of your competitor and then launch the service in a better and say in a modified way. So that is the purpose of this. Yeah. Pardon? The 4% staff posting criteria includes group C also, na, sir? Because one of our person is. See, let me tell you. On executive in enterprise business. The only thing is the person should have business acumen and he should be handled to customer. Maybe if required, he is able to speak a bit English also accordingly. He's working for just let 15 years. Let me He was not included by. let me just complete. So there is no bar that non-executive cannot be posting. Earlier, we used to call this cadre TTA, which is now called JEs. Many times, very good JEs are available who are otherwise in the non-executive category. So if direct BTech or MBA JEs are there, you can very well post. But as per the mandate of corporate office, you are to post 4% of the total staff, whatever is available in the circle for the EB sales on exclusive basis. And the persons posted in EB are generally executive, not that lineman or clerk you will be posting, but good J's you can. It is 4% of the total staff. That will make 10%, sir. Correct. It could be 10% of the executives. I do agree. But you are earning 25% from the enterprise business. Enterprise में तो बाकी तो maintenance भी तो कुछ हाँ, बाकी का मैं बताता हूँ मैं. Basically आपकी कितनी maintenance activities outsource हो चुकी हैं. OFC maintenance broadly outsourced. This cluster copper maintenance also is gone. So many activities are outsourced, and moreover, this is the mandate of CMD BSNL, not my section mandate. I had given a mandate of 3%, CMD BSNL changed it to 4%, and it is becoming the part of CGM's IPMS score as well. ये सारे mandate ऐड कर लेंगे तो 150% हो जाएगा सर.
हाँ, सारे मैंडेट का वैसे होगा जैसे अभी टोटल सेल्स के लिए 10% का मैंडेट है, उस 10% में आपको 4% ईबी में लगाना है। बट सीएम सेगमेंट में आपको फ्रेंचाइजी वाला कॉन्सेप्ट है, जो फ्रेंचाइजी के थ्रू सेल करानी है। सीएफए में आपकी बहुत सारी सेल टिप के थ्रू हो पा रही है, तो इसलिए ईबी की रिक्वायरमेंट कंपेरेटिवली इधर हमारे 4%, let us try to be practical, whatever best can be. 4% means you have to post sufficient staff. But if you find your BA will be closed and you cannot post more than 3%, so you are better judge. Corporate office guidelines are to be followed to the best possible extent, not like you have to close the circle or the BA. You are the best judge in the BA. एग्जीक्यूटिव का 4% हो जाता तभी ठीक रहता सर। Pardon? एग्जीक्यूटिव का 4% होता तो भी ठीक हो जाता सर। बट आपने एग्जीक्यूटिव का 4% पोस्ट कर दिया अभी? ज्यादा ये से ज्यादा है सर। मैं अभी बेसिकली वो डाटा अभी लाया नहीं, क्योंकि वो फिर पूरा दिन का हो जाएगा। अभी तो मेरे पास ऐसे बीए हैं जिन्होंने एग्जीक्यूटिव का 1% भी नहीं पोस्ट किया। तो टारगेट आई एम नॉट सेइंग कि आपको 100% अचीव कर पाएंगे आप, बट सेवरल बीएज हैव पोस्टेड मोर देन 4% एज वेल, and those BAs are in a position to grow enterprise business in a better way. So you are better judge, I will say. If you are not able to post, maybe your counterpart will be able to do. So 100, all the 5 fingers cannot be alike. सर एक क्वेरी था सर, ये जो अभी आपने बताया सर कि जो स्टाफ की मैन पावर की जो पोस्टिंग है, इट इज इन नॉट इन प्रोपोर्शन टू व्हाट द रेवेन्यू इज एज पर एज ईबी इज कंसर्न। जैसे आपने कहा 23% हमारा रेवेन्यू शेयर है, वही स्टाफ जैसे अभी जैसे मैं कॉस्ट सेंटर मैप करके देखूँ तो ओनली 3% ऑफ द स्टाफ इज पोस्टेड इन ईबी सेक्शन। Basically 23% नहीं चाहिए frankly speaking, क्योंकि EB में आपका एक नहीं सर, एटलीस्ट 7 to 8% हो। लेकिन हमारा मेरा एक उसमें एक इशू ये है सर, जितने भी अभी नेगोशिएट करके एग्रीमेंट तक ले आते हैं, उसके बाद जो ईबी टीम में है वो उसको सिस्टम में कॉन्फ़िगर नहीं करता सर सीडीआर में। वो जो नॉर्मल हमारा जो लैंडलाइन या बाकी सर्विसेज की जो कमर्शियल टीम है उनको भेज दिया जाता है, और वो कॉन्फ़िगरेशन कहीं ना कहीं से गलत हो जाता है। It all depends on BA to BA. I know a few of the units who are having separate commercial officer for the enterprise business activity. Again, it depends on the size of the BA. Maybe Bangalore will be in a position to do that. Rewari may not be in a position to do that. So depends on how big the size of BA is. Some of the BAs are having some 300%, some are having 30% only. So exclusivity all depends on that. क्या आती है सर, बिलिंग गलत हो जाती है ड्यू टू रॉन्ग कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ द प्लान। और बट देखिए इसमें होगा क्या, जहां पे आपका साइज बड़ा है और आपका बैंगलोर या बहुत बड़ा बीए है, तो बीए हेड को उतना टाइम नहीं मिलेगा कि वो जा पाए डिटेल में। बट छोटा बीए होगा तो बीए हेड का भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कभी कभी उसकी डेप्थ में जाए। और अभी नेक्स्ट स्लाइड में मैं दिखाऊंगा, एक हमने ये भी रखा है, हर बीए हेड के लेवल पे वीक में एटलीस्ट 1 आवर एक्सक्लूसिव बीए का डिस्कशन होना चाहिए। अभी बहुत सारे बीए ऐसे पूरे महीने में ईबी की टीम को संभालते ही नहीं है कि वो जो हो रहा है सो हो रहा। तो मिनिमम 1 आवर डज नॉट मीन कि आपको 1 आवर ही करना, इट कैन बी मच मोर देन दैट, बट मिनिमम 1 आवर ऑन एक्सक्लूसिव बेसिस डिस्कशन विद ऑल द कैम्स एज वेल। जैसे हम कॉर्पोरेट ऑफिस से भी स्टार्ट करके कर पा रहे हैं कि 2 घंटे का डिस्कशन हर सर्कल के साथ, तो उसमें ये निकल के आया कि सीजेम्स का भी कई बार ये कहना था कि ऐसा डिस्कशन तो हमने भी नहीं किया अपने कैम्प के साथ। तो वी एक्सपेक्ट के सभी कैंप्स के साथ, नॉट फिजिकली, जो स्टेशन पे अवेलेबल है मे बी फिजिकली, बाकी वीसी भी आजकल हमारी अच्छी चलने लगी हैं, और वीसी भी अरेंजमेंट किसी के पास पॉसिबल नहीं है कैंप के पास, तो बीए हेड के पास तो वीसी अरेंजमेंट रहता है। तो बीए हेड के पास जितने भी 8-10 कैम होंगे वो बैठ के सर्कल के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। सिमिलरली बीए हेड जो मीटिंग करेगा, बीए हेड का तो बहुत सारा स्टाफ तो उसी स्टेशन पे होता है, तो आप वीक में कोई भी दिन फिक्स करें, 1 बार 2 बार, 1 घंटा 2 घंटा, और कैम की पूरी प्रॉब्लम को जरूर सुने। जैसे मैं भी जब मीटिंग करता हूँ वीसी में, तो मैं कैम से ही सुनना चाहता हूँ, सीजेम्स तो हर महीने सुनते ही रहते हैं उनसे, बट कैम की कई बार फीडबैक, इतना बढ़िया फीडबैक आता है जो पैन इंडिया बेसिस पे इंस्ट्रक्शन इंप्लीमेंट करवा देते हैं। तो बहुत सारे कैम हमारे बहुत अच्छे हैं, सिर्फ ये कि उनको हम पूरा उतना सुनने का टाइम नहीं देते हैं। डाउन बिलो तक एक आरएम से, रेगुलर मजदूर से भी कुछ अच्छा फीडबैक आए तो वी शुड बी अप्रिशिएटिव ऑफ दैट।
कई सर्कल्स ने बड़ा अच्छा किया, जैसे मैं गुजरात गया था पीछे, तो गुजरात, एनीबॉडी फ्रॉम गुजरात? नो। अच्छा, गुजरात में जो आपका अहमदाबाद मेन बिल्डिंग है, जो आईक्यू के नीचे वाला, लिफ्ट के बाहर आपने बड़ा अच्छा कर रखा है, जो ईबी पर्सन ऑफ द मंथ डिक्लेयर करते हो आप, और उसका एक फ्लैक्स लगा दिया जाता है। तो जो भी चंडीगढ़, नहीं आपने भी, बहुत लोगों ने किया होगा, बट आप उसमें देखो, आपका कुछ भी तो खर्चा नहीं हुआ, 100 रुपए का फ्लैक्स बन जाएगा, और उस पर्सन को कैसी फीलिंग आएगी कि सीजन भी ऑफिस आ रहा था, उसको फ्लैक्स को देख रहा है। तो इस तरह की अप्रिशिएशन कुछ कुछ आप अपने लेवल पे बेस्ट कैम बेस्ट से जो जिस भी शेप में ला पाए। और हमेशा पैसा या कैश अवार्ड की जरूरत बीएसएनएल में नहीं है। हम लोगों को उतनी सैलरी मिलती है कि 10-20 हजार किसी को दे दोगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बट आप कोई ट्रॉफी, सर्टिफिकेट, फ्लैक्स या रिकग्निशन उस वे में देंगे तो डेफिनेटली रहता। मैंने तो यहाँ देखा, जैसे मैंने कॉर्पोरेट ऑफिस में स्टार्ट किया हुआ, जो रैंकिंग पॉलिसी में एवरी क्वार्टर जो एक सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस सर्कल्स को देते हैं, 2 ग्रुप ए में 2 ग्रुप बी में, तो सीजीएम्स के और उनकी टीम का जैसा एक अप्रिशिएशन मुझे भी आता कि मजा आ गया ये लेके। सिमिलरली जैसे सर्कल है इसमें एचओसीसी में हम ट्रॉफी जरूर देते हैं हर बार, जो बेस्ट परफॉर्मिंग सर्कल्स हैं 2-3-4 को जरूर देते हैं। रेप्रीमांड वालों को जनरली नहीं देते, बट इस बार जस्ट एक सजेशन माइंड में आया है कि अगली बार से जो बॉटम पे होगा उसको एक रेड कलर की ट्रॉफी देंगे, कि उसकी भी क्लैपिंग करा देंगे। तो उस तरह का कुछ कुछ आप अपने बीए में कैसा भी मैकेनिज्म कर सकते हैं। तो वो एक बेसिकली ये जो मैं गाइडलाइन दिखा रहा हूँ, हर बीए के लिए एक जैसी एप्लीकेबल नहीं होती, बट यू हैव टू जस्ट गो टू द थिंग के इस एंटरप्राइज बिजनेस में आप जितना स्टाफ लगाएंगे अकॉर्डिंगली रेवेन्यू उससे कहीं ज्यादा आने के चांसेस है। जिस बीए ने 4 आदमी एक्स्ट्रा लगा दिए, एंड ऑफ द क्वार्टर या एंड ऑफ द से ईयर आप देखना, वो 4 आदमी के लगाने से आपके 40 लोगों की सैलरी निकल आएगी उसी से। तो ये एक प्रैक्टिकली देखा गया। तो बट एनीवे आई विल से के बीए हेड्स आर द बेटर जज ऑन दैट। तो शुड आई मूव फर्दर? Yes. So basically our this CPNE guidelines, which we call system integrator policy also, this is in existence since 2003, means for the last 20 years. And again, the purpose is that only कि selling vanilla bandwidth is not possible, and I will say not advisable as well. Reason being why not advisable, a just hypothetical thing. If you are able to sell a vanilla bandwidth at say rupees 1 lakh, and if the partner component of 20,000 is added to that, you will definitely be able to sell that product at much above the rate of 1.2 lakhs. So customer wants the solution, particularly the smaller customers, silver type of customers, they do not know what telecom service they want. We are to educate them that this is your best fitted requirement, you want this solution. But in case of bigger customers like SBI or so, they are much more expert than us as far as their enterprise services and telecom component is concerned. So say in case of SBI, they will simply be saying, you deliver a 4 Mbps bandwidth at our branch. So that is sufficient for them. And further LAN, computers, connecting, everything they will be doing. But in case of silver customers or maybe MSME segment, smaller customers, they really do not want what services they want. So we are to educate them. Our partners are to educate them. So where the role of partners will come. And then the basic purpose of this CPNE guidelines remains that enterprise customers are to be treated in a totally different way. It is not the procurement for BSNL, and it is not a normal procurement process. In a normal procurement process, maybe your RFP has to be very tight. You have to follow each and every guideline of Government of India, say Make in India, say like all the investigating agency also maybe after that for the normal procurement. But in case of procurement for the customer is paying for that, you are simply adding margin to that. So you will find generally no investigating agency, including vigilance or audit, will go in that much detail because the customer is paying for that. Then the another thing being,
Okay, most of the time sufficient time will not be available as per the normal procurement process. Here the requirement of the customer could be he wants the delivery immediately, maybe within 15 days, within 7 days or so. So that is the purpose of this policy, that you should have a pool of system integrator, already empaneled system integrator within the circle, so that whenever such requirement is coming, you take quote from them. Quote does not mean physical quote as of now, it has to be through e-tender portal only. So you take quote from them and award the work to them and accordingly get it delivered. So, and enhanced powers are given within that. In case of normal procurement process, you might be knowing a circle heads are given a power of 3 crores for the tender. But here the power to CGM is 10 crore per year for a particular business. So total it could be 50 crore for a business if the business is spanning for 5 years. And if similar 10 business are there, it could be a 500 crore or so. These are the delegated powers by the corporate office. So in a liberalized way, the powers have been given in the SI policy or CPNE guidelines. So these are basically the scope, means why the enter this SI policy. Projects being time bound, procurement process needs to be linked in a different perspective, and the design, yes. Many times the customer may be giving totally different type of requirement. Maybe if you go for an open tender, you may not be in a design the tender as well as. And then what happened? Suppose the delivery has started and subsequently customer says, I want additional this thing as well. So under the SI policy, that also can be given. But if you go by the open tender, again, you will be doing open tender for similar that thing. So SI policy is basically, I will say, is a quite well-defined policy. And this policy earlier, it was made in 2009. Then several times some instructions were issued. In the year 2017 or 18, again, it in a big way, it was modified. But just this week only, we have altogether redefined the policy. And most likely by tomorrow, we'll be putting this policy on the intranet. And it has already been approved by the management committee of BSNL. In the next 2-3 slides, I'll be just sharing what modifications have been done. So this is basically the purpose of this policy. Then first coming to the third point, next point comes how much should be the BSNL margin over the partner component. So yes, powers have been given to the field. CGMs can charge any amount. It could be 5%, it could be 50%. But typical BSNL margin, what we are mentioning, it is 15%. Again, CMD can change, CGM can change it on either way. It could be even up to 0% also is the CGM's power. But of course, each and every cost is to be added first. Say partner component could be X, then over that several toppings may be required, like GST you might be may have to pay, then maybe license fee on some components, then spectrum usage charges wherever applicable. Everything is to be added, and after that the BSNL margin is to be added. Then the final price is to be quoted to the customer. Say if 100 rupees is the part of component to the SI, then after several toppings, it comes to 140 or so. So your final offer to the customer will be 140 plus the bandwidth component. So a final quote will go to the customer, and everything else is within the BSNL and within the partner and the BSNL, like that. And now the questions come, whom we are to charge 15%, whom 5%, whom 50%. It all is up to the diligence applied by the field. We are giving simply the guidelines, and CGMs and BA heads are the better judge. But the basic business principle remains, like if a business is of say 100 crores and your bandwidth component is 90 crores, partner component is 10 crores only, say 10% only. You are at full liberty, whatever margin you take or you do not take, we are earning sufficient from our bandwidth part. And if from the partner component, whatever we earn is okay. But other way around, suppose 100% component is to be delivered by the partner only. Yeah, another thing,
several times queries from the field are coming. If bandwidth component is 0 or maybe 10% only, and partner component is 100% or 90%, should that business be done or not? Definitely, yes, it has to be done, because you will be getting at least a margin of BSNL. If 100 crore business is to be delivered through partner only, in such a business, we will definitely expect that sufficient margin has to be added. Not like everything is going to the partner only. We have to be partner friendly, but does not mean that we are working for partner only. We are basically working for BSNL and have to be partner friendly as well. Partner should not be put to undue harassment, but not like only partner is earning and BSNL earnings are 0 only. So that is the reason. And another thing, it depends whether the business you are getting on nomination basis or maybe with a very thin margin. If you are getting at the business at a very good rates, and maybe you are able to add 50% margin on the partner component as well. But if you are taking the business through tender route or so, margin is very thin. Maybe you will not be in a position to add 15% also in the partner component. So that is all left up to CGM only, whatever you decide. Typical BSNL margin is 15%. CM only, no power to be had, na? Yes, as far as for that, no power to be ahead, I would say. Next comes the award of work. एक बहुत ही जो हार्ड डिबेटेड क्वेश्चन रहा अभी तक कि जो पार्टनर बिजनेस लेके आ रहा है हम लोग उसको नहीं दे पाते हैं, वो बिजनेस किसी और को चला जाता है L1 के बेसिस पे, तो उस पार्टनर का बिजनेस लाने में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता, वो क्यों लाएगा? तो इसलिए बीए और सर्कल से बहुत बार फीडबैक आई है कि हम लोग ऐसी इंस्ट्रक्शंस लेके आए कि जो पार्टनर जिस रेट पे लाया है उसी को वो बिजनेस दे दिया जाए. So you will agree with me that we are a government entity and we are under the scrutiny of all the investigating agencies as well. And the customer on the other side is generally the government customer, not the private, majority of the time. And they are giving the business to BSNL on the face of BSNL, on the reputation of BSNL, I will say. And if we start charging 3 times or 4 times the market rate, everything will be lost. Means you will be under problem. Maybe state government business also will go. So market rate justification is one of the very important criteria. So basically, as per the policy so far, it was like that. If the customer is giving business to you and he is in a position to give you in writing that the solution and rates given by this partner are acceptable to me and I accept the same. So already powers are delegated to the field units. No approval from anybody is required, that you straightaway award the work to that partner. But such cases are very rare, but of course are there. If the partners are so powerful in the state government and they are able to get letter from state government, yes, that solution and rate is acceptable, you straightaway award the work as per the policy. There is no issue. Even if the rates are exorbitantly high also, it is as per policy, I will say. Next come the customer is not giving in writing, but you know the business is being booked through that partner only. So in that case, under this policy, so far the provision was, you will go for the tender, means quote you will be taking from all the SIs, then whatever L1 rate is discovered, that will be offered to the person who brought the business. If he is able to accept that rate, the first of right of refusal goes to him, what work will be awarded to him. But there could be cases, somebody is trying to destroy your business, he is putting exorbitantly low L1 rates, but he is not able to deliver also. So in the policy provision is there, if any such partner is found to be spoiling your business and he is not able to deliver at L1 rate, he will be barred for doing business with BSNL for 1 year. So that provision is there. Then of course there were, in this policy what we have changed now, that in case of SI component up to 5 lakhs,
And we are of the opinion 50% of the total business will be covered within that. In majority of the business handled by BAs, SI component is say a few thousand or 1 lakh or 2 lakh, 3 lakh or so. So in respect of SI component value up to 5 lakhs, work can be straightway awarded to the partner who brought the business, subject to the condition rates are found to be genuine. You are to find it through your committee. If you are satisfied that rates are genuine, without call of tender, work can be given to him if the value of SI component is 5 lakhs. But in such case, because competition is not there, and you are giving the work on nomination basis, so this typical BSNL margin of 15% minimum will have to be ensured. It could be more than that or minimum. So this is the new addition in the policy. Then Margin over the. then another lakh. come, let me just one more point. Then another point, suppose nothing is getting covered out of these policies, and then you say okay, why the partner will bring the business. We have another policy after the, after this we'll be discussing. Another policy is there, channel partner policy. Under the channel partner policy, our partner gets commission just for bringing the business, not for delivery or so. So how you can manage, and any SI can become channel partner just by giving a acceptance letter, no additional bank guarantee, no documents. So you can very well enroll all your system integrators as channel partners. And I will be like discussing how you will be locking the business against channel partner. So my suggestion will be, you lock that business in the initial stage itself against that SI who is bringing the business, against channel partner policy as well. And in the channel partner policy, it is there, whosoever is bringing the business, if he is delivering also the same, so he will not be getting the two benefits, only one benefit. Then channel partner policy commission he will not get. But suppose he is not able to deliver because of L1 lower rates or so, he can very well take the commission under the channel partner policy. And the commission under the channel partner policy is quite handsome. I'll be sharing with you. Very easily your partner can get a commission up to 2 crore or 5 crore per business just for bringing the business to BSNL. So that is, I think, a handsome amount he is getting, and he will get incentive also for bringing the business. Yes. now कौन yes. सा वाला नहीं मिलेगा? आप कह रहे थे एक नहीं मिलेगी, दोनों चीज नहीं मिलेगी। Pardon? आप कह रहे थे चैनल पार्टनर बिजनेस को चैनल पार्टनर तो मिल गया, फिर कौन सा वाला काम, कौन सा वाला मार्जिन नहीं मिलेगा उसको? वो जो करेगा एक चीज मिलेगी, यदि वो डिलीवर करेगा तो नेचुरल उसको डिलीवरी का पैसा मिल रहा, तो चैनल पार्टनर पॉलिसी वाला कमीशन नहीं मिलेगा। वो डिलीवर नहीं कर रहा तो वो मिल ही जाएगा उसको। तो सर वो डिलीवर करेगा तो चैनल पार्टनर नहीं मिलेगा उसको? क्योंकि हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो आदमी बिजनेस डिलीवर कर रहा है तो वो हमारा पार्टनर है, वो बिजनेस लाने में तो हमारी हेल्प करेगा, हम जॉइंटली बिजनेस लाएंगे ना, उसका कंपोनेंट उसको मिलेगा, हमारा हमारे को मिलेगा। जॉइंटली तो नहीं लाया ना, लाया तो वो बिजनेस तो वो लाया था। क्यों लाएगा? वो हम भी लाएंगे ना, वो अकेला कभी नहीं लाता। हम लाएंगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो बिजनेस आपको नॉमिनेशन बेसिस पे मिल रहा है वही पार्टनर ला पा रहा है। यदि टेंडर बेस पे मिलेगा तो वो डायरेक्टली टेंडर में बिड करके ले जाएगा। सर क्या है कि ये तो मैं 2007 से 6-7 से बात कर रहा हूँ, 2007 से मैं जयपुर में था, तभी लोग कहते थे कि सर आप हमको कमीशन दो तो हम आपके लिए प्राइवेट का बिजनेस लाते हैं, कॉलेजेस का सब लाते हैं। कमीशन उसको 2 करोड़ भी दे सकते हो एक बिजनेस में। सर क्या है कि 2008 में तो पॉलिसी नहीं थी, 7-8 में मान लिया। अब जो पॉलिसी 2018 में शायद आई थी ये वाली, पता नहीं तो अब चैनल पार्टनर, बट ये 2003 से जो अभी डिस्कस है ना, तो ये उसमें तो नहीं थी तो हम नहीं कर पाते थे। अब आप कह रहे हैं कि अब पॉलिसी आई है तो बंदा जो बिजनेस ला रहा है तो बिजनेस लाने का कमीशन मिलना ही चाहिए सर उसको। हाँ दो ना। तो आप तो मना कर रहे हैं कि सब सामान दोगे, सामान देगा तो नहीं। देखिए हम लोग प्रॉब्लम क्या है, हम लोगों की मेन प्रॉब्लम है, नहीं करेगा। सुनो, हम लोगों की मेन प्रॉब्लम है कि हम किसी भी पॉलिसी के 90% अच्छे वाली चीज को भूल के 10% को फिल्टर करके लाते हैं कि पहले इसको एड्रेस करो। सर दिक्कत यू ट्राई टू बी इन माय पोजीशन, लेट मी जस्ट कंप्लीट। हम लोग पार्टनर के साथ बिजनेस कभी से लाए हैं, जो आईडीसी पार्टनर है, आईडीसी पार्टनर बिजनेस लाने में खूब हेल्प करता, वही लाता ज्यादा। पीबीएक्स पार्टनर है, वही बिजनेस लाता है।
MNS पार्टनर है वो बहुत बार बिजनेस लाता है, ASP जितने वो बिजनेस लाते हैं, वो डिलीवर भी करते हैं, बिजनेस लाते हैं। चैनल पार्टनर पॉलिसी ओवर एंड अबव बनाई गई है कि जो सिर्फ बिजनेस लाके हमें देंगे, डिलीवर नहीं कर पाते, ये पॉलिसी उन लोगों के लिए। सर चैनल जो पार्टनर हमारे साथ मिलके डिलीवर कर रहे हैं वो तो पहले से कर ही रहे हैं। सर चैनल पार्टनर पॉलिसी का सक्सेस रेट मेरे को तो नहीं पता। MP में आप यही प्रॉब्लम है ना कि हमारी पॉलिसी 4 साल से है, और तो कुछ भी नहीं पता हुआ क्यों नहीं है? सर, कुछ भी। मैंने तो एक MP में एक बंदे को चैनल पार्टनर बनाने के लिए बहुत फोर्स करा SI के लिए। हमारा सर्कल तो बोलता है कि इतने सारे लोग काम ही नहीं करे, तो और क्यों बता रहे हो? तो सर क्या है कि हमारी चैनल पार्टनर, इसी में CPNE गाइडलाइन में नेक्स्ट स्लाइड में वो भी है कि जो नॉन परफॉर्मिंग है आपको वीड आउट भी करनी है। सर वो वीड आउट हमारा आप राजस्थान से हो ना? MP से MP से। सर वो काम ही नहीं कर रहे थे चैनल पार्टनर। आप तो देखिए पूरे इंडिया का नहीं पता मेरे को। अभी मध्य अभी प्रदेश मैं में बताता हूँ मेरे ना, पास कोई चैनल अभी पार्टनर नहीं। अभी मुझे लगा आप राजस्थान से हो। राजस्थान में क्या हुआ था, 50% ऑफ द पार्टनर्स काम नहीं कर रहे थे। हाँ, राजस्थान में थे ना। तो संजय कुमार जी के अंडर रहे हो आप या नहीं? नहीं। अभी संजय कुमार जी जो प्रेजेंट CJ में, इन्होंने बहुत अच्छा जो किया कि हमारी पॉलिसी यही कहती जो नॉन परफॉर्मिंग को वीड आउट करना, जो 2 साल से कुछ नहीं काम कर रहे। बट एट द सेम टाइम पर्पस उनको वीड आउट करना नहीं है, पर्पस ये है कि ऑन बोर्ड रखना मैक्स मेजोरिटी को। तो आपको उनकी प्रॉब्लम सुननी भी है कि वो परफॉर्म क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्यों नहीं बिजनेस करते। तो मैंने यही VC में सबको बताया था कि आपको उनको ऑन बोर्ड करना है। इन स्पाइट ऑफ बेस्ट एफर्ट्स यदि ऑन बोर्ड नहीं हो पाते तो वीड आउट कर दो। तो राजस्थान में भी, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, 17 में से 10 पार्टनर्स थे जो काम नहीं करते थे। सीजन साहब ने अपने लेवल पे सबकी मीटिंग बुला के सबसे पूछा आपको प्रॉब्लम क्या, आप काम क्यों नहीं कर रहे? उनकी जो प्रॉब्लम निकल के आई, 50% की प्रॉब्लम हमारे ऑफिसर्स के अगेंस्ट निकल के आई कि आपका कैम्प मेरे से करवाना तो चाहे, वो तो उसी से करवाना चाहता है। फिर सीएम साहब ने अपने GMEB के साथ मिलकर एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाया कि आपकी कोई भी प्रॉब्लम मेरे ऑफिसर के पास है तो इन GM साहब से कभी भी बात करें। और अब हैप्पीली उनके सारे 17 पार्टनर काम कर पा रहे हैं। मध्य प्रदेश में बताता हूँ सर, मध्य प्रदेश में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। अदर वे भी हो सकता है कि कुछ पार्टनर वीड आउट करने का इसलिए हमने रखा है। गुजरात में था, ऐसा निकल के आया कि 2 पार्टनर कुछ नहीं करना चाहते, सिर्फ BSNL का एम्पैनलमेंट लेके बाहर दिखा के हम BSNL के पार्टनर हैं, कुछ और बिजनेस लेना चाह रहे हैं। और साथ में क्योंकि वो हमारे पार्टनर है तो उनको टेम्परेरी आई कार्ड मिला, बिल्डिंग में कहीं भी आ जाते हैं, किसी भी ऑफिसर के पास बैठ के हमारे रेट्स भी ले जाते हैं और फिर हमारे साथ compete करते हैं। विशाल तो अब चलो आपने नाम लीजिए, मैं नहीं लेना चाह रहा। हमारे है ना इंदौर में सर। तो उनको निकालने के लिए पॉलिसी, उनको नोटिस दो, निकाल के फेंको। ईशान को तो आप वैसे भी तुरंत निकाल देना चाहिए। रीजन भी हमारी पॉलिसी ये भी कहती है नो TSP ISP कैन बी अवर चैनल पार्टनर। है वो ISP तो क्यों नहीं निकाल रहे? कौन निकालेगा जब आप पॉलिसी को फॉलो ही नहीं करोगे? गुजरात से कोई आया निकलवाए उसको, गुजरात से निकलवाओ भी। कोई बात नहीं, मैं अभी यहाँ जवाब नहीं पूछ रहा हूँ। सर मैं एक चीज कह रहा था, पर्पस वो नहीं है 1 to 1 का। एक सेंटेंस केवल, ये इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में एक टेंडर था, तो जो पहला टेंडर था तो L3 स्विच के बारे में बात हुई, तो उन्होंने कहा सर्कल ऑफिस वालों ने 2 लाख का आएगा, हमको 40,000 का मिलना था, तो हमने 40,000 कोट करके मतलब करा, लेकिन फिर मेरा रिक्वेस्ट है सर लास्ट सुनो सुनो, अब एक चीज डिस्कस करेंगे ना, फिर वो 4 बज जाएंगे। MP में एक भी ऐसा ही नहीं है सर। MP में बहुत सारे SIs हैं, एक भी और नहीं है। सुन लो, MP के SI की मेरे पास कंप्लेन की फाइल भरी पड़ी है कि एक कैम का नाम, एक AGM का नाम, अब मैं बोलना नहीं चाह रहा था, मुझे जबरदस्ती बुलवा रहे हो, कि उसके मिला के किसी और को काम नहीं देते हैं। और एक SI ने लिख के दिया, मैंने मेल भी भेज रखे, मेरा रिन्यू नहीं कर रहे हैं एग्रीमेंट। वो सारी कंप्लेन हमने CGM MP को इन्वेस्टिगेशन के लिए भेज दी। आई डू नॉट नो वो गलत है या ठीक है, बट ऐसी लॉट मैनी कंप्लेंट्स मेरे पास MP की आ गई। ऑल्दो MP की परफॉर्मेंस रैंकिंग गाइडलाइंस में सबसे टॉप पे है। दैट SI में भी रॉन्ग, आई डू नॉट नो, सर्कल में भी रॉन्ग। बट ऐसी कंप्लेन जब रिपीटेडली आ रही हैं, और एक SI की नहीं बहुत सारे की आ गई कि वहां पे 17-18 SI हैं, और 2 SI के अलावा बाकी किसी से वो कह रहे काम कराना ही नहीं चाहते। और फैक्ट रिमेन्स के मुझे नहीं पता वो बाकी डिफंक्ट है या क्या है। जो हम बिजनेस डिटेल निकालते हैं तो वो 2 ही लोगों ने काम किया हुआ और किसी ने किया ही नहीं। बट MP सर्कल की रिपोर्ट है, ये बाकी लोग बेकार है, करना ही नहीं चाहते। आई डू नॉट नो हु इज राइट, बट वी हैव टू इंट्रोस्पेक्ट। मैं इसीलिए राजस्थान CGM की तारीफ की, वहां से भी यही फीडबैक आ सकती थी, बट वो कह रहे मैंने एक भी नहीं निकालने की जरूरत पड़ी, वो 17 के 17 वर्किंग में आ गई। पर्पस ये है कि मेजोरिटी शुड बी इन वर्किंग, मैक्सिमम होंगे तभी तो आप कंपटीशन में अच्छे रेट ले पाए। आप एक चीज और समझ लो अच्छे से, हम कितनी भी गाइडलाइंस पॉलिसी कुछ भी दे लें,
और आपने कोई भी वर्क यदि एग्जॉर्बिडेंटली हाई रेट पे अवार्ड कर दिया तो प्रॉब्लम में आप ही आओगे, कभी कॉर्पोरेट ऑफिस नहीं आएगा। अब आप कहोगे कि मेरे पास तो 10 करोड़ के वर्क के लिए एक ही एसआई की बिड आई थी और आई नहीं, तो मुझे उसी को देना पड़ा। यस, एज पर पॉलिसी यू कैन गिव, बट आपके ये एफर्ट्स होने चाहिए कि आप इतने वर्क के लिए बाकी को लाओ ना ऑन बोर्ड। आप क्यों नहीं ऐसे अब कर रहे कि ज्यादा लोग आए? अब मैं झारखंड से, कोई है झारखंड की तारीफ करना चाहूंगा। झारखंड को एक 150 करोड़ का बिजनेस मिला जिसमें पार्टनर कंपोनेंट, काइंडली काइंडली क्रॉस टॉक रहने दे, तो बाद में आपसे 1-to-1 लंच में डिस्कस कर लें, कोई इशू नहीं। तो झारखंड को 150 करोड़ का वर्क मिला जिसमें पार्टनर कंपोनेंट 46 करोड़ था। 46 करोड़ क्योंकि सीजीएम की पावर में नहीं थी, उसने कॉर्पोरेट ऑफिस को अप्रूवल के लिए भेजा। उसमें वही निकल के आया कि सिंगल बिड आई थी, एक ही एसआई था और किसी एसआई ने बिड नहीं किया। तो मैंने सीजीएम झारखंड से उस टाइम पे पूछा कि ये थोड़ा सा ऑड लग रहा है कि 46 करोड़ का वर्क, और हमारी को जो कोल अथॉरिटी का किसका बिजनेस था, शायद बीसीसीएल का था, वो बीएसएनएल के फेस पे दे रहा और बहुत अच्छे रेट पे दे रहा है। जस्ट टू शेयर विद यू, जो 150 करोड़ का बिजनेस मिला था, यदि वो टेंडर में आता तो मैं उस बिजनेस को 50 करोड़ में भी ले लेता। बट नॉमिनेशन बेसिस पे इतना अच्छा रेट मिला है, और पार्टनर को 46 करोड़ देने के बाद भी कार्ड रेट से काफी ज्यादा पैसा हमें बच रहा था, एट हायर देन द कार्ड रेट था। तो हमने फिर भी सीजीएम झारखंड से मैंने पूछा था कि आपके पास इतना टाइम है, यदि हम आपको राइटिंग में दे दे ओपन टेंडर पे जाओ, आप 46 करोड़ का एक आदमी को देना ठीक नहीं, आल्दो पॉलिसी के तहत तो आप दे सकते हो। सीजीएम हैप्पीली एक्सेप्टेड, यस हम तो पॉलिसी के अकॉर्डिंग जा रहे थे, बट कोई इशू नहीं है, ओपन टेंडर कर देंगे। हमने ओपन टेंडर के लिए लेटर इशू कर दिया, उन्होंने कर दिया, और वो कोर्ट 36 करोड़ पे आ गया। अब जो 10 करोड़ बचा बेसिकली, प्रैक्टिकली आप देखो तो वो कस्टमर का नहीं बचा, वो बीएसएनएल को बचा, क्योंकि टोटल प्रोडक्ट हमने दी थी उसको। तो 10 करोड़ बच गया ना, और सीजीएम ने अप्रिशिएट किया और कॉर्पोरेट ऑफिस का थैंक्स किया कि आपने 10 करोड़ हमारे बचा लिए, और कल को कोई विजिलेंस केस भी बनता है कि 46 का सिंगल बिड पे दे दिया। तो आप पॉलिसी के तहत भी कोई भी काम करो, बट कहते हैं ना आईज और ईयर्स ओपन होने चाहिए। आप यदि मार्केट रेट के अकॉर्डिंग ठीक कर पा रहे हैं, नो इशू इज देयर, बट कोई भी बिजनेस मार्केट रेट से 2-3-4-10-20% को भी कोई नहीं पूछता, 3-4 टाइम्स रेट होंगे तो डेफिनेटली इश्यूज विल कम। आप में से कुछ ने, पता नहीं मुझे भुगता नहीं भुगता, पहले एक आईटीआई का स्पेशल पावर था जिसमें जीएम जो बीए एसएसए हेड होते थे 10 लाख तक का वर्क आईटीआई से करा सकते थे स्टेट वे ऑन नॉमिनेशन बेसिस, और टीडीएम्स को 5 लाख की पावर थी, कोई टेंडर करने की जरूरत नहीं, सीधा पीओ दे दो। जनरली उस टाइम क्या चलता था, आईटीआई कुछ नहीं करता, उसका वेंडर ही बीए है डीटीएसटीओ के पास घूमता रहता था, वही सॉल्यूशन बनाता था कि आपके एक्सचेंज में मैं बैटरी हेल्थ मॉनिटर लगा दूंगा, ये कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा, और वो 9,99,900 का कुछ का बिल बना के तैयार रहेगा। एवरीथिंग इज इंटैक्ट। एसडीओ से वही बनवा के लाएगा कि ये रिक्वायरमेंट है, डीटी से रिकमेंड कराएगा, फिर सारा कुछ करा के लाएगा, बीए हेड इज फुल्ली सेफ कि पूरा फाइल एकदम कंप्लीट है, और कॉर्पोरेट ऑफिस का लेटर है कि 10 लाख तक की जीएमटीडी वर्क दे सकता है। अल्टीमेटली वो केस बना, राजस्थान में एक को चार्जशीट मिली, पूरा खुलता चला गया, निकल के ये आया कि वो 3 टाइम्स द मार्केट रेट पे थे। तो सभी टीडीएम और जीएम कुछ 12-14 को उस टाइम चार्जशीट मिली थी, और डाउन बिलो भी मिली होगी, क्योंकि निकल के यही आके पूरा नेक्सस में काम चल रहा था कि वही आदमी घूमता था बिल्डिंग में। आईटीआई को कुछ नहीं पता, आईटीआई अपना 10% मार्जिन ऐड करता था, 10 भी नहीं, शायद 5% करता आईटीआई। तो यहाँ भी एक ये सिमिलर केस है, यदि हम अपनी एसआई पॉलिसी में 15% मार्जिन ऐड करके सोचे कि 5 गुना रेट पे स्टेट गवर्नमेंट को बेच देंगे, पैसा आ रहा है, बट कभी ना कभी इशू आ सकता है कि आपने स्टेट गवर्नमेंट को चूना लगा दिया। तो यहाँ उस टाइम पे मतलब कितने लोगों को पता है कि कुछ 12-14 लोगों को चार्जशीट मिली थी जो एसएस से है। तो आपको एक मेन तो जो बेसिक बिजनेस प्रिंसिपल होता है कि पार्टनर को जब पे कर रहे हो तो आपको थोड़ा सा आईज ओपन रखनी पड़ेगी कि उसको हम कुछ लुटा तो नहीं रहे। तो अभी इसमें जो अवार्ड ऑफ वर्क का भी हमने रखा है, ये बहुत बार आ रहा था, तो इसलिए 5 लाख तक का जस्ट एक एक्सपेरिमेंट किया है, इसके कैसे रिजल्ट आते हैं, और इसको हम रिव्यू करेंगे। यदि इसमें कुछ शिकायतें आई, विजिलेंस केस बनना शुरू हुए, तो मे बी इसको विड्रॉ भी कर दें, और ये 1 साल तक बहुत अच्छा चला तो इस 5 को बढ़ा के 50 लाख भी कर दें। बेसिकली आप ये समझो, कॉर्पोरेट ऑफिस जो भी गाइडलाइन देता बिजनेस बढ़ाने के पर्पज से,
प्लस आप लोग भी ट्रबल में ना आए। कॉर्पोरेट ऑफिस ने गाइडलाइन दे दिया, इसके तहत प्रॉब्लम आएगी तो वेरी रेयर चांस है कि कोई मुझे आके गर्दन नापेगा कि आपने गलत गाइडलाइन दी थी, बट उसको मिसयूज किया गया, उसमें ज्यादा चांसेस रहते हैं। तो बट वेज एंड मीन्स है, आपको पार्टनर फ्रेंडली भी रहना है, तो इसलिए उसको चैनल पार्टनर पॉलिसी के तहत कमीशन दे दो ना, उसको कुछ मिलेगा नहीं तो वो आपके साथ नहीं जुड़ा रहेगा, दैट इज फॉर श्योर। तो शुड आई मूव फर्दर? आई एक क्वेश्चन एक छोटा सा था, वो 15% का थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन चाहता था। बताओ। 15% ऑफ व्हाट? जो टोटल आया आपका 100 रुपए मैंने बताया, उसका कंपोनेंट आ गया, हाँ, प्लस सारे एडिंग करते जाओ, जितना आया उसको आपको 15% ऐड उस पे ऐड कर देना। बट जनरली बहुत कुछ होता नहीं ऐड करने को, आप हाँ, क्या जोड़ते हो? मतलब लाइसेंस फी होगी या नहीं होगी? लाइसेंस फी होगी या होगी, मैंने डाल दिया कि ऑल लेवीज टैक्सेस जो कुछ भी है, हाँ जी, जनरली कुछ भी होता है। और 15% टिपिकल, पहले एक बार मैंने 15% ऑफ SI's कंपोनेंट। देखिए एक चीज और बता दूं, मैंने बीच में 15% निकाल दिया था एक बार, जी, क्योंकि कुछ लोगों का कहना था 15% लिख देते हो तो एक मेंटल प्रेशर बन जाता है इतना रखना। मैंने रिमूव कर दिया कि सीजीएम की पावर है कितना भी ऐड कर ले। तो ये कई सारे सीजीएम से निकल के आप कुछ तो गाइडेंस दे दो। आपने तो बिल्कुल ही ओपन छोड़ दिया था मैं 0 रखूं 100 रखूं, कि कुछ वर्ड तो लिख दो। तो हमने लिख दिया कि टिपिकल मार्जिन 15% सीजीएम की पावर है किसी साइड कर लो। इनफैक्ट जब हम यहाँ रिव्यू करते हैं कोई भी पॉलिसी तो फील्ड से फीडबैक लेते हैं। बहुत ही फनी चीज ये है कि फीडबैक जो फील्ड से आती है उसको मैं लेके चलूं तो मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। 1/3 ऑफ द सर्कल विल से कि हमारे कार्ड रेट बहुत ज्यादा, इनको रिड्यूस करो। 1/3 विल से इनको टच मत करना, हमारा रेवेन्यू कम चला जाएगा, वी आर एबल टू डू वर्क एट दिस रेट। अभी पिछली बार जो हमने एमपीएलएस के कार्ड रेट 3-4 साल पहले रिवाइज किए थे, 3-4 सर्कल्स ने आई गेस हिमाचल, एनी1 एनी2, 2-3 लोगों ने कहा कि हम तो अच्छा बिजनेस कर पा रहे, फिर रेवेन्यू घट जाएगा तो आप हमारे टारगेट घटाओ, तो ये मत करो। तो हमने फिर एक कंडीशन डाल दी कि सीजीएम्स की पावर है कि हायर देन द कार्ड रेट पे भी बिजनेस कर सकता। तो मुझे पता है 2-3 सर्कल ने हमारा नया कार्ड रेट फील्ड में बी हेड को भेजा ही नहीं अभी, कि पुराना ही रेट चल रहा है और उस पर बिजनेस उनको मिल रहा, कोई कंपटीशन ज्यादा नहीं। तो ये बेसिकली बिजनेस, एंटरप्राइज बिजनेस इज रियल बिजनेस। आप इसको जब तक ये सोच के नहीं चलोगे ना ये आपकी दुकान है, आपकी फैक्ट्री है, आपकी स्टेब्लिशमेंट है, तो आप कर नहीं पाओगे। मैं भी किसी बीए हेड था पहले, तो मुझे याद है मेरे बीए हेड के एक डिस्ट्रिक्ट में तो बिजनेस में 80% डिस्काउंट देना पड़ता था, जो जीटी रोड पे लगता था, सभी ऑपरेटर्स की फाइबर गई थी। जो 40 किलोमीटर अंदर था किसी की फाइबर नहीं थी, मैं कार्ड रेट पे बिजनेस करता था। वहां भी इशू आते थे, एक किसी के 2 कॉलेज हैं, एक इस साइड है एक इधर, तो कह रहे आप यहाँ तो 2 लाख रेट कोट करो, यहाँ पे 50,000। तो बट मैं करता था क्योंकि वहां 2 लाख में और कोई देने वाला था ही नहीं। तो आप विद इन बीए भी डिफरेंट रेट्स रख सकते हो, कोई इशू नहीं। एंटरप्राइज बिजनेस को रियल में आपको बिजनेस की सेंस में करना पड़ेगा, और ये देख के कि सामने वाले की पॉकेट में पैसे कितने कितने आप निकाल पाओगे उसमें से। तो एक पक्का गुजराती टाइप का बिजनेस करोगे तो इसमें सक्सेस ज्यादा मिलेगी। एक क्वेश्चन है हाँ। इधर, स्मार्ट सिटी में हम लोग को टेंडर मिला है क्या, कुछ वर्क मिला है क्या? स्मार्ट सिटी में कई सारे टेंडर मिले हैं, उसको एक अलग से डिस्कस करेंगे तो ठीक रहेगा। और सीएफए वर्टिकल में स्मार्ट सिटी की आई गेस प्रेजेंटेशन भी रही होगी। स्मार्ट सिटी वैसे सीएफए का पार्ट आता है, उस पे आपके कुछ डिस्कशन चाहिए तो मेरे से 1-to-1 बाद में, मेरा नंबर भी है, लंच में बात कर लेना। अभी आई गेस थोड़ा टाइम का भी कंस्ट्रेंट रखते हुए उस पर ज्यादा नहीं जाते। अपनी पॉलिसी पे मैं थोड़ा कंसंट्रेट करना चाह रहा था, ये पॉलिसी आपके यूज की ज्यादा। तो अभी इसमें आते हैं, एक और हमने इसमें क्या किया है, फाइनेंशियल, काइंडली प्लीज प्लीज नो क्रॉस टॉक प्लीज प्लीज। तो फाइनेंशियल पावर डेलीगेशन एसआई पॉलिसी में जो रखी है हमने अभी, पर बिजनेस 10 करोड़ पर ईयर टू द सर्कल है। इससे ज्यादा वैल्यू का होगा तो कॉर्पोरेट ऑफिस आएगा, बट जनरली वी प्रेज्यूम के पर ईयर पर बिजनेस 10 करोड़ से ज्यादा हो तो इफ पॉसिबल आपको ओपन टेंडर में चला जाना चाहिए। एक और चीज है, एसआई पॉलिसी डज नॉट मीन कि आपको ओपन टेंडर नहीं करना है। आपको लगता है कि कस्टमर को कोई जल्दी नहीं है डिलीवरी की और टाइम है और मेरे पास इतने एसआई नहीं है, ओपन टेंडर में बेटर रेट आ जाएंगे, तो आप एसआई पॉलिसी को मत इंप्लीमेंट करो, उसमें भी जा सकते हो, आपको जैसे भी बिजनेस सेंस नजर आए। फिर नेक्स्ट आता है कि अभी जो बेसिकली जो एज पर द लेटेस्ट इंस्ट्रक्शन फिजिकल कोर्ट कोई नहीं लेना किसी को भी, एसआई से भी सॉर्ट ऑफ लिमिटेड टेंडर ही हम उसको बोलेंगे, ई टेंडर पोर्टल के थ्रू इनवाइट करना। वो कुछ सर्कल्स ने अभी इंप्लीमेंट कर भी दिया, कुछ ने नहीं किया।
नेक्स्ट आता है कि आपको बिजनेस डिलीवरी की जरूरत है तो किस किस एसआई से आप कोट लेंगे। अभी तक हमारे 4 तरह के एसआई थे। नेशनल एसआई जो कि पैन इंडिया बेस पे, और एक सर्कल ने यदि उसको एनरोल कर दिया, एम्पैनल कर दिया, बाकी सर्कल्स ने सिंपली उससे कंसेंट लेना है और कुछ भी एडिशनल बैंक गारंटी डॉक्यूमेंट नहीं लेना। सिमिलरली सर्कल एसआई एक सर्कल ने कर दिया तो दूसरा सर्कल एनरोल कर सकता है just by taking additional PBG of rupees 1 lakh, no other document. Last revision when we made around 3 years back, so we introduced a new concept of circle SIs, a circle silver SIs. In case of circle silver SIs, CGMs have been given the powers to lower the eligibility criteria for the professionals or for the startups, etc. And whereas in case of national SIs and circle SIs, whatever eligibility criteria is given by corporate office cannot be changed. Now in this policy today onwards, we are changing, like BAs have been given powers to enroll BA SIs as well for their BAs. Because in case of several circles, we were getting the feedback that circles are not very proactive in the enterprise business, whereas some of the BAs are in a position to do very good business better than the circles. So there were demands from bigger BAs, why not to authorize BAs as well to empanel SIs for their BAs. So this is what we have introduced. So BAs can empanel SIs for their BAs. So whenever there is any requirement of a partner in a particular BA, so that way you will be taking quote from all the BA SIs, all the circle SIs, all the circle silver SIs, and the national SIs wherever applicable. In case of national SIs, what we have done in this revision modification now, if the value of the SI component is above 1 crore, then you are to give copy of the tender to all the national SIs as well. And that is to be taken from the EB portal. I think 50 plus national SIs are there. And if the value of the business is less than 1 crore, whichever national SI is enrolled with you, is empaneled with you, only you have to take quote from them. And of course, national SI is free. It is their will whether they quote in your BA or they do not quote. And if they are not giving any quote to your BA for years together, you cannot blacklist them. Blacklisting or removal will be done only by the person who has empaneled them, not by any other circle or. So this is basically like from whom to take. Then next question comes, where the SI policy will be applicable. Basic business principle remains, if any guidelines or any policy or any rate approval has been done by the corporate office or the circle office or the BA, then it is to be delivered through under that policy or under that RFP only. For example, you have a tender of OFC laying. If any OFC is to be laid, it should be through that tender. We have a policy from corporate office pertaining to MNS arrangement, pertaining to ASPs, pertaining to PBX, pertaining to IDC. So all such deliveries are to be done through those policies only. Maybe in a particular circle, several other partners are empaneled other than these. Then deliveries are to be done through those partners only. And if there are no approved rates for a particular item, delivery has to be done through SI. Just a small example, under MNS partner, OPEX-based router modem converter or SLA can be given to the customer. But suppose your customer says, no, I do not accept OPEX based. I want to pay in one go only on CAPEX base. Then there is no provision in MNS arrangement. You can give such solution through CPNE guideline. Other way around, some BAs sometimes say I am to deliver just one circuit and MNS partner is not coming and my SI is ready to that. Then you are to find the ways and means how to tweak the things so that the delivery through SI can be made. How you can tweak, like the CAPEX based solution can be given, that is not provisioned in the MNS arrangement. So that can be done.
but not manipulation in a wrong way. If your MNS partner is able to deliver, let it be through that only. You are to tweak the policy only for the business point of view. If your bigger partner is not delivering and your business is going, you can make some sort of manipulation or tweaking, but not the other way around. So basically, whatever, so these are the policies. Then the last thing, these are meant for a particular business delivery only, not for last mile connectivity or not for delivery in a routine way. For example, if you are to deliver modems to 10 customers, you cannot authorize a SI for delivering modem in all the 10 businesses. SI means for a particular business only. That is a separate story, that an SI can be common for 10 business as well on competition basis. But not like you are approving a rate for a particular SI for delivery of business on BA basis as such. Not like that. Yes. सर इसमें एक क्वेरी था सर. Suppose I'm procuring one router through SI, let's say some Cisco Mac something, और वो रेट फाइनलाइज हो जाता है सर. और it can also happen that in some other circle उसके जो रेट्स हैं वो might differ also सर. तो वो यूनिफॉर्मिटी वहाँ होगी नहीं सर. ऐसा ही कोई मैकेनिज्म नहीं हो सकता सर जिसमें वो शेयर हो जाए. नो, किसने कहा यूनिफॉर्मिटी? और यूनिफॉर्मिटी हमें चाहिए भी नहीं, पॉसिबल नहीं है. आपके अपने रेट यूनिफॉर्म नहीं है. एक ही बीए में आप वही बैंडविड्थ 1 लाख में दे रहे हो, कहीं 2 लाख में दे रहे हो, और ऑडिट वाला आपसे पूछता है. ऑडिट वाले ने मेरी कॉर्पोरेट ऑफिस की फाइलें निकाल दी, आपने किसी को 80% डिस्काउंट दिया, किसी को 20 दिया. मैंने बोला कि अलग अलग बीए में अलग अलग कंपटीशन है. वो इतना इंटेलिजेंट था, वो निकाल के लिया. एक ही बीए में बाउंड्री के साथ लगते 2 कॉलेज हैं. एक कॉलेज को आपने 1 लाख में अप्रूव किया, एक को 2 लाख में. दैट इज ए फैक्ट ऑल्सो. उसका भी मैंने रिप्लाई दिए कि जैसे बिजनेस मिल गया वैसे किया, उसमें क्या गलत है. तो दैट इज एक्सेप्टेबल. आपने कुछ गलत नहीं किया सर पॉलिसी सर. तो फिर आपका आता है कि आपने एक राउटर आप 100 रुपए का दे पा रहे हो, आपके एडजॉइनिंग वाला 50 का दे पा रहा है. मे बी वो बड़ा शहर है, वहां पे बहुत सारे सप्लायर अवेलेबल हैं. मे बी वहां पे रिक्वायरमेंट 100 राउटर्स की, आपके यहाँ एक ही राउटर की है. तो एक राउटर तो आपको महंगा ही मिलेगा. कैसे मिलेगा? आप मार्केट में शुगर राइस खरीदने जाते हो, कहीं आपको 100 रुपए किलो मिलेगा, कहीं 150 रुपए किलो मिलेगा. क्योंकि कहीं आप रिटेलर पर जा रहे हो, कहीं होलसेलर पे जा रहे हो, कहीं किसी ब्रांड पे जा रहे हो. तो ये ऑल सब डिपेंड करेगा. ऐसा कुछ नहीं. और कंपैरिजन के लिए हम जानबूझ के नहीं करना चाह रहे. इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू. देन ऑल बिजनेस विल बी स्टॉप्ड. आप कंपेयर करोगे तो आपसे पहले तो आपको ऑडिट वाला कर लेगा कि लिस्ट अवेलेबल है, व्हाई नॉट टू डिलीवर थ्रू हिम. आपको एक चीज और बता दूं, हमारी जो पॉलिसी है कॉर्पोरेट ऑफिस की, कई बार आपको लगेगा ग्रे एरिया, क्लैरिटी नहीं है, बट डेलिबरेटली वी आर लीविंग दैट सो दैट योर हैंड्स आर ओपन. आपके पूरे हैंड टाइट कर दिए तो बिजनेस कैसे कर पाओगे आप? वाला तो वो जो पॉलिसी है उसकी वॉल्यूशन को तो पॉइंट आउट करेगा, ऐसे कुछ भी पॉइंट आउट कर देगा क्या? किसको? ऑडिट वाला. हाँ. जो हमारी पॉलिसी का वॉल्यूशन होगा. हाँ. उसको पॉइंट आउट करेगा ना. हम तो किसी को भी कोई रेट, हमारी पॉलिसी है सर. देखिए, ये कौन सी पॉलिसी आपकी है कि आप एक साथ वाले को 100 रुपए में चीज दे रहे हो, साथ में 200 सर ईवी में ही पॉलिसी ये है. किसी पॉलिसी में कवर नहीं होते हैं. ईवी और आप एक चीज और समझिए, आप भी फील्ड के पुराने मैच्योर्ड और सीनियर ऑफिसर्स हैं. ऑडिट वाला क्या कैसे निकाल सकता है, उस चीज को प्रेजेंट करने के तरीके होते हैं. ऐसा नहीं है कि ऑडिट वाला तो फिर आप कहेंगे वो ITI के केस में क्यों चार्जशीट मिल गई, इट वाज एज पर पॉलिसी ओनली. ये तो कहीं नहीं लिखा कि आप हायर रेट पर नहीं दे सकते. तो बहुत सारी चीजें होती जो ईच एंड एवरीथिंग कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड इन राइटिंग और इन वर्ड्स. तो एक बेसिक बिजनेस प्रिंसिपल तो फॉलो करना ही पड़ता है. सर जैसे कुछ केसेस ऐसे रहते हैं जिसमें कस्टमर हमसे बोलता है कि आप राउटर दे दो या ये दे दो. अभी उसको मालूम भी नहीं है कि उसका एक्जेक्टली चाहिए क्या. हम उसके पास जाते हैं, कुछ उसका वो करते हैं, फिर उसकी कोई टीम आती है, फिर वो चेंज होता रहता है. तो ऐसे में ये जो एक तो मेरा रिक्वेस्ट सबसे ये है, जो मैंने पॉलिसी की यहाँ पे 2-3 स्लाइड दिखाई है, दैट इज जस्ट हाईलाइट ओनली. और पॉलिसी कोई बहुत बड़ी नहीं है. ये पॉलिसी शायद 10-12 पेज की, और चैनल पार्टनर पॉलिसी 4-5 पेज की. आपको 2-3 घंटे से ज्यादा नहीं लेंगे. तो जितने IFA या BA हैंड्स, मेरी बिल्कुल हम्बल रिक्वेस्ट है, इन पॉलिसी को अच्छे से, ना कि आप खुद पढ़ें, आपके कैम AGM DGM सबको ये जरूर पढ़ाएं. आपकी 90% क्वेरी उसी में रिजॉल्व हो जाएगी. उसके बाद भी जो रिजॉल्व नहीं आए तो कभी भी मेरे से आप बात कर सकते हैं. कोई व्हाट्सएप मेरे से जिसका भी आता है, तो मैं यदि बिजी हो, किसी भी मीटिंग हो, ईच एंड एवरी व्हाट्सएप का रिप्लाई मैं जरूर करता हूँ.
मिस कॉल भी मैं गाड़ी में बैठ के घर जाता हूँ, जनरली सबकी जरूर करता हूँ। और किसी की मिस कॉल रह भी जाए, बीए हेड जब मैसेज में डालेगा आई एम बीए हेड ऑफ सच एंड सच और कॉन्ट्रैक्टर, तो डेफिनेटली मैं रिप्लाई करूंगा। पर आपकी बहुत सारी क्वेरीज आपके सर्कल के थ्रू भी आती रहती है। सर्कल, जीएमईबी और सीजीएम के तो नंबर स्टोर्ड ही है सबके, तो उनका कोई भी मैसेज अनरिप्लाइड नहीं रहता। तो आप काइंडली, मेरी रिक्वेस्ट है कि अभी जस्ट जिस्ट को देख लें और उसके बाद पॉलिसी पढ़ के जो जो क्वेरीज हो आप 8, 10, 12 कितने भी पॉइंट रेज कर देना, आई विल रिप्लाई। और जो रिप्लाई करने, हो सकता है आपके कुछ ऐसे क्वेश्चन निकल के आए मेरी पॉलिसी में एनॉमली निकले, तो हम पॉलिसी को भी मॉडिफाई कर देंगे। और राइटिंग में टाइम टू टाइम हम क्लैरिफिकेशन देते रहते हैं, कई लोग पूछते रहते हैं, हम उसको रिप्लाई कर देते हैं। तो आप राइटिंग में भी कर सकते हो, उससे पहले क्लैरिफिकेशन के लिए व्हाट्सएप भी कर सकते सर एक हो, बट एक बार पढ़ के फिर रेज करें तो बेटर रहेगा। सर एक रेट एनोमली के बारे में एक क्वेश्चन है। मेरा एक कस्टमर है, वो कॉलेज है एक, उनको एक 100 MB की लीज लाइन जो है एन के अंडर जो है एनटीआर के रेट पर 6-6.5 लाख में लगी है। और दूसरी हमने उससे पहले लगा रखी थी, वो हमने कोई 4.5 लाख में दे रखी है। अब एक ही कैंपस में दो सेम तो ये देख लेना, बाद में ये कहना कि लंच भी हम मिस करा दिया, तो मुझे कोई जल्दी नहीं है। दोनों सेम डिनोमिनेशन की लीज लाइन के लिए सर आप ये भी कर सकते हैं कि मैं कुछ 15 मिनट में वाइंड अप कर लूं, फिर लंच में या बाद में, मैं शाम तक रहूंगा यहीं पे, डायरेक्टर साहब के साथ ही वापस जाऊंगा। तो आप शाम तक कभी भी डिस्कस मेरे से कर सकते हैं, क्योंकि अभी मुझे लग रहा 2:15 तो हो गए हैं, तो 3 तो बज ही जाएंगे इसी में, फिर आपका सारा ऑफ ट्रैक हो जाएगा। हाँ, तो मैं एक बार क्विकली करता हूँ, और इसी से रिलेटेड हो तो पॉइंट कर लें, बाकी आपके इंडिविजुअल क्वेरीज उसको अलग से कर लेंगे डिस्कस सारे। तो ये 100 MBPS जो कहना चाह रहे हैं, क्वाइट श्योर इससे रिलेटेड नहीं है वो पॉलिसी, तो पॉलिसी ना छूट जाए जब तक, इसको थोड़ा सा चलते हैं। राइट सर, वो रेट एनोमली के बारे में। हाँ ठीक है, करते हैं उसको, आपका एड्रेस जरूर करके जाऊंगा मैं शाम तक आपको पॉइंट। तो इसमें फिर ये बेसिकली देयर इज ए प्रोविजन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्टैंडिंग कमेटी फॉर एम्पैनलमेंट and for finding the reasonability of rate. So earlier there used to be committee only at the level of circle. Now we have provision that BA level standing committees have to be there, and they will be of course deliberating on like which SI is to be empaneled and which is not to be empaneled. Does not mean that whosoever gives you application is to be empaneled. You have to see the documents and the eligibility as well. So this is that one. This is the basic empanelment criteria in respect of national circle, circle silver and BA. You can see here like turnover experience are the only two criteria, then performance guarantee to be given by them. In case of national and circle, you don't have any power to reduce the eligibility. Whereas in case of BA and circle silver, field units can change this condition. Like instead of turnover of 10 lakhs, you can make it 5 lakhs, 2 lakhs as per the requirement. In case of professional startups, etc., if particularly you are not able to get sufficient number of system integrator. Again, the question remains, if you are already having say 20-25 system integrators, why to relax the conditions? And if you don't have any, you can. So you are to see, just like in tenders, you are sometimes relaxing the eligibility criteria. Then last column and last but one column are giving like what is the booking of business, where the business can be booked by a particular SI and where the delivery. So I think you can subsequently go through. The only basic principle remains in case of BA SIs, they can book the business pertaining to that BA only. And delivery could be in the adjoining BAs as well, because several times what happens ke you are getting a business from a customer, say for delivery of 10 circuits, 8 may be within your BA, 2 may be in the adjoining. So that BA, that SI can do that, take that business. And similarly, in case of circle SIs, circle SI delivery could be within the circle or any of the 3 other circles, or maybe in the adjoining circle. Because adjoining business normally remains, if you are getting the business from the bordering BA or so maybe several circuits will be required to be delivered in the another circle or BA as well. So you can subsequently go through. This is about the CPND guidelines. Next is the channel partner policy. Channel partner policy, of course, several of the things have already been discussed. Why channel partner policy is required at all? The main reason is for booking of enterprise business, maybe sufficient staff is not there with you. Bigger ticket size business, you are able to handle through your CAMs only. But in case of smaller business, particularly MSME segment
Or like the example I was telling you, some 1,000 industrial units are there in a particular industrial area. Our people cannot visit each and every unit. So channel partners are to be engaged, must be engaged for the purpose, rather I will say, and they will be bringing addition. Of course, they are for the additional business, not for the existing business. Whatever business is there with you, you are to handle. For additional business, including the government, central government, private, every business, eligibility is there. So you can engage them accordingly. And who can be a channel partner? Any of the BSNL partner of any type, including the retailer. Retailer who is able to sell only 5 SIMs in a month can very well be made a channel partner. And he can book any value of business, say 1,000 crore business he can book. Delivery of the business and booking of the business are totally different things. While coming to the delivery of the business, you are to see his financial standing. Suppose his turnover is say 5 lakhs only, you can't award him a work of 100 crore delivery, or so his financial standing will not be there. But in case of booking of business, maybe a small person who is having links somewhere, and he can very well bring you the business for say 1,000 crore or so. So as per the policy, any of the BSNL partners, including the tip one, including the retailer, including the BASIs. Now the power comes to you now. You can enroll anybody, not anybody means within the eligibility criteria as your BASIs. And then you can take a consent letter from him to make him channel partner. And once he channel partner of BSNL, he can book value from any vertical, from any services, any SSA on Pan India base, any circle, like a BASI empanel a channel partner by Nagpur can very well book the business in Kerala also. But only guiding principle remains that business will remain with Kerala only, not the Kerala business will be done by Nagpur, then so many issues will come. That guiding principle remains, but it is just to facilitate and to liberalize to the extent possible. And we do not want a separate EOI should be floated for this purpose. Otherwise, you will be lost in floating and empaneling through that EOI. So now the thing is, he should be any partner of BSNL, could be franchisee, could be retailer, could be tip, could be SI. And booking of business could be any vertical, any value, any business he can bring. Then comes the lead locking. This is very important, and this provision is there for the last 3 years. Every circle has to have a channel manager, not on exclusive basis. A one person has to be designated as the channel manager, and accordingly his credentials will be created in the EB portal. Then whenever the business is coming, at the stage of lead generation itself, that lead is to be locked against the channel partner. Not like once the business is booked, you say, no, it was brought by this partner. So many hanky-panky things could be there. The lead is to be locked against the channel partner, initial stage itself, and then the second channel partner cannot be given that lead. Of course, there is a provision in the policy, if that lead is locked against the channel partner and he is not doing anything, then you can remove the lead from him after 3 months and assign to any other channel partner as well. And once the lead is locked against them, and if the business is coming, then of course he will be getting the commission, which will be shared in the next slide. So lead locking is very important. Next coming. Yes, some of the business have been excluded from the purview of channel partner policy just to avoid the misuse of the same. For example, which are the business excluded? All the TSP, ISP business. If you are selling bandwidth to Airtel, or if you are sending bandwidth to ISP, generally such bandwidth rates are very thin margin rates. So that business is to be done directly by BSNL, not through channel partners. Business already with BSNL shall not be under this policy. Like you cannot say that this renewal is done by through this partner. Whatever business is with BSNL is to be handled by our people only. Then of course, CGMs or BA heads can exclude any other business. Yes, this business we will be doing ourselves. That is within your power.
Then the business brought through MNS partner, PBX, IDC, etc., as I told, and they are delivering also. So it will not be under this policy. Then landline FTTS business, all can be under this policy if minimum 10 connections are booked in one go. In case of CUG, it should be minimum 50 business and small other things which can go through the policy. Then comes the commission structure. All the central government business 2% he will get, state government and PSU 4%, and all others including private 8%. You need not write this, PPT will be forwarded to you. And in case of CM and CFA product equal to 1 month of the FMC, means broadly it comes to 8%. And in case of renewal, it will be less. In case of retention, it will be less. That is all shown here. The only rider we have put here, in case of state government business, means in case of circle level business, not state government, maximum commission to be paid to the channel partner for a single business is capped at 2 crores. In case of Pan India, it is capped at 5 crores. So for a particular single business, more than 5 crore commission he cannot get, which is much more than sufficient. And some other conditions which you can go through. Yes, then there is a provision of target-based incentive and commission structure. It is up to you whether you assign the target to the channel partner or not. Once you are assigning a particular channel partner for booking of the business, if you assign target also, then there is this percentage-wise commission. If his achievement is less than 50%, he will be getting only 70% of the eligible commission. And if he is able to book more than 150%, he will be getting 25% over and above it has been shown in the previous slide. So this is, of course, not compulsory. This is as per your requirement if you want. And in the policy, of course, we have written generally 20% of the new business should be targeted through channel partners. So this is all about channel partner policy. Then a few of the things which we expect from BA heads. One thing is the mandatory utilization letter is there from Government of India. All the central government departments should mandatorily give the business, enterprise business to BSNL. In case of state governments, it is advisory in nature. So with that letter, you can convince your state governments, and of course, if a pan-India business is there, that as well, that yes, these are the Government of India guidelines. So you try to kindly give business on nomination basis. But again, if our relations and PR-ship with the government is not good, government may not give well. So you cannot force. These are again guidelines only. State government may say your services are poor. We want to go through tender route only. This is just you can try to convince them. Then the second thing, many times now the business is coming through tender route, where lot many documents we are to submit, particularly the experience certificate, POs, etc. So time and again we are asking BAs in the circles, uploading of POs and experience certificate and appreciation letters on the EB portal, so that whenever any tender such requirement is there, any BA can take out such letter. Then this thing I already covered, card rates are confidential in nature, and these under no circumstances are to be disclosed to anybody. Several times we have observed that a particular BA is making an offer to the customer, like our card rate is X, offer discount is 20%, so your net rate is 0.8x. This is highly against the guideline. You are to simply offer the best possible rate. Yes, this is the offered rate by BSNL to you. Card rates are not to be told to anybody, including to any other government or state government or central department as well. Then, of course, you can do the business at higher than the card rate. Posting of staff, we have already discussed. Focused approach in grabbing the business through tender participation. Yes, our success through tender participation is not much as of now. But the good thing is during the last 2 years, we are on the increasing path. Now more and more circles are bidding in the tenders and are able to win as just one and are able to win as well. Then many times you are asking like guidance from the corporate office. So here my request remains. Of course, such requests are coming through circle team only, not directly by BAs.
that give us some time, if not 1 week, 3-4 days at least. Not like today at 3 p.m. last time is there, closing time is there, and morning 11 o'clock you are sending me the WhatsApp, okay, we are to bid at 3 p.m. So what should I do? And I may be in such type of presentation also, maybe I have not seen the message as well. So my request remains 1 week time, if possible, should be given to corporate office for deliberate on the same. Then of course, the things come, visit to the customer is very important. So these are the instructions of the corporate office, that the top 10 customers on monthly basis are to be visited by BA heads, by the circle heads as well. So you must visit at least 10 enterprise customers on monthly basis. So many things will come. Just believe me, once you start visiting the customers and once you start having the meetings with your camps, and you give the environment to say whatever they want to say, so many feedback and things will come for the improvement in the system. Then of course comes development of new streams, as we have discussed, then studying the business model of the competitors, what they are doing. 1 hour weekly review we have already discussed. Then lastly, few more things which you can just go through. Business through channel partner policy we have already discussed. Then becoming partner friendly is very important. Sometimes we consider partner is something outside, let him wait at the PR. So just consider that he is your partner. Partner means if he is coming to you, you must happily welcome him, offer him a cup of tea, water, whatever required. So we have to be and resolve their issues wherever required. And the first and foremost thing partner requires from us is the timely payment to them. So whatever is due to him is to be paid timely. Now there is no backlog as far as corporate office fund allotment is concerned. But still we are getting complaints from the partners for months together. Circles or the BA teams are not processing their invoices because of one pretext or the other. And sometimes other type of complaints also keep on coming. And once the delay is seen in the system, generally the senior officers will consider that some bad intention is there at the part of one or the other officer. Bad intention does not mean at the level of BA head or the circle head, but if suppose some officer down below is not having good intention and we are not able to control the system, we are equally responsible. Head is to control the system, not his personal integrity has to be beyond doubt. His BA's integrity has to be beyond doubt. So we must be partner friendly for that matter. Then visit, cluster visit, sectoral target, moving. These are all general points you can just go through. That's all from my side. Thank you. Yes, something if you want. टेंडर जब हम करते हैं उसके बाद के जो रिजल्ट्स में क्विक रिस्पांस जो होता है वो उसको इंश्योर करना पड़ेगा. मैं जस्ट एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि कुछ 40,000 कनेक्शंस का सिम कनेक्शंस का था. हमने पार्टिसिपेट किया टेंडर में, हम L1 हुए तो उन्होंने चारों बिडर्स को बुला लिया, मतलब चारों ऑपरेटर्स थे उसमें. I'm basically able to understand you want to say there is no denial unless the services delivery is prompt, and ultimately assurance also has to be equally good. Simply booking of the business will not वैसा last नहीं for था. long. तो हम लोग L1 थे, सामने चीफ मिनिस्टर थे, वो ये बोल रहे थे कि रेट कम करो. तो उन्होंने चारों को बुलाया, अलग अलग बुलाया. पहले तो हम थे कि हम L1 है, हमको मिल ही जाएगा. तो जब हमको लगने लगा कि कुछ करना पड़ेगा तो हमने कॉर्पोरेट से बात करी, सर्कल से बात करी, सबसे बात करी. वो बोले कि नहीं नहीं आप 105 से नीचे नहीं कर सकते हो. और अल्टीमेटली क्या हुआ कि एयरटेल जाके 97 पे बोल आया, जबकि हमने ये भी कोशिश करी कि चारों मिल जाते 25% ले लेते. अल्टीमेटली फिर जब पता चला एयरटेल ब्रेक हो गया है, उसने 97 कोट कर दिया, तो जियो वाले को उसके ऊपर नाराजगी, उसने 95 कोट कर दिया. और हुआ ये कि हम लोग को तब तक कॉर्पोरेट ऑफिस से कुछ भी सपोर्ट नहीं मिला कि हम मैच कर सकते हैं. अब चूंकि हम मैच नहीं कर सकते हैं तो हमको जाके 2 दिन के बाद मैचिंग का कुछ मिला, हमने लेटर वगैरह भी मिला. एयरटेल वाज L4, he got 60%. Jio was L3, he got 40%. Voda and we since could not match at on that moment we lost. देखो अब इसमें मेरे दो कहने हैं. और वो 6 Basically तो each and every business unless it is financially viable, not necessarily कि आप उस business को लेंगे.
आपको ये देखना कि वो डूएबल बिजनेस है या नहीं। फॉर दैट मैटर जैसे हम ईसीटी केसेस की बातें करें तो जो हमने ईबी के डेलीगेशन फील्ड में दे रखा है, generally we find कि 90% of the business on pan India basis is done through CGM's powers. 10% cases come to corporate office, and out of that our approval success rate is 98%. 2% business we do not approve as well. There could be several reasons. For example, 105 rupees you are saying, okay, maybe at 97 it becomes a sort of loss making and you find that it is not a doable business. You can very well leave that. Then coming to the tender, okay, you are L1, then why should you reduce? Each and every tender is an exercise in itself. I have gone through several tenders, several reverse auctions. It all depends on the conditions given in the tender. If the condition in the tender is that whole of the business is to be given to L1 at L1 rate, nobody can award the work to L2 at L1 rate as well. It cannot be done. But sometime condition in the tender will be L1, L2, L3, L4, 4 bidders will be empaneled. Then final quote will be taken from them. Then in a particular ratio work will be awarded like that. In that case, you might be required to reduce even after becoming L1. Similarly, in case of reverse auction, in reverse auction, what happens? Sometimes auction goes for days together and weeks together also. And once a rate is reduced by a particular person, then the window of 30 minutes or 15 minutes will again be open. In one of the cases, I found that circle thought that 15 minutes time is fixed. So once the rate is reduced by some TSP, another 15 minutes will be there. He was taking its own time, but the window got closed. After that rate, so many, it was Maharashtra case only. And I guess SBI case or whichever. At the time of Mr. Sunil Garg, long back, I think he was one of the very good EB officers, some 5-6 years back, but still such mistakes happen. After that raised the issue with the customer, that window got closed before 15 minutes. So it is wrong. Then they showed the instructions you just go through in the reverse auction, that after a particular time, this window opening time will reduce. Initially 30 minutes, then next day 15 minutes, next day 5 minutes. Because tender cannot go for years together, it is to be closed. So it was as per tender only, so nothing can be done. So we are to read each and every clause of the tender or the reverse auction very carefully. Generally, nobody will be in a position to award the work. It is highly against CVC guidelines that once a particular bidder is found to be L1 and you award the work to other than L1, even at L1 rates are less than the L1 rate, this is against CVC guideline. If any such thing happens, you can very well represent them. But it all depends. And it depends who the customer is. If the customer is a private one, no CVC guidelines are applicable to the private one. If it's a government one, yes, he cannot do that. And moreover, over and above the thing remain, if the customer does not want to give to you because of your poor services, you cannot force him to give the work to him. But yes, after L1 also you can reduce. Now comes the question that corporate office did not give the approval and by that time it was lost. As far as EB business is concerned, for last 3-4 years, we have given full powers to CGM in respect of tender. No approval is to be taken by given by corporate office. As far as EB business is concerned, in CM vertical it is not so. मतलब मैं उसमें पूरी तरह इन्वॉल्व बट था। मैं उसमें आता हूं अभी भी, यदि कोई अनडूएबल बिजनेस है तो छोड़ा जा सकता है। फिर एक और चीज है, कोई भी आदमी जब लाइफ में 10 काम करता है तो 2 गलत भी हो जाते हैं। आपका एक ऐसा बिजनेस लॉस हो गया, अगली बार से आपको सीख लेना कि कैसे चला। एक मुझे याद है, रामचंद्र साहब हुआ करते पीजीएम ईबी, अब तो मेंबर बन के रिटायर भी हो गए। एक बिजनेस था बहुत अच्छा, उन्होंने मेरे से डिस्कस किया कॉर्पोरेट ऑफिस में। मैंने उसको बता दिया कि जियो सामने था, जियो न्यूज टाइम पे आएगा, जियो नहीं आया था, एयरटेल था। तो हमने बता दिया उनको कि 135 पे आप बिड कर सकते हैं। और संजय कुमार जी जो सीजीएम राजस्थान है, वो पीजीएम सेल्स एंड मार्केटिंग थे, उन्होंने भी, हम दोनों ने फाइनली बता दिया 135 पे जा सकते। उन्होंने फिर भी अपनी पावर यूज करते हुए 135 हमारे कहने के बाद भी 128 कोट कर दिया।
रीजन बीइंग कि उनकी कैलकुलेशन ये थी कि कॉर्पोरेट ऑफिस को मना लेंगे 128 पे, और कॉर्पोरेट ऑफिस में, सर्कल ऑफिस में बहुत लोगों के बीच में 135 डिस्कस हो गया है, तो हमारे रेट कहीं ना कहीं लीक हो गए होंगे। तो उन्होंने किसी को नहीं बताया, फाइनली अपने कैम को बोला तो 128 डाल दे। और उसके बाद में उन्होंने बताया कॉर्पोरेट ऑफिस अप्रिशिएटेड लाइक एनीथिंग, कि आपने अपनी पावर यूज किया तो ये देखने के लिए कि कहीं लीक तो नहीं हो रही। क्योंकि बहुत बार ये भी रहता है कि कुछ सर्कल तो क्या बेवकूफी करते हैं कि टेंडर की फाइल मूव कर देते हैं कि इतना रेट कोट करना है, और आईएफए कह रहा है कि वो तो आपको अप्रूवल लेनी पड़ेगी। आईएफए भी कोई बाहर का नहीं, आईएफए भी आपके सिस्टम का है, अकाउंट्स ऑफिस वाला कोई भी आपके सिस्टम का। आपको सिर्फ एक सिस्टम में इन्वॉल्व करना, उसको भी कन्विंस करना है। यस, आई रिमेम्बर जब मैं एसएसए हेड था, मेरा एक चीफ अकाउंट्स ऑफिसर था, वो हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करता था कि इतना डिस्काउंट कैसे दे दे, ये है वो है। तो फाइल कोई भी आती थी वही रोकता था। मैंने फाइनली एक कमेटी बना दी कि मेरी पावर को ये कमेटी यूज करेगी, और ये 3 लोग जाएंगे वहीं पे फाइनल रेट अप्रूव कर देंगे। उसके बाद मेरे पास फाइल सिर्फ एक रबर स्टैंप के लिए आनी है। आईएफ उसको भी, चीफ अकाउंट्स ऑफिसर को भी उसी में रखा कि आप जाओगे कस्टमर से बात करके वहीं पे कर दोगे। यू विल बिलीव 3 दिन के बाद उस चीफ अकाउंट्स ऑफिसर ने आके कहा कि सर बिजनेस लाना तो बड़ा मुश्किल है, इन लोगों को हेड्स ऑफ, ये कैसे लाते, आगे से मेरे तो जहाँ साइन कराने करा लो, कि कस्टमर कैसे 2 घंटे धूप में बिठाए रखता, बड़ी मुश्किल है। तो आप सिस्टम में इन्वॉल्व करेंगे तो एवरीबॉडी विल अप्रिशिएट। होता है कि आके सब लोगों को उतना नॉलेज नहीं होता, तो कभी भी एक टेंडर की फाइल मूव नहीं करनी होती, वो सब एक लिमिटेड ग्रुप में 2-3 लोगों में डिस्कस होना चाहिए। टेंडर में ये भी कभी नहीं होता कि बीए हेड कहेगा मेरी हिरारकी में एसडीओ डीई डीजीएम ऐसे आएगा। आपको यदि एक कैंप पे भरोसा और उसी कैंप ने पंच करना है रेट, तो आप कैंप को बुलाओ, अपने पास बिठाओ, करा दो, डीई डीजीएम का कोई रोल नहीं है। आई रिमेम्बर मैं एरिया मैनेजर चाणक्यपुरी था इधर दिल्ली में पहले, तो एम्बेसीज के बहुत बार ऐसे होते थे कि नंबर को इंटरसेप्शन पे लगाने, आईबी से आया कहीं से भी आया, तो वो मेरे ईडी को, जीएम को, सीजीएम को, किसी को नहीं आता था। सीधा एमईए से लेटर कॉन्फिडेंशियल एरिया मैनेजर के पास आता था, और मेरा एक टेक्नीशियन था, उसको मैं जब भी वायर करा देता था, मेरे डी को पता ना किसी को पता, तो वो तो सिस्टम में करना पड़ता आपको कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करने के लिए। तो टेंडर में रेट को आप कॉन्फिडेंशियल रखना भी इक्वल इंपॉर्टेंट है। एनी अदर पॉइंट, एनी क्वेश्चन particularly pertaining to these two policies? क्योंकि आई रियली डू नॉट नो, हमारी चैनल पार्टनर पॉलिसी इतनी अच्छी है जिसमें अभी और मॉडिफिकेशन किए, बट इसके थ्रू बिजनेस ऑलमोस्ट जीरो, क्लोज टू जीरो। तो आप लोगों को एक वो मेंटेलिटी लानी चाहिए कि हमें 4% देना भी पड़ा तो 96% तो अपने पास ही रहना है, और यदि वो 2 करोड़ 5 करोड़ ले जाएगा तो आपको तो 100 करोड़ देके जा रहा है। बट ऑफ कोर्स ये कुछ जो हमने चैनल लीड लॉकिंग ये सब इसलिए रखते हैं कि सारी मछली एक जैसी नहीं होती। आपके सिस्टम में कोई ये भी हो सकता है लाने के बाद उसके नाम पे डाल दिया, हमारे लोग उसका पार्ट बन जाए, या हमारे लोग अपने ही चैनल पार्टनर बन जाए, वो सारी तो कहीं ना कहीं रखना जरूरी है। एनी अदर क्वेश्चन, फीडबैक? नहीं तो लंच में आते जाते फिर डिस्कस करेंगे। So if you don't have any other question, let's have a very huge round of applause for Shri N. Goyal sir for such an Thank informative you. session. Thank you. I won't be huddling between you and the lunch, and then definitely we have just distributed one of the case study to study on a group basis, and each and every group is expected to provide a write-up on it by tomorrow. Yep, the group would be remain same, sir. So on behalf of this particular house, now I would like to call upon Shri Balbir Singh, BA head from Odisha Behrampur, to felicitate Shri N. Goyal sir. नहीं नहीं सर, एक और है। Yep, thank you, sir. Now it's 2:45 by my watch, and we are expected to be assembled by 3:35. Yep, thank you.
What corporate office is doing nowadays, and what is the thought of corporate office for planning of core network or for expansion of core network? So there may be some persons which are new. What is core network? कोर से जो दिमाग में आता है वो लगता है मोबाइल का कोर, लेकिन ये जो कोर नेटवर्क जिसकी मैं बात कर रहा हूँ ये बेसिकली पूरे टेलीकॉम नेटवर्क का जो कोर है, ट्रांसमिशन नेटवर्क जो है, एमपीएलएस प्लस ट्रांसमिशन मिला के जो कोर नेटवर्क है, जो कि एक नेटवर्क एलिमेंट से दूसरे नेटवर्क एलिमेंट के बीच ट्रैफिक को ले जाता है, उस कोर नेटवर्क की बात कर रहा हूँ मैं। और उस कोर नेटवर्क प्लानिंग को हम लोग देखते हैं। ये कोर नेटवर्क जो है सारा ऑल वर्टिकल्स का ट्रैफिक, मोबाइल, एफटीटीएच, सीएफए एंड एंटरप्राइज बिजनेस सबका ट्रैफिक कैरी करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है और इंटरनेशनल गेटवे को ले जाता है, बीएसएनएल से बाहर ले जाता है, बीएसएनएल के अंदर लाता है। अभी जो कोर नेटवर्क लगा हुआ है वो बेसिकली 2.5 लाख किलोमीटर इज एनएलडी, अराउंड 6 लाख किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर इज ऑफ एक्सेस नेटवर्क. There are 115 super core routers. There are 480 number of edge routers. There is a optical transport network of 201 nodes, but there are access nodes of 46,000. Other than this, there is a network of SDH equipment which is being phased out progressively. So this is a pictorial representation of core network. The FTTH traffic is carried directly through BNG, through CPN, through SDH. Mobile network is also carried through CPN. Fixed line traffic, everything is carried forward and taken by core network. So one of the major component of core network is edge routers. So edge router project, this was awarded to TCIL in March 2002. Now supply of and the OEM is Cisco, and supply of routers is completed. Now installation material is being supplied and installation is also in full swing. Around 8 super edge routers have been integrated till yesterday. So in next 2 months, you will see rollout of super edge router, and all your problem of connectivity of PNGs and EV customers will be sorted out in next 2 months. OEM is Cisco and vendor is TCIL, and actual implementation being done by Presto in the field. अभी पहले ही आप हो रहे हैं, फिर इनकी 80 होगी, 80 होते ही सर्विस माइग्रेट होगी. बेसिकली 90% और 80% तो वह जो कि पुराने जो सिस्को के पुराने राउटर थे उनको माइग्रेट कर रहे हैं. तो उनकी जो सर्विसेज हैं उनसे ज्यादा कैपेसिटी के हैं और उनके ट्रांसफर करेंगे. और जो मोबाइल नेटवर्क के लिए कुछ अलग से लिए हमने, वो बिल्कुल ग्रीन फील्ड है. उसके अलावा 10-15 राउटर अलग से ग्रीन फील्ड भी है, लेकिन ज्यादातर जो है वो पुराने जो एंड ऑफ सपोर्ट सिस्को राउटर थे उसको रिप्लेस करेंगे. नहीं, आज लगेगा, फिर उसका 80 होगा. हाँ, 80 के बाद फिर सर्विस ट्रांसफर होगी. यदि पहले वाला एग्जिस्टिंग को हम हटा रहे हैं तो उसकी सर्विस इस पर ट्रांसफर होंगी जो ऑलरेडी क्रिएटेड. अब फिर नए पोर्ट्स काम में लेंगे, लेकिन अब ज्यादा टाइम नहीं लगेगा. जो जितनी हर्डल थी वो पूरी हो गई है. इक्विपमेंट पहुंच गया है. इक्विपमेंट का इंस्टॉलेशन मटेरियल का इशू था, वो रिजोल्व हो गया और उसकी सप्लाई भी पहुंचने लगी. टीम ऑलरेडी फील्ड में है. 80 शेड्यूल हो गया है. वीटी जो है इसकी 90% कंप्लीट हो गई है. हाँ, तो आपको ये देखना है कि उसका जो मीडिया लोकेट हो जाए, उससे कोर नेटवर्क से जो 2 सुपर कोर राउटर पे जाना है वो मीडिया लोकेट हो जाए, एयर कंडीशनिंग हो, पावर प्लांट और पावर सप्लाई अवेलेबल हो. और फिर 80 हो तो आपको एक आदमी डेपोट करना है जो 80 में उनका सपोर्ट करे, 80 वाले से कोऑर्डिनेट करके इमीडिएटली 80 कराए. क्योंकि 80 कराने से पहले हम सर्विस ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे. कल चिट्ठी निकल जाएगी, एमपीएलएस सर्किल आपसे कोऑर्डिनेट करेगा. रविशंकर और रवि कुमार दोनों एक दूसरे को पूरक हैं, दोनों ऑटिस्टिक भाई है. नाम भी कॉमन है. 80 तो टीएनडी वाला करेगा, कोऑर्डिनेट ये करेंगे. हमने उसमें ये सिस्टम बनाया फास्ट होने के लिए कि सेंट्रली यही हैंडओवर कर देंगे एटम पे जो 80 का जो सॉफ्टवेयर है उस पर सेंट्रली हैंडओवर कर देंगे, और आपके जो कंसर्न साइट इंचार्ज उसका नाम उसमें डाल देंगे और वो 80 को कोऑर्डिनेट करेगा. ये हैंड होल्डिंग करेंगे क्योंकि सुपरएज थोड़ा टेक्निकल इक्विपमेंट है, हाई टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट है. तो 80 ऑफिसर को हैंड होल्डिंग एमपीएलएस नॉक से कर.
शेड्यूल सर कल ही अप्रूव हो गया है, मैंने इतना दिमाग नहीं लगाया, लेकिन शेड्यूल सब अप्रूव्ड है सब। नहीं नहीं, वैलिडेशन सर ऑलरेडी इनका कॉन्फिडेंस लेवल काफी आ गया है, क्योंकि 90% वैलिडेशन कंप्लीट हो गया। ये ओटीएन का एक एलियन वेव का प्रोजेक्ट चल रहा है, क्योंकि हमारा ओटीएन का नया टेंडर थोड़ा डिले हो गया था, तो ये एक एलियन वेव का हमने कॉन्ट्रैक्ट तेजस को दिया हुआ है। एलियन वेव बेसिकली जो एक्सचेंजिंग फाइबर होम का जो ओटीएन नेटवर्क लगा हुआ है उसकी कैपेसिटी को ऑगमेंट करने का काम करता है, उसमें फॉरेन लैम्डा डाल। तो ये 300 बॉक्सेस लग चुके हैं, 300 का भी एड ऑन ऑर्डर दिया है, और एड ऑन ऑर्डर का पीओ आज जा रहा है। तेजस का इक्विपमेंट है, सीएनटीएक्स जो रीजन है वो इसको मेंटेन कर। सर जो ओटीएन इक्विपमेंट है वो बेसिकली कंपेटेबल नहीं होता इंटर वेंडर, तो दूसरा नेटवर्क में घुस नहीं सकता। उसकी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए उसको उसमें जो लेमडा बिना ओटीएन में जाए कुछ बाहर से उसकी कैपेसिटी डबल कर देता है। लेकिन ये है कि इसका काफी लोडिंग हो गई है, जो अभी लगे ना 300 बॉक्सेस, उसकी 70% ज्यादा लोडिंग हो गई है, उससे रिलीफ काफी मिला है, मिल गया ऑलरेडी भी मिला है। वरना पिछले एक साल में काफी ज्यादा जो जो रिवाइवल चालू हुआ तो उस समय इसने काम चलाया, वरना ओटीएन का टेंडर हमारा 2 बार कैंसिल हो गया, इसी से काम चल रहा है। तो ओटीएन का जो नया टेंडर अभी चल रहा है, जो कि एक तो कैंसिल हो चुका है, दूसरा अभी चल रहा है, बिल्कुल फाइनल स्टेज पर है, फाइनेंशियल बिड खुल गई है, नेगोशिएशन हो रहा है, इसका अवार्ड होने वाला है, मे बी इस महीने में ये कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड हो जाए। ये ओटीएन अभी जो ओटीएन अभी लगा हुआ है आपके फाइबर होम का लगा हुआ है, तो जो जो जिन लोगों ने सीएनटेक्स में काम किया उनको इसका आइडिया होगा। हाँ अब तो बेसिकली ओटीएन का रोल जो है कि वो डीडब्ल्यूडीएम प्लस डीएक्सी फाइबर की कैपेसिटी बढ़ाता है, प्लस क्रॉस कनेक्ट का काम करता है, थोड़ा सा एडवांस है। तो ओटीएम ओटीएन में जो L1 वीडर आया है वो HFCL है फ्रंट एंड, ओईएम नोकिया है, और नोकिया का वर्ल्ड वाइड काफी अच्छा मार्केट शेयर है ओटीएन इक्विपमेंट में। तो अभी क्या हो रहा है कि जो अभी फाइबर होम का लगा हुआ है उसका हमें कार्ड रिपेयरिंग में सपोर्ट नहीं मिल पा रहा, और एक्सपेंशन भी नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो चाइनीज कंपनी के चक्कर। तो ये बहुत बड़ी समझ बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, तो अभी टेम्पोरली तो हमने एलियन वेव से काम चला लिया, अब ये इक्विपमेंट आ जाएगा तो परमानेंट प्रॉब्लम हो जाएगी। अब आ रहा हूँ नेक्स्ट। तो जो लास्ट माइल से एक्सेस करने के लिए और एग्रीगेट करने के लिए पहले एसडीएच हुआ करता था, बाद में सीपेन जो एमपीएलएस टीपी पे जो लेयर 2 इक्विपमेंट थे A1 A2 B1 B2 जो 46,000 काफी मात्रा में पूरे कंट्री में लगे हुए यूटी स्टार एंड फाइबर होम के, तो वो यूटी स्टार और फाइबर होम में आपस में इंटरकनेक्टिविटी नहीं है, क्योंकि ये एमपीएलएस टीपी थोड़ी सी रिजिड टेक्नोलॉजी है, फ्लेक्सिबिलिटी कम है इंटरकनेक्टिविटी की। तो अब अदर ऑपरेटर्स को देखते हुए बीएसएनएल ने डिसीजन लिया कि हम जो है एमपीएलएस आईपी पे जाएंगे, ऑल एक्सेस एंड एग्रीगेशन इक्विपमेंट विल बी राउटर बेस्ड एमपीएलएस आईपी लेयर 3। तो ये तो पुराना जो अभी लगा हुआ है सीपेन अप टू 10G के थे उनका कॉन्फ़िगरेशन है, और अब जो ले रहे हैं उसका नाम हमने रखा है एमपीएलएस आईपी बेस्ड एक्सेस एंड एग्रीगेशन नेटवर्क। तो इसमें काफी फ्लेक्सिबिलिटी रखी है कॉन्फ़िगरेशन में भी, विद E1 विदाउट E1, विद एसटीएम विदाउट एसटीएम, एसी और डीसी। तो और 10 MB भी है, 10 GB है, और 100G के पोर्ट भी अवेलेबल है। V4 और C1 100G के हैं। C1 अपने को बहुत ही रेयरली जहाँ जहाँ की बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड ट्रैफिक है, लाइक BNG लोकेशन, लाइक सुपर लोकेशन, वहाँ यूज करना है। और B4 जो है, B4 भी 100G वाले हैं, लेकिन B4 और A3 से लेके B4 तक सब पिज्जा बॉक्स वाले हैं। C1 जो है फुल फ्लेज राउटर है, रिडंडेंट पावर सप्लाई, रिडंडेंट कार्ड। तो ये प्रोजेक्ट अभी चल रहा है, साइट से हैंड ओवर हो रही है, और इस प्रोजेक्ट में जो है इक्विपमेंट की सप्लाई अगले वीक से चालू हुई। कोर नेटवर्क आ गया है, इसका इसका जो सेंट्रल इक्विपमेंट है EMS वो आ गया है। अभी जो क्वांटिटी है वो 14,000 है, 15,000 नोट्स, और 15,000 और ऑर्डर करने की प्रोसेस चल रहा है। हम एक बार चाहते हैं कि इक्विपमेंट पहुंच के थोड़ा सा वो ले लें कि इक्विपमेंट ठीक है, क्योंकि फर्स्ट टाइम मेक इन इंडिया इक्विपमेंट तेजस का आ रहा है। सीपेन से कंपेटेबल वैसे दिक्कत नहीं है, सीपेन के एक वेंडर का इक्विपमेंट दूसरे वेंडर के इक्विपमेंट से कंपेटेबल नहीं है। आप एक बार इसको भूल जाओ, मान को सीपेन का एक रिंग में एक वेंडर का इक्विपमेंट में दूसरे दूसरे वेंडर का इक्विपमेंट नहीं आ सकता। ये जस्ट लाइक सिस्को के राउटर्स, आपके सिस्को के, नोकिया के, जूनिपर के, हुआवे के सबके राउटर्स जो एमपीएलएस राउटर्स है वो कोएग्जिस्ट करते हैं ना,
वो चीज एमपीएलएस टीपी में नहीं थी। अब जो जो नए बॉक्सेज आ रहे हैं सारे आईपी पे रहेंगे, तो जहाँ जो भी हायर ट्रैफिक एरिया अपना जहाँ ज्यादा ट्रैफिक है वहां पर हमें ये वाले रखने हैं। और वो पुराने जो सिप है ना वो भी अभी सपोर्ट में है, वो भी अभी काम करेंगे, ट्रैफिक लेंगे। उनको लो ट्रैफिक एरिया में धीरे धीरे हमें डाउन। इंटरकनेक्टिविटी के लिए क्या है कि वो लेयर 2 का ही वीपीएन बना के इसके थ्रू पास थ्रू हो जाएगा, वो मैंने आगे स्लाइड में दिखाया। एसएफपी 10 किलोमीटर से लेके 40 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, सब तरह के एसएफपी। 10 की तो लिए, बहुत कम, बहुत कम, बहुत कम लिए। हाँ मुझे नहीं सर, सेम लोकेशन होता है ना, सेम बिल्डिंग में, तो सेम बिल्डिंग में आएगी। तो ए टाइप और बी टाइप जो इक्विपमेंट है वो पिज्जा बॉक्स टाइप है, और जो सी टाइप इक्विपमेंट है वो हाई एंड के लिए है, वो पूरा फुल फ्लेज चेसी बेस्ड राउटर है। ईएमएस का पावर ऑन और सॉफ्टवेयर लोडिंग वगैरह सब हो गई है। इसका एटी शेड्यूल फाइनल स्टेज पर है, वीटी शेड्यूल अप्रूव होने वाला है। इसमें 4 ईएमएस लगेंगे चारों सीएनटीएस के पास, चारों जोन में 4 ईएमएस लगेंगे, और एक एक ईएमएस और डीसी प्लस डीआर दो दो जोन को सपोर्ट करें। इसमें ए3 ए4 जो इक्विपमेंट है वो सर्कल्स को खुद को लगाने हैं, उसमें सर्विसेज ऑर्डर नहीं किए। टेरिटोरियल सर्कल्स को हमने ए3 ए4 का कंसाइनी बनाया है। B3 B4 और C1 के लिए हमने नोडल सर्किल सीएनटेक्स को बनाया है, ताकि डुप्लीकेसी ना हो। साइट भले किसी की भी हो, पर सीएनटेक्स को कंसाइनी बनाया है, वही सर्किल से बात करके रिंग बनाएगा, लगाएगा। क्योंकि पुराने वाले में क्या हुआ था कि इक्विपमेंट भी अच्छा मिल गया होगा शुरू शुरू में, तो डबल डबल कोलोकेटेड इक्विपमेंट कई जगह लग गए हैं, सीएनटी से अलग और एसएसए का अलग। तो उसको वो करने के लिए कि हम इक्विपमेंट को ऑप्टिमली यूज करें, तो एक नोडल जो बड़े राउटर तीनों हैं, तीनों की जिम्मेदारी लगाने की सीएनटेक्स को थी। तो वो क्या करेगा लगा के, जब तक वो उसके कस्टमर आप हो, उसके कस्टमर आप हो, उसको नहीं नहीं नहीं, वो उसको कहा है कि पूरा प्लान वो आपसे अप्रूव कराए, इंस्ट्रक्शन है वगैरह। और अभी तक कहीं कोई डिस्प्यूट नहीं आया। करेगा सर, क्यों नहीं करेगा सर? आपके पास नहीं आएगा ना, आपका सर्किल के पास गया होगा, आपके आपके सर्किल से गया होगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। एक ही बिल्डिंग में दो दो तीन तीन बॉक्सेस रोक दिया था और खाली है, अंडरलोडेड है। हाँ, इसलिए कॉमन प्लानिंग होनी है, वही कराएगा। वो प्रोजेक्ट इंचार्ज है बेसिकली, वो मेंटेन करने का हमने तो सोचा है कि जिसकी बिल्डिंग में जो इक्विपमेंट वो मेंटेन करेगा। इसमें जो अभी सबसे बड़ी रोल आउट में समस्या आ रही है वो ये आ रही है कि जो पुराने जितने भी साइट्स हैं उन पे एयर कंडीशनिंग नहीं है, कई साइटों पे एयर कंडीशनिंग नहीं है। तो आपको ये एडवांस एक्शन लेना है कि इक्विपमेंट आ जाएगा, उसके बाद वो डिस्प्यूट ना हो। ऐसी यदि पुराने हैं तो ठीक कराएं। B3 B4 C1 में ऐसी चाहिए, जब आपका सारा ट्रैफिक उसके ऊपर जाएगा तो। A3 A4 में नहीं चाहिए, उसमें टेम्परेचर रेंज भी ज्यादा है, पर B3 B4 C1 में चाहिए। तो B3 B4 C1 वो सीएनटीएस कहता है वो सर्किल को वो नहीं करा रहा है, लेकिन वो सबको मिलके कराना है। लेकिन ये भी नहीं कि इसके लिए कोई अलग से रूम तैयार कराना है, बहुत छोटी सी जगह चाहिए। यदि कोई एग्जिस्टिंग स्विच रूम है, एग्जिस्टिंग कोई भी रूम है, तो अलग अलग रूम बनाने की जरूरत नहीं है, उसी के अंदर इसको एयर कंडीशनिंग एग्जिस्टिंग है तो उसमें लगा दो, यदि नहीं है तो उसको ठीक कराना है। तो ये जो कोएग्जिस्ट की आप बात कर रहे थे कि आईपी की रिंग बन जाएगी, इसी के अंदर जो है एमपीएलएस भी कनेक्ट हो जाएगा, वो उसको विलेन बना के वो आगे उसको कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ये एफटीटीएच के दो सिनेरियो बताए गए हैं कि कैसे OLT भी कनेक्ट हो जाएगी, सीपेन पे भी कनेक्ट हो जाएगी, मान पे भी कनेक्ट हो जाएगी। तो दोनों तरफ आप जो है कनेक्ट कर सकते हो, दोनों को एग्जिस्ट करेंगे वैसे नेटवर्क। आपको ये ध्यान रखना है कि जहाँ 5G आ रहा है, जो बड़े सिटीज है जहाँ 5G आ रहा है, वहां पर आप मान रखो ये जो डिसीजन लिया था फॉर दिस एमपीएलएस आईपी का, उसके पीछे एक कारण ये भी था कि कुछ सर्विसेज जो 5G की है वो 2P एमपीएलएस 2 उस पे टीपी पे नहीं चलती। तो आगे यदि कुछ सिटी शायद मोबाइल के आइडेंटिफाइड है जहाँ 5G आना है, तो आप ये प्रायोरिटी प्लानिंग में कर सकते हैं कि वहाँ पर आईपी लगे, और बाकी जो एमपीएलएस टीपी है वो छोटी जगह चले। ये मोबाइल की कनेक्टिविटी है। मोबाइल में बेसिकली सीपेन पे भी चल सकता है,
और आईपी भी चल सकता है। जो नए मोबाइल 4G के मोबाइल आ रहे हैं उसके अंदर भी जो A1 नोड जो हम ले रहे हैं उसी तेजस का एक ट्रांसमिशन कार्ड भी उस बीटीएस के अंदर लग के आ रहा है। तो मुझे मतलब ट्रांसपोर्ट कार्ड बोलता हूँ वो ट्रांसपोर्ट कार्ड जो लग के आ रहा है वो तेजस का ही बीटीएस है। और ये जो एमपीएलएस आईपी इक्विपमेंट ये भी तेजस का है। वो सीधा B3 B4 में एग्रीगेट हो जाएगा। जहाँ वो बीटीएस लग रहा है वहाँ का सीपीएन नोड आपका फ्री है, उसको आपको कहीं और यूज करना है। जहाँ भी रिंग पे आ जाएगा वो, इस आईपी की रिंग बना लो ना वहाँ पर आप, आईपी की रिंग पे ले आओ, वो लेयर 2 पे भी कनेक्ट हो जाता है, लेयर 3 पे हो जाता है, वो दोनों पे कनेक्ट हो जाता है। तो अभी अभी पंजाब वगैरह में एक दो जगह उसका जब एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन करेंगे ना तो सारे सिनेरियो उसमें फिर टेस्ट हो जाएंगे। लेकिन ये तेजस को बोल दिया गया है कि ये सारे चीज सारे सिनेरियो में उसको फिट करना है। तो सीपेन सबका ट्रैफिक लेंगे, मोबाइल का ट्रैफिक के सारे सिनेरियो में बताएं कैसे सीपेन भी रहेगा एमपीएलएस भी रहेगा, और दोनों ट्रैफिक रहेंगे, दोनों सुपर एज को ट्रैफिक एंडोर कर देंगे। एक ये नया सिस्टम अभी ऑर्डर हुआ है, आज का आज एपीओ जा रहा है, रिमोट फाइबर टेस्ट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। अभी मेंटेनेंस पे बहुत ज्यादा फोकस है बीएसएनएल का। तो ये जो रिमोट फाइबर मॉनिटरिंग सिस्टम है ये बेसिकली एक चलता फिरता एक ओटीडीआर है, परमानेंट डिप्लॉयड ओटीडीआर, जो कि हर ट्रांसमिशन सेंटर में लगाया जाएगा। वो वहाँ पर जितने भी फाइबर जा रहे हैं उनको स्कैन करता रहेगा, और जो ही फाइबर में एक लिमिट से ज़्यादा डिग्रेडेशन हुआ ये सबको अलार्म भेज देगा। सेंटर सर्वर रहेगा, सर्वर सारी एफआरटी टीम को ट्रांसनेट से सबसे ये लिंक रहेगा। ये अगमोटेल को ऑर्डर दिया है, वीओआई का इक्विपमेंट है, वो भी काफ़ी अच्छी कंपनी आई है, और इसका जो है एपीओ आज जा रहा है। ये इसका बेसिकली एक वो है कि कैसे काम करता है बेसिकली। जो जो ये जो आरटीओ लिखा हुआ है बेसिकली ये है ओटीडीआर, जो कि वहाँ जितने भी फाइबर है उन सबको स्कैन करता रहता है। जैसे हमने जो ओटीडीआर लिया है, जो आरटीओ लिया है वो 16 पोर्ट का है, तो एट ए टाइम 16 फाइबर को राउंड द क्लॉक वो स्कैन करता रहता है, और एक पहले के इवेंट से कंपेयर करता रहता है। जहाँ ही कुछ कंपेरिजन में लॉस बढ़ा इमीडिएटली वो ट्रिगर कर देगा। फिर वो हमें कॉन्फ़िगर करना है कि वो ट्रिगर किसको जानी है, हर रूट का कौन इंचार्ज है, किसको जानी है, एसएमएस ईमेल हेल्प डेस्क सबको जाएगी, कॉल सेंटर सबको जाएगी। हाँ हाँ वो भी बताऊंगा। वर्किंग फाइबर भी करेगा, डार्क भी करेगा, दोनों तरीके है, ऑटोमेटिक करेगा। वर्क में भी करेगा। आप जनरली एक आध फाइबर स्पेयर होते हैं, पर यदि किसी केवल स्पेयर फाइबर नहीं है तो वर्किंग पे भी कर सकते हो। ओनली थिंग इज थोड़ा सा 1.5 से 2 डीबी का लॉस ऐड हो जाए। तो ये सिनेरियो है सर कि यदि वर्किंग में करना तो एक वो डब्ल्यूटीएम कपलर और वो एक वो लगाना पड़ेगा स्टॉप पास फिल्टर, जो कि हमने एसओआर में आइटम लिया है। और डार्क फाइबर में करना है तो बड़ा सिंपल है, और वर्किंग में करना तो एक स्पीकर है जिसको डब्ल्यूटीएम कपलर बोलते हैं, वो बीच लगाना पड़ेगा, और उधर दूसरी तरफ स्टॉप पास फिल्टर। तो वो फाइबर मॉनिटर भी जाएगा, ट्रैफिक भी कैरी होता रहेगा। अभी आ रहा हूँ। इसको इसका जो क्राइटेरिया हमने रखा है वो ये रखा है कि हम टॉप से चलेंगे। तो सबसे पहले एनएलडी को करेंगे। तो हमने अभी ये अंदाजा लगाया कि 2.5 लाख किलोमीटर हमारा एनएलडी है, और एक एवरेज चार रूट एक ट्रांसमिशन सेंटर में है, तो 70 किलोमीटर इसकी रेंज होती है। तो डिवाइड बाई करेंगे तो अराउंड 900 जो है 900 बॉक्सेस पूरे कंट्री के एनएलडी को कवर कर सकते हैं। तो कल परसों में सीएनटी तो हमने प्लानिंग भी ऐसे करी कि पहले हम वो डुप्लीकेशन नहीं हो, पहले हम सीएनटी लिख रहे हैं। हमने खरीदे 1300 है, ताकि टेरिटोरियल सर्किल के जो भी इंपॉर्टेंट नेटवर्क है मेट्रोज के वो कवर हो जाए, जो कि सीएनटीएस मेंटेन नहीं करता। तो पहले हम सीएनटीएस को लिख रहे हैं और अलोकेशन निकाल रहे हैं, पूरी गाइडलाइन बना के दे रहे हैं। एक वीसी भी मैं उनके साथ कर चुका हूँ कि कैसे उनको प्लान करना है। फिर जो बचेगा वो फिर हम सारे सर्किल्स को अलॉट करें, क्योंकि नेशनल सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है कि एनएलडी को हमें कवर करना। नहीं एक ही लगा दो, एक फाइबर लगाओ ना, दो क्या जरूरत है। मेजर करने के लिए स्पेयर फाइबर एक डायर फाइबर लगा, हाँ 16 लगा सकते हैं टोटल। लेकिन आपको एक फाइबर लगा के छोड़ दो, चारों डायरेक्शन के एक फाइबर लगा के छोड़ दो। यदि आपने डार्क को लगाया तो, नहीं तो लाइव भी लगा सकते हो। लाइव को लगाने के लिए हमने डब्ल्यूडीएम कपलर स्टॉप पास फिल्टर ये सब लेके रखे हुए हैं।
MTDR वो कम हो जाएगा। हाँ, डिटेक्ट, हाँ वो कम हो जाएगा, वो बहुत कम हो जाएगा। आपको बेसिकली TR ले लेके नहीं जाना पड़ेगा। इसमें एक वो स्लाइड यहाँ पर रह गई। बेसिकली इसमें एक 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 हमने वो भी लिया है कि कुछ जगह ऐसा हो सकता है कि 30 किलोमीटर बाद ही एक सिस्टम लगा हुआ है, जबकि इसकी रेंज 70 किलोमीटर की है। तो वहां भी एक, आप बीच में एक बाईपास कपलर आता है, वो लगा देंगे तो वो अलग से RTU लगाने की जरूरत नहीं, वो वहां भी मेजर करेगा और बाईपास करके आगे ले जाएगा। साइबर सिक्योरिटी सिस्टम, इसकी टेक्निकल डिटेल सारी अभी रवि कुमार जी बताएंगे। लेकिन बेसिकली हमने ये जो है नोक पे लगाया है, और इसमें काफ़ी एडवांस सिस्टम है, और अब ये शेप में आने लगा है। सप्लाई हुए तो इसको 1 साल हो गया, लेकिन इसकी फाइनल जो शेप में अब आने लगा है। सारे IGW पे सेंट्री लगी है, और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एनालिटिकल और डार्क वेव और थ्रेट एनालिटिकल बहुत सारे इक्विपमेंट लगे हैं। उसको हम एक एक करके अब हम जो है BSNL की जितनी भी एप्लीकेशन है उनसे इंटीग्रेट करे जा रहे हैं। अभी हम अमोघ, NMS और BBNW की, BSNL की वेबसाइट, इन तीनों चारों चीज़ों से उसको इंटीग्रेट कर चुके हैं, और रोजाना एक एक न एक सर्वर को इंटीग्रेट करे जा रहे हैं। तो ये भी बेसिकली फुल फ्लेज जो है जनवरी में साइबर सिक्योरिटी में काफ़ी फंक्शनल ये सिस्टम आ जाएगा। कस्टमर को फायदा होगा ना आपके, आप जो लोग अटैक करते हैं ना, जो BSNL के सिस्टम में लोग अटैक करने की कोशिश करते हैं, तो उनको पहले से वो कर देगा ना। हाँ, ब्लॉक कर देगा। जो मान का टेंडर था उसी के अंदर हमने एक टेस्ट एंड मेजरिंग का भी डाल दिया था, स्प्लैशिंग मशीन, OTDR, उस सब का भी आइटम डाल दिया था। तो उसकी सप्लाई चालू हो गई है, मतलब सप्लाई तेजस कर रहा है, पर बैकएंड पे वही जो पुराने टेस्ट एंड मेजरिंग के वेंडर्स हैं वो हैं। स्प्लैशिंग मशीन के अलावा बाकी तीनों आइटम्स की सप्लाई चालू हो गई है, और स्प्लैशिंग मशीन की सप्लाई भी आजकल में चालू हो जाएगी। तो वारंटी 5 ईयर है सर, मतलब एम्स वारंटी प्लस एम्स, 1 साल वारंटी, 4 साल के एम्स, वही वही करेगा। 5 ईयर वारंटी है, मतलब 5 ईयर का सपोर्ट है। और इसमें इसके हमारी ऑपरेशन विंग भी एक इंस्ट्रक्शन निकाल रही है, इसको आपको प्रॉपरली यूटिलाइज करना है, और पुराने इक्विपमेंट को भी यूटिलाइज करना है। और कोई कल परसों में एक दो जगह से पता लगा कि वहाँ स्टोर में जो जरूरत नहीं थी दूसरी वाली पड़ी हुई है, तो यदि कोई स्टोर में पड़ी हुई है तो हम दूसरे सर्किल को डाइवर्ट कर देंगे। और इसके अलावा इसमें और चाहिए तो आप लोग मांग सकते हैं, लेकिन ये कि आपको दिखाना पड़ेगा कि आप कैसे इसको अपने सर्किल में कैसे बांट रहे हैं। तो इसमें मतलब देर इज ए प्रोविजन ऑफ एडिशनल ऑर्डरिंग, पर ओनली व्हेन यू आर एबल टू कन्विंस मैनेजमेंट कि हमें क्यों चाहिए। ये ऑर्डर कर दिया, सप्लाई हो गई, ये अगले महीने सारा हो जाएगा। केवल स्प्लैशिंग मशीन में TCX में कुछ इश्यू आ रहा था, वो आजकल में रिजोल्व हो जाएगा। है नहीं, सब तरह की है ना। स्प्लैशिंग मशीन रिबन और सिंगल फाइबर दोनों है। हाँ, ये इक्विपमेंट ये तो ऑर्डर्ड है, सप्लाई से जो ON में रिबन वाले फाइबर डाले थे ना, 92। ये इस पे काम चालू किया है, मैनेजमेंट ने अप्रूव किया है। बेसिकली अब हम सारे ऑल काइंड ऑफ जितने भी नेटवर्क इक्विपमेंट लगे हैं उनका आप लोगों को अभी फील्ड में वो क्या बोलते हैं, वन नेटवर्क लगाना पड़ता है, जिसमें अलग अलग के टर्मिनल आप वहाँ लगा लेते हो। लेकिन अब अदर देन मोबाइल, बाकी सारी सर्विसेज का एक ही मैनेजमेंट सिस्टम होगा। अभी HP का लगा हुआ जो केवल राउटर्स के लिए काम करता है। इसका पर्पज ये है कि ये टेक्नोलॉजी एग्नोस्टिक, वेंडर एग्नोस्टिक होगा, और ये बेसिकली एक नोक होगा। जो जो बेसल मैनेजमेंट की जो विशिष्ट है वो ये कि एक बड़ा सा नोक हो जिसमें बहुत बड़ा होल हो, जिसके अंदर बहुत सारी स्क्रीन हो, इसमें सारा नेटवर्क एंड टू एंड, CPN से लेके OTN से लेके RFT से लेके सारे चीजों का वहीं से प्रोविजनिंग हो, वहीं से मेंटेनेंस हो, सब कुछ वहीं से हो। नहीं, रिपेयर तो फील्ड यूनिट करेगी ना जाके। नोक पे तो आप मॉनिटर कर सकते हो ना। और इसके टर्मिनल जो है आपको सबको एक्सटेंडेड हो, इसकी जो वो फ्रंट स्क्रीन है वो आपका सबको एक्सटेंडेड हो, ताकि आप अपने आपको अलग अलग एप्लीकेशन को एक्सटेंड नहीं करना पड़े लोकल। ये सब सिस्टम से बात करेगा। ये तो बेसिकली हमने जो टेंडर में डाल, जो एस्टिमेट किया है ना, वो सब इसमें डाल दिया। बेसिकली इसमें जो हम हार्डवेयर ले रहे हैं ना, वो मॉड्यूलर ले रहे हैं।
हमें पता है कि आज हम टेंडर के अवार्ड करेंगे, जो हमारे जो नेटवर्क एलिमेंट है हमने अगले 10 साल में जो भी आने वाले हैं ना, वो सब डाल के 80,000 नेटवर्क एलिमेंट को इंटीग्रेट करने के हिसाब से बनाया है। लेकिन हमने हार्डवेयर इसमें ब्लॉक्स बनाए हैं कि पहले हम ये लेंगे, फिर 3 साल बाद फिर ये लेंगे, ताकि वो कैपेक्स प्रोग्रेसिवली हो। एएमसी भी उस हिसाब से जितनी हार्डवेयर आ गई उतनी डलती है। तो ये कॉन्सेप्चुअल स्टेज पर है, लेकिन ये एमसी ने अप्रूव कर दिया है। इसका पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो एमसी ने अप्रूव कर दिया है। टेंडर पे काम चल रहा है और हमें टारगेट है कि हम इस महीने में इस टेंडर को फ्लोट कर दें। ये बेसिकली छोटे छोटे जो बाकी कॉन्ट्रैक्ट्स बेसन कारपोरेट ऑफिस में चल रहे हैं, ऑप्टिकल फाइबर का अभी मेरे हिसाब से कहीं कोई सप्लाई में कमी नहीं होगी। अभी पिछले 1 साल के अंदर 45,000 किलोमीटर केबल 24 और 48 सप्लाई हो चुकी है, अदर देन एडीएसएस। और अभी एक और टेंडर 22,500 किलोमीटर का कर दिया है, जो अगले वीक खुल जाएगा। उसमें 5,000 अनआर्मड भी है। आजकल ये आपको सबको पता होगा कि नई केबल जितनी भी डलनी है वो आर्मड डालनी है। ये एक पॉलिसी डिसीजन मैनेजमेंट ले चुका है। और एडीएसएस केबल जो है उसका भी टेंडर किया हुआ है, जो हिली टेरेंस के लिए और नॉर्थ ईस्ट के लिए मैक्सिमम 4G उसके लिए चाहिए। पुरानी जो केबल 12 फाइबर की पड़ी हुई है उसको रिपेयर मेंटेनेंस करने के लिए भी कुछ लोगों ने वो मांगी है 12 फाइबर केबल, उसका भी टेंडर किया है। 4 फाइबर केबल का भी टेंडर किया है। एक मीडिया कन्वर्टर्स का टेंडर अभी अवार्ड किया है रिसेंटली, जो कि सीपीएन वगैरह में लोगों को फील्ड में ईवी कनेक्टिविटी के लिए चाहिए। और आगे जो है अब जो केबल डल रही है उसको ट्रेस करने के लिए, कोई आर्मर्ड केबल डल रही है उसको ट्रेस करने के लिए फिर आर्मर्ड एक क्वेश्चन है। हाँ तो पीटीसीसी वाला झंझट चल रहा था, हाँ। इसकी वजह से आर्मर खरीदने रहते, तो वो इट हैज बीन टेकन केयर ऑफ। जो अभी पुरानी जो वो है, आपने भी पता लगा, बिकॉज आई वाज न्यू टू द सिस्टम, कि पुरानी जो एक रिलैक्सेशन कॉर्पोरेट ऑफिस ने निकाला हुआ था, उसका अभी 2 महीने पहले शायद वो एक्सपायर हो गया। उसको वापस आगे बढ़ाने के लिए प्रोसेस चालू। एक क्वेश्चन है। हाँ। एडीएसएस केबल का टेंडर जो है सर्कल ने ही करना है। सर्कल ने ही करना है, सीएमडी इज वेरी पर्टिकुलर ऑन। हाँ, और उसमें इंस्ट्रक्शन में भी यही लिखा हुआ है। यही लिखा हुआ है। लेकिन हिमाचल में काफी प्रेशर है कि बीए टेंडर फ्लोट नहीं करेगा, आप बता दीजिए, नहीं करेगा। नहीं, वो इट डिड नॉट वर्क। फंस जाओगे आप, इट डिड नॉट वर्क। नहीं हो पाएगा। इसलिए वहाँ केबल भी यूज नहीं हो पा रही है, टेंडर फ्लोटेड है। नहीं, वो आज ही हमें कहा गया है कि आप सारे सर्किलों से टेंडर सर्किल लेवल पे हुआ कि नहीं, उसका स्टेटस को हम पुश करेंगे। इंस्ट्रक्शन में तो क्लियर है। इंस्ट्रक्शन बिल्कुल क्लियर है, कहीं कोई डाउट नहीं है। एक दो ने इवन यूपी वेस्ट ने एक पर्टिकुलर उसका 7-8 किलोमीटर का था, उसके लिए भी उन्होंने रिलैक्सेशन मांगा। और मैं आपको बता दूं साहब को पता है, नहीं, लेकिन अब तो टेंडर एमएम आगे जाके अभी जो एमएम वो चल रहा है ना क्लीनिंग, उसमें अब ये होने वाला है कि ऑल सर्विस टेंडर सर्कल ऑफिस से ही होंगे। इसके लिए तो अलग से हो गया होगा। हाँ, टेंडर भले कमेटी में इम्प्लीमेंट हो गया। कमेटी में कोई बीए का आदमी हो, कोई भी करे, लेकिन टेंडर फ्लोटिंग नहीं वो नहीं 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 मैं ये कह रहा हूँ, टेंडर अप्रूव सीजीएम करें। जो इंस्ट्रक्शन है वो ये है, टेंडर अप्रूव सीजीएम करें और वहीं से फ्लोट होगा। हाँ साहब को सीजीएम बनाएंगे जल्दी। तो इसमें अब मैं जानना चाह रहा हूँ कि जैसे इसका फाइबर के बजट के बारे में किसी को कोई कंफ्यूजन है? ठीक है, ठीक है। नहीं, फाइबर का बजट में जो है, मतलब अभी हमने इंस्ट्रक्शन निकाली हुई है। कुछ कुछ सर्किल तो काफी इंथुजियास्टिक है, जो कि रिप्लेस भी कर रहे हैं, रिहेबिलिटेट भी कर रहे हैं, कुछ बजट ही नहीं मांग रहे। तो मैंने कहा कोई इंस्ट्रक्शन में कोई कंफ्यूजन है या कुछ है, तो वो मैं जानना चाह रहा हूँ। नहीं, लेकिन जैसे एफटीटीएच की टीम हमें बार बार पुश करती है कि आप फाइबर, नए नए हैबिटेशंस आ गए हैं अर्बन एरियाज में, नई कॉलोनियां बन गई है, तो वहां पर आप लास्ट माइल फाइबर को बढ़ाने के लिए कहीं कोई रोक है, किसी की रोक, मतलब बजट? नहीं, कोई रोक नहीं है। आपको अपने लेवल पर रोक है ना, लेकिन आप भेजो ना हाँ, मतलब जैसे मुझे तो पंजाब का सबसे बढ़िया लगता है। हर महीने 5-7 किलोमीटर का आता है, अप्रूवल होकर चल जाता है, अब करते रहते हैं। तो वो मतलब मैं यदि वो बजट की लिस्ट देखता हूँ तो पूरे कंट्री में 10-12 सर्किल ही प्रोडक्टिव है, बाकी नहीं कर रहे। नया मत डालो, रिप्लेसमेंट करो जो फाइबर पुराना हो चुका है, जो क्योंकि अब इतनी सारी फाइबर खरीद डाली, उसको फिर यूज भी तो करना जरूरी है ना।
तो कोई कंफ्यूजन है क्या? मतलब आपको आपको एक जस्टिफिकेशन बना के भेजना है, बजट अलोकेट हो जाएगा। हाँ, नहीं आता रहता है, नहीं आता रहता है, कहीं कोई रिहेबिलिटेशन में तो लमसम भेज दिया था, तो एक एक मांगने के बजाय हर सर्किल को बांट दिया कि आपको ये दे दिया, आप इसको अपने बीएज में बांट दो। हाँ तो वही तो, इसलिए तो पूछ रहा हूँ मैं, मुझे पता है वो मेरे पे आ रहा है, इसलिए तो मैं पूछ रहा हूँ आप लोग से। तो अभी मटेरियल अवेलेबल है, बजट अवेलेबल है, बजट खत्म नहीं हो रहा। सर मटेरियल कॉमन है, आपको जो आपकी प्रायोरिटीज पे आप डालिए, पर मटेरियल कॉमन है, उसको जिस बजट में बुक करना है उसको बुक करिए, पर मटेरियल इज कॉमन। एक कंफ्यूजन हो रहा है कि अभी दो तीन सर्कुलर से रिंग आ रहा है कि 4 फाइबर केबल वो मोबाइल वालों को नहीं दे रहे। बोले ये तो हमारी ईबी की है। तो ऐसा कोई किसी भी मटेरियल पे कोई टैग नहीं है, आप जिस बजट में यूटिलाइज करना चाहो वो बजट बुक कर लो, अपने आप उस बजट में खर्चा बुक हो जाएगा। बजट तो तब होगा ना जब आप स्टोर से मटेरियल इशू करोगे। नहीं नहीं, 4 फाइबर केबल आपके एमपी में 500 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, ईबी पे बजट मांगो ना आप, मैं ही देता हूँ ईबी का बजट, बजट मांगो आप। अब जब जीएम ईबी एक बात करके सब ऐड करो तो मैं क्या, मेरे में डॉक्टर अपने कात्यान जी फाइल भेजते हैं, हम बजट देते हैं। अच्छा सुनो, चलो सर 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 अभी अभी टिटबिट जैसे उन्होंने, एक मिनट नहीं, एक चीज और बताता हूँ। अभी जो उन्होंने जैसे रिहेबिलिटेशन का बजट दिया ना सीएनओ ने लमसम, उसी से हमने क्लू लेते हुए एक ईबी के उसके लिए एक लमसम बजट दिया है, अभी दे दिया है, 16 करोड़ का पूरा सर्किल में दिया है, लेकिन आप उसको यूज करो। और ज्यादा केबल की बात है, एमपी में 400 किलोमीटर केबल पड़ी हुई, 450, 4 फाइबर मैंने पंजाब को डाइवर्ट किए। अच्छा। तो मेटेरियल की कहीं कोई कमी नहीं है, कोई कंफ्यूजन है बजट एलोकेशन करने में? अच्छा, बजट कारपोरेट ऑफिस अप्रूव होता है, उसके बाद कैपेक्स जो है इसमें 1 करोड़ तक की सीजन को पावर है, तो उसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। कैपेक्स की पावर पहले वापस दिल्ली भेजना पड़ता था, पर केस 1 करोड़ है ना? तो आप आराम से अपना जो भी आपका क्रिटिकल रूट है जहाँ की ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है उसको आप रिप्लेस भी कर सकते हो, नया भी डाल सकते हो, जहाँ नया एरिया डेवलप हो गया वहाँ पर आप डालिए, क्योंकि हमें अब प्रेशर ये है कि केबल ले ली डल नहीं रही। अच्छा, रिहेबिलिटेशन के केस में आरओआई का एक कंसेप्ट है कि आरओआई कितने टाइम में आएगा, ये कैसे कैलकुलेट होगा? नहीं वो नहीं नहीं, फिर सर दिखा तो दो, बंद कुछ बता तो रहे, कन्विंस तो हो कोई। सर 1 ईयर लिखना है, 2 ईयर लिखना है, और क्यों सर लिखना है? सर अब तो बजट आपको लमसम देते हैं ना रिहेबिलिटेशन में। परंतु अभी सर्कल हमसे लगातार मांग रहा है कि आप आरओआई की कैलकुलेशन, नहीं, मतलब कैसे करें आपको कैलकुलेट? अंग्रेजी लिखनी पड़ेगी, हम भी मांगते हैं लेकिन जवाब हम अंग्रेजी देख नहीं, के 1 ईयर लिख देंगे तो सर्कल में अप्रूव हो जाएगा, 1 ईयर से प्लस लिखेंगे तो कॉर्पोरेट ऑफिस को केस जाएगा। बट नहीं प्रॉब्लम इज नहीं हाउ नहीं, टू। वो ईबी के लिए, वो जो 1 ईयर वाला है वो केवल ईबी पर्पज के लिए है, रिप्लेसमेंट के लिए नहीं है वो। रिहेबिलिटेशन के लिए नहीं है? नहीं नहीं, वो 1 ईयर की जो वो है ना आरओआई, ईबी पर्पज के लिए आपको सर्किट डाल रहे हो तो देन वहाँ आई हैव टू आस्क माय जीएम ट्रांसमिशन सर्कल ऑफिस, वो रिहेबिलिटेशन के केस में मांग रहा है कि भाई आरओआई आप लिख के 1 साल की नहीं नहीं दीजिए। नहीं नहीं, वो तो पहले हम मांगते थे, हमने लमसम इसलिए दिया कि वो लिखापटी कम हो जाए। तो सर्कल का हाँ, कॉर्पोरेट का सिंक नहीं है? मुझसे कहो बात कर ले, आपका सर यूपी वेस्ट है ना? हाँ तो आप उसको बोलो ना, विकास बिल्कुल, विकास विकास को को बोलो। बोलो, हाँ। ठीक। नहीं अभी हम जो एसएफपी ले रहे हैं वो तो 80 किलोमीटर भी ले रहे हैं, 100 किलोमीटर भी ले रहे हैं, अलग अलग बैंडविड्थ पे। नहीं, रमन एम्पलीफायर आता है, अभी एनएफएस में लिए गए। नहीं नहीं, मैं ऊपर ऊपर का जवाब दूंगा, अंदर में नहीं जा पाऊंगा। रमन एम्पलीफायर आता है, अभी नोट स्टैंडर्ड इक्विपमेंट पर अभी एनएफएस में लिया है कुछ। नहीं नहीं, ये जो कह रहे हो सही है, रमन एम्पलीफायर अभी एनएफएस में काफी कुछ लिए गए हैं, बहुत कॉस्ट, बहुत ज्यादा कॉस्टली है। कॉस्टली का मतलब मे बी 1 करोड़ 2 करोड़। हाँ, ये गाइडलाइन है कि आपको जो है एडीएसएस केबल का कंपोजिट टेंडर सर्किट से करना है, नए जितने भी नए रूट है वो आर्मर्ड ऑफसी केबल डालनी है, और सारा कुछ ट्रांसनेट पे अपलोड करना है, हर रूट ट्रांसनेट पे अपलोड करना है। अब तो शायद उसको पेमेंट से भी लिंक कर दिया है।
और कोई आपकी क्वेरी हो तो? केबल सप्लाई का कुछ शॉर्टेज है क्या हमें, जैसे उड़ीसा सर्किल से हम लोग तो हमें उड़ीसा में कहाँ कोई से- शॉर्टेज नहीं है। उड़ीसा में मुझे अभी ऑफ एंड इतने आते हैं कि मोर देन 2000 किलोमीटर केबल पड़ी हुई है। हाँ। अब वो कौन सी वाली है, शायद चॉइस फाइबर आर्मर्ड है। वो प्राइस है ना, वो सीजन का काम है, किसको पहले देना है, लेकिन केबल इज कॉमन। केबल पे कहीं कोई ब्रांड नहीं लगा हुआ कि 4G की है उसकी है। कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, यदि चाहिए तो मैं डाइवर्ट भी कर दूंगा। हाँ, आपको दिख जाता है। मैं तो यही मैं आजकल रिक्वेजिशन मांगता ही नहीं किसी भी टेंडर फ्लोट करने के लिए। मैं तो हर वीक में एक वो आ जाता है, ERP से स्टेटस निकल के आ जाता है। उसमें जैसे SJCS स्प्लाइसिंग जॉइंट है, मैं उसको देखते रहता हूँ। जिस दिन वो 1 लाख से कम हो जाता है, टेंडर फ्लोट कर देता हूँ। तो आजकल तो मैं मेटल कोड भी तीनों चारों सारे इकट्ठे कर लिए। कुछ लोगों ने अलग अलग क्रिएट कर रखे हैं, हमने वो भी सब इकट्ठे कर लिए। तो सारा कुछ उससे पता, आपको अपने सर्किल का पता लग जाएगा पूरा कि आपका सर्किल में कितना। एक्चुअली वो क्या है कि जो 2 साल, सर वो क्या है, 2 साल पहले जो थोड़ी शॉर्टेज थी ना, उस चक्कर में लोग थोड़ा ज्यादा, उस चक्कर में तो हमें लग रहा है कि वो आगे जा नहीं रही थी ये चीजें। जैसे कल AP सर्किल हमसे लड़ाई कर रहा था कि हम ये तो EV की केबल है, 200 किलोमीटर 4 फाइबर अवेलेबल है, और वो कहता है हमें 100 और दो। मैंने क्यों चाहिए, बोले ये तो EV की है। मैंने कहा केबल में कुछ नहीं लिखा हुआ, आप यूज करो ना, आपको फिर और दे देंगे। तो थोड़ा सा लोगों के बहुत दिनों बाद सामान आया, तो थोड़ा सा वो वाली संचय प्रवृत्ति, नहीं संचय प्रवृत्ति थोड़ी सी रहती है कि भाई बाद में आएगा नहीं आएगा, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है। रेगुलर टेंडर्स फ्लोट हो रहे हैं, रेगुलर्स। और जब से थोड़ा पेमेंट कंडीशन ठीक हुई है, बिडर्स का पार्टिसिपेशन अच्छा हो गया है। और बिडर्स का पार्टिसिपेशन अच्छा होगा तो रेट्स भी अच्छी आएगी। तो अभी कोई कहीं कोई समस्या नहीं। नहीं, ये गाइडलाइन का अब कोई मतलब नहीं है, मैंने मिटाना भूल गया, क्योंकि अभी उन्होंने है ना, मोबाइल वाले ग्रुप ने एक लमसम बजट सबको दे दिया है। इसके हिसाब से कुछ 3 लाख रुपए या 4 लाख रुपए कुछ किलोमीटर डाल के सबको उन्होंने बजट। तो 4G का सेचुरेशन का बजट तो रीना मैडम दे रही है। और वो जो BTS साइट्स को जोड़ने के लिए ये DK अग्रवाल जी के ग्रुप ने लमसम ही बजट सारे सर्कलों को सारी साइटें काउंट करके इंटू किलोमीटर और इंटू 6 लाख 5 लाख जोड़ के उन्होंने बजट दे दिया है। तो उसका अब कोई मतलब नहीं रहा। और कोई क्वेश्चन नहीं है? थैंक यू। Thank you, sir, for such kind and informative session. That was intuitive one. So on the behalf of House, I would like to pay our sincere regards on the behalf of LTTC for to facilitate. Sir, I would like to call upon our beloved DGM Shri Jha sir. Now to take the things forward, now I would like to, on the behalf of this house, I would like to welcome Shri P. Ravi Kumar sir, GM MP NOC Bangalore, and definitely the day-to-day life of a BA head basically belongs to the data-driven services. And the data-driven services, he is supposed to be a pioneer in the data-driven services. So you are supposed to get all your questions answered from the P. Ravi Kumar sir. So with a huge round of applause, I would like to welcome P. Ravi Kumar sir. Good afternoon to all seniors and colleagues
here today. My topic is simple. This is on IP, MPLS networks, SDN, SD-WAN, and whatever is happening in BSNL advanced technologies. Myself, P. Ravi Kumar, I take care of MPLS NOC operations at Bangalore. We cater to across India all services of enterprise business. We focus mainly on technical resolution to the customers and also address most of the speed issues. I think today also Sir was talking about speed issues. We focus on ILL customers preferably, and also whenever some of the SSS come back with slow speed issues, yes, we do address. And, so we started our business in way back 2003. MPLS started in 2003 in BSNL, and we have core network. It is the center of the hub where I think Sir was talking about Nokia core routers are deployed today, and we have edge network. We have comprised of Juniper, Cisco, and also coming recently upgraded Super Edge routers. Then we have access network. Mostly all SSA heads are predominantly handling this access network, OT and CPAN, whatever you call it. And it is a multi-protocol label switching. This is traditionally very old technology. And we got various protocols are there, OSPF and LDP, RSVP, BGP, and ISIS. These are the protocols used. And these are our partners who are working with us continuously last 10 to 15 years. And if you see the flat network, if you see like, I think you can imagine the rightmost thing is what you prefer. I mean, most of the time you'll be handling. DISLAMP, IL, NG, and all these things. Then we have edge routers, core networks, inside IZW routers, which play very critical role for internet to our customers. And we got various makes. We got a Cisco make is there. Very recently, we're going to replace with a new Super Edge tender. And Cisco is more than 50% network is of Cisco make. Then we got Huawei of Edge 2. 64 routers are there. Then Nokia is playing key role in core network, and also part of Huawei is there. And Juniper, and these are things. We have got more than 2.1 lakh VPN customers. VPN, it doesn't mean only L3. It is all including ILL and also service connections, like your CUPS PNG is getting terminated into MPLS. We call it as a link. So we got more than 2 lakhs. And this is a more what you call complex way how our network looks like. Probably the technology is known to all of you. And core IZW plays very critical role. OTN and DWDM, you may be knowing that this plays for the access side. And we got many other things. These are the services which are floating on MPLS cloud. You all must be knowing your multiply, FTTH, NGN, all your BNG peering, all floats on edge routers. From edge it gets carried into core. Again, complete BSL intranet, even CMD sabka VCB is chal raha hai. Your CDR platforms also interconnected on MPLS cloud. And SSTP, most of the time your calls do not get matured whenever there's a problem in MPLS cloud and SSTP at Bangalore. Then all GSM 4 zones, internet speeds depends on MPLS performance, because Chandigarh, Calcutta, Pune, and Chandigarh, Chennai, all these 4 nodal centers are banking on MPLS cloud, because you got SGSN, GGSN, then on GGSNs are connected to MPLS PE, then to our core network. And recently we are also trying to launch 100 e-nodes also in Chandigarh. We tried. Last minute it was dropped, where that also banks an MPLS cloud. And these are the services where we get revenue, like IP multiclass, ILL, broadband or VPN, L2, L3. This is around 3,000 crores for the organization. These are the services which we normally sell to our customers. When you offer ILL to the customer, first thing is we are giving 1:1 speed. That is uplink, downlink. It is 100%. Same speeds we will provide. And again, we also reserve equivalent bandwidth in IZW. So any customer may ask why I should provide ILL rather than FTTH. Here it is a dedicated bandwidth which is allotted to the customer. Speeds are assured. Sometimes we also even enable their QoS so that they get the warranted speeds. And broadband over VPN, this is a little cost effective, which we are always offering to customers. Then we got VSAT, IDC, clean internet pipe. This is the new service. It was there for last 2 to 3 years, where we charge 10% extra and provide only internet to the customers. Suppose somebody come to you, ask you for, I'm buying 8 Mbps ILL, what is the guarantee? Only internet is given. So this is a solution where their packets are scrubbed, all spurious traffic is removed, only a genuine internet is fed. I think we got almost 64 customers. And we also give you QoS to the customers, assured QoS.
And somebody may ask, what is QoS? When there is a congestion, like sir was telling, Indore to Delhi, if there is a congestion, customer with gold will be having highest priority, his packets will be put through. All banks virtually are given QoS as gold. Probably this is the one which we are offering as a discount to the customers nowadays. Instead of decreasing the tariff, we are upgrading their bronze to gold. And they get the best of the speeds. Normally, you don't get any complaint from any VIP customers or any bank. The only reason is all have been enabled with QoS. The QoS is the technology where a packet label contains indication. That packet will be pushed to the top layer and that packet will go at any cost of time, even though any congestion is there, whatever may be there. If you are provided with the gold, certainly you will get the excellent services and also good bandwidths. And we're also going with the multicast services. That means one packet is released into BSNL. We multiply the packets and distribute to the destinations, especially stock exchanges or nowadays IPTV, all service providers are asking for multicast services. They got one station from Chennai. They'll be broadcasting entire state. बहुत जगह पे चल रहा है सर. Fail मतलब whenever south में तो अच्छा चल रहा है because it all depends on the core network. The fiber is good. There are no jitter latency. True. Actually, they don't tolerate because अब कोई भी टीवी देख रहे तो in case any cricket match I've seen है. अपना BSNL का विकेट जो भी मिल रहा है ना 2 बॉल के टिके था. Reason is हमारा network में कुछ issues are there, especially that Maharashtra above belt. Yes, they're trying to improve WTR. But south में तो फिलहाल अच्छा है sir. In fact, I'll give you one example. There is a TAG TV, Tamil Nadu Arsu TV. It is headed by IAS officer. It is a government-sponsored TV services given free of cost to all citizens. And so successful that it is fully banking on BSNL. In case any small freeze of TV channel at Coimbatore, because broadcast happens from Chennai, nobody will tolerate. So it was one success model. Again, it all depends on how we maintain our. 3 साल से चल रहा है सर. 3 साल चल रहा है. So similarly, Nagarkoil to Indore also somebody has come. Nagpur शायद. That also has come. Yes, sir. Yes. It's picking up. The only challenge is like whenever OTN fails, probably will not be able to answer. Even if I'm a customer at home, FTTH 10 minute के लिए suppose it goes fault. घर में nobody will tolerate. First thing they'll scold is आप क्या BSNL में काम कर रहा है, TV नहीं चल रहा है करके. This is a common thing. But however, we'll make our best effort. Things are improving. Like Rajasam was telling, this is the first time in the history of BSL where you got OTN expansion, CPAN expansion, MAN expansion, Super 8. I do not know. We had a big list of expansion, including some 20,000 RPM fibers. Probably next 6 months, certainly we can show light and customers will be very happy. But certainly we can assure, sir, MPLS VPN customers are taken care. My job is I take care of richest customers. Somebody is paying 5 crores. We are told by Goelsoft to give top priority to them, like Department of Post, SBI and all. But FTT is more than 35 lakhs customers are there. Certainly, when you got limited food, we will not be able to feed everyone with equal flavor. But if fiber is up and running, certainly all will get good services. Certainly, if some routes are going faulty, especially that if I see almost every day 1 or 2 P routers are getting isolated. That's a very bad side for us. But however, we are hoping things will improve. And anyway, I think I'll try to switch over. We can proudly say that we got submarine cable from Chennai to Andaman. In fact, I don't know, somebody is there from Andaman. They get better speeds than people in Bangalore or rather Indore or Delhi. They get fastest speeds, sir, because IGW at Chennai, Andaman is covered with fiber, which is very effective. Latest, no drops, nothing at all. Perfect 140 Gbps. Similarly, we started with Lakshadweep also. We got direct fiber services are being offered. Probably 2 years back, if you know Andaman or Lakshadweep, no, there used to be 600 milliseconds delay because of satellite. Today it is remote and they're getting wonderful services and their FTTH and VPN customers are growing. Now I'll come on to the main subject, sir. Like if you see of the router has got 2 components. Uska paas ek dimag hai, brain hai. That is called control plane. Then it has got data plane. Control plane also has got 2 brains because one brain can fail anytime, but second one will take it. That's how it works.
Then P routers, what you have predominant SSS will generate labels. Labels are nothing but a tag which is prefixed to the original packet for the destination. Then core routers will simply swap the labels and pass on to destination. This is how technology works. But if you talk about MPLS technology, what it is outdated now. Now today we have come with the software defined network. So brain of every router is removed and kept in Nokia SDN controller. So they have end-to-end visibility. Today router do not have visibility beyond the neighbors. But with implementation of SDN, yes, we can have visibility from Madurai to Delhi. Suppose a packet is going from Chennai, which route to take is decided by neighboring routers. In future, we'll be able to decide packet from Chennai to Delhi path is decided by controller. This has come already implemented. Now it is the super edge which will be able to have the full flavor. Today, a core network is having SDN compatibility, and that SDN compatibility should be understood by edge routers. Our legacy routers are not compatible. That was one challenge. With induction of super edge, certainly, yes, we'll be able to do it. Here we'll be having two big advantages. One is bandwidth on demand you can give to customer. Like some customers, I don't want to pay 1 Gbps rate for throughout the year. So whenever he wants, we can upgrade. That is the one thing. Second thing is you have much bigger visibility and manageability. So this how it is growing, sir. If you start seeing maybe 2012 to 2023, almost 10 years, our internet growth is like a pyramid. Whenever there is an expansion happening in BSL network in 2016, courtesy SBI, we grown up. Then again 2020, now again our super edge again we are going to grow up. And again FTTH is going to play a very critical role for us, where I think we are assuring almost 20 Mbps to 100 Mbps. So we're trying to meet with that. We got various caching, peering, IPP, many things are there. Internet is the most complex routing in the BSNL. Voice call is straight, mobile call is very straight, very few, 2-3 devices are there. If you come touch up on internet, I do not know, there are 25 devices involved. That was the reason, one of the factor for like same resources are there. One SSA will get good speeds, another SSA will not get good speeds, or few customers in SSA will get good speeds, others will not get. So this is one of the complex network, IP and internet. Probably when you have bigger issues or persistent issues, you can escalate those, we can try to resolve. One small example I can give, like one of the BNJ, which was having IP prefixes, advertised of Orissa in somewhere in Delhi. If you advertise this in Chennai, certainly the speeds will be much better. Again, you have OLT, ONT, BNG. BNG is also high CPUs are there. Again, P routers are there, P to core, core to core, core to ICW, like this. It's very complex. In between, your DNS will come into picture, authentication will come into picture. Certainly, we do not know where to troubleshoot. So it is one of the complex thing which we need to focus more in coming days. And in enterprise business, we handle MPLS core network, but again, major share is of CFA, where almost 60% of the traffic is consumed by our FTTH customers. And 29 is by enterprise, and again 13% by GSM. But next year, this GSM will increase with the induction of 4G. If you see the Google forecast also, it is exponential growth. This is a real analysis by Google globally, and one of our, he is our big partner in providing internet. 60% of our traffic is Google in BSL network. So this is again Facebook, like our WhatsApp and all things are growing. And all, they'll be asking whether NOC is having ISO certificates. Yes, we got ISO certification. We focus on 4 things mainly. Provisioning part, where we do all India provisioning centrally. Most of the time you call us in midnight, like 7 baje, 8 baje call karke ILL circuit through karna karke bolega. It's a little complex. Yes, we cope up. Then customer fault management and also backbone, NMS and inventory. So service delivery plays very critical role. I think all of you are struggling how to acquire a customer where we need to go and impress upon. And also you find as commercial thing. Then comes the provisioning part, testing part, and also realization part. So we take part into centralized provisioning because we need to keep track of customer LAN, WAN, IP pool, their protocols.
we keep centrally, and your job is only to go and acquire a customer, or you have to expand the branches. Then comes our support model. In fact, we have got a wonderful call center 24/7, 1957-425, 1800-425-1957. There any customer can call, including point to point, VSAT, MPLS, L2, L3. They are taken care. Only customer call center agent will ask circuit ID or WAN IP. Any one of them they are able to feed. Yes, their faults are booked and taken care. Then from MPLS, BSNL side, what we do, whatever call center agents are not able to handle, yes, the call will come to us through a portal called help desk. In that, our own BSL will be supporting field. Then again, some issues are there which are unresolved. Like Saapne bol raha hai ki speed issues are there. Then we escalate to L3 team. We have OEMs also available. We'll be able to take care. We also do a lot of technical things, planning and all implementation, like recently Super 8, Super Core, cyber security and all, we take part. We also do a lot of IT tools to improve our efficiency. Sometimes now that whatever OEM gives will not be sufficient enough to sell a product. So we try to bridge that gap with our own in-house tools. So our call center looks like this, like fault is booked, then escalation will go to the field on Prabal Plus, then follow up, then docket closure. This is very unique. We call the customer, confirm, then only we close the docket. It is not blindly closed. Then we got bulk tickets booking also. Nowadays, what is happening? Most of the SIs, most of the system like HCL or SBI, CFI and all, they don't want to call our call center. They'll be sending you a bulk of mails where like 500 falls are there, 100 falls are there. These are all collectively collected with the help of JetSmart Whale Cloud. We are able to do bulk booking also. And Prabal Plus, you all must be knowing this is one of the tough job for everybody to see and try to restore. I think your KPIs are also earmarked with the Prabal Plus. This also in-house software. Yes, it is doing good. We have done API integration with a couple of customers also. And we are also proactively monitoring high bandwidth 1 Gbps and above without calling anybody. We daily check and follow up with the field for restoration. And we are also protecting network. Probably we all will think that things are happening just like that because we have deployed many things. Today, you know, the cyber wars are much bigger and complex. And DOS attacks are too much. If you see almost every month you find around 1 to 2 TBps of attacks are there. These volumetric attacks are nothing but, suppose for example, I'm here, I want you to ask any questions. If everybody starts asking me questions, or all of you say hello to me, I cannot listen to anyone. Same way, genuine packet like hello packet, UDP packets are sent to the destinations. Keep the bandwidth busy and genuine people will never get. This is how these attacks will happen. And these are too many happening. We got Netscout, one of the best product. We are also providing clean internet pipe. Today, around 60 customers are there. We started with Parul University long time back. He has taken 2 Gbps, including election commission and all avail this service, which are 10% extra than normal rate. And this is the Prabal Plus. Probably anybody has got any concerns on Prabal Plus, they can talk, because this is a couple of years back, direct enterprise Saapka ye vision tha to aggregate all tickets. Earlier we were booking tickets for VSAT somewhere, point to point clarity, MPLS in remedy, SBA somewhere else and all. This is aggregation of all tickets presented to SSA circles management view. And also ticket is escalated to the field in charge directly. Now, earlier it used to go to only NIP in charge. Now the tickets will go to the lineman or exchange in charges. And it generates all SLA reports and all for management. So this how it is growing. We have got top 15 customers. State Bank of India being I think very loyal customer, or we are loyal to them. They generated around 400 crores to us. And 21,000 branches of MPLS VPN they have availed from us. Still other services also they have taken. Then comes Punjab National Bank, Bank of Baroda, Union Bank, Canara Bank. These are the very top premium customers who contribute a lot of revenue for us. And recently Department of Posts also, I think NTR is working on this. I think BMAP is our All India provisioning software, which has been developed by our own MPLS BSL staff, and it is very effective. Earlier, we used to take 7 days to do any provisioning. Today, we do it within 12 hours.
And smart portal is to monitor traffic and all. Somebody says this BHG internet speeds are low. We configure the links on MRTG. We monitor whether it's a problem with the bandwidth or the CPU or the other access side. And service desk is the tool where all loading charges can escalate to MPLS NOC with their own problems. For example, you got any problems on speed, most of the time you come back to the speed or non-getting services, or occasionally services are up and down. These things are being escalated, we take care. And also Dasha is there. This is also proactive monitoring tool where we monitor 1 GB and above, sometimes even 100 Mbps above also. Some circles will ask us to monitor few branches of the customers. We do this is a proactive monitoring tool. BT Pro is the one which can test whether fault is at last mile or PE side or cloud side. This is also given to call center. Throughput monitoring software. Now I'll talk something about what is coming in future. This is super edge routers. 190 routers are coming, including MTNL. And it has got 100G interface. This is the biggest advantage. What Rajesh Agarwal sir was telling, you all are going to get super edge. Please help in providing infrastructure like power, cooling, AT and all. Your cups BNGs can be integrated. All your caching needs like Google, Facebook, no, we are not able to provide because we do not have 100G interfaces. Probably with the super edge, yes, we'll be able to meet all our caching and cups BNG, which certainly will improve FTTH speeds. And it is going to replace 7613. Yes, I don't know. It's still 132 7613. 76132S routers are there. Their security vulnerability is there, and also it is outdated. It doesn't have 100G interfaces. It cannot grow beyond some point. Replacement is planned along with this one. And we are going to implement software-defined network. Some gentleman was asking whether we are ready for software-defined network. Yes, we are ready for software-defined network, provided super edge router should be deployed. And it is a centralized EMS is there, Pune and Bangalore, and also What time frame? for that, you have to give claps to our PJ BCD Venkateswar sir Pale. PJ BCD, the first person to power on and put through the router. Sir, big round of applause, sir. Across India, some BA heads will take forward call. We are with them because ये तो 80 तो चलता रहेगा कितना time wait कर, because these are ASR series routers. Already हमारे network में ASR series are working. I'll tell the roadmap, sir. You got legacy routers are there. These are the super edge powerful routers, backplane capacitor 2 dB, 3.6 dB, 100J. This will be parallelly installed. First up, cups BNG को integrate करो because that will improve FTTH speeds. Second, caching demands are very heavy, like Google caching, Facebook, Akama. Everybody is asking, give me 100G. We'll be able to improve your FTTH speeds. So इसको कर सकते हैं. Then if you are touching with commercial customers, उसके लिए थोड़ा 80 के लिए wait करना पड़ेगा. Because there are some other formalities of integrations with. True. I know cups BNGs are even having 100G interfaces. Unfortunately, we are limiting with the 10G only. Some places even 1G because of this expansion delays. Yes, cups BNG certainly we can do, but this PE should be connected to core router. I think next 30 days should be okay, sir. Things will be 100Gs. 100Gs are there. I can take this requirement, sir. There is no shortage in core network. Technically, no, but ek do jagah mein we can divert the cards and adjust. But I always encourage you to commission super edge routers because the interest of FTTH speeds and also organization material is aa gaya. I think 4 mahine ho gaye material dal ke. Our installation by almost 50 sites it is done, and 8 routers are powered on and connected to MPLS NOC Bangalore Central EMS, and the first route is Bangalore BZTD router.
SAR को भी थोड़ा दिक्कत आया था because power का issue था. One of the old router has been shut down, migrated. That power has been used for new router. Probably if SSS are coming forward, certainly we can make it fast. Think that we can resolve it, Ravi, that. We have received Another the- 1 week time. I Yes. told them that old one will shut down, no? Shut down already. That we'll connect it. Power has been Uh, used. that we'll And there accept is a one more perception that it is going to consume 170 amps. This is what vendor said. We have seen in Bangalore with the help of SAR, it is taking only 50 to 60 amps. Normally what happens that the manufacturer Cisco from US, he will tell his requirement is 40 amps. When it comes to system integrator Pristo, why to take risk, he will add another 40. Then when it comes to our partner TCL, again he will multiply into 2. So naturally it has come to 160 amps or whatever they are telling, but it is taken 50 to 60 amps only in operational condition. multiplication only, we got scared and everything. It is going to No, no. 200 amps, sir. Not only you, sir, many people are scared here, but you can be comfortable with the 50 to 60 amps, sir. We'll do it. We'll put through. we have received this SCR1 in September, but it is not installed yet and there is no timeline. So when it is to be installed, we actually need it early. Anyway, sir, This is Hamirpur, Himachal. This is in Hamirpur, anyway, sir, you Himachal. can switch off the camera. I can tell the actual. So we have given purchase order to TCIL. TCIL is also one more government company. So nothing much we can do. They are to engage somebody. Actually, they are buying power cable from X company, giant kit from Y company. Router alone came from Cisco from US that has been delivered. जो बाकी वो rack वगैरह है ना, there was some delays from their side. But however, they're going to cover it up now. We need it badly. आप corporate Hamirpur, Himachal Pradesh. एक्चुअली सर मेरा काम ऑपरेशन, जब आदमी चल रहा है तो दौड़ा सकता हूँ, बट Okay, आदमी सो रहा है तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। So, तो आप आपका प्लानिंग सेक्शन से थोड़ा लेके प्रेशर डालना पड़ेगा उसका पावर आउट करने के। Agarwal sir. जो भी है सर आपका बैठ में है सर, आई कैन नॉट टॉक बियॉन्ड सम पॉइंट है, so we'll make it fast. Like South they have taken lead, like Karwar also that GM has come forward. Some of the people wanted to install on them on their own also. That is the enthusiasm people are having in the field. Certainly we'll escalate. I'm sure next couple of months, that means all routers will be up. And हमारा इसलिए गरीब रहता है, MTNL के भी हमको करने के लिए बोल रहा है अभी, MPLS NOC operations उसका router install करना. So our workload is increasing. That could be one factor. But however, next 2 months is the time frame. CMD साहब गोद मारेगा if it is getting delayed, because this is linked to your 4G. Same supplies are linked to your 4G also. So nobody can stop 4G e-nodes commissioning. Sometime back, and also has to come, OTN has to come, Super Edge has to come. Then only we can roll out 4G. 4G is the top priority of the government. So you will get support indirectly from mobile. So certainly routers will come up. So the greatest advantage of this one, sir, earlier you want to test any 10G to a customer through bandwidth, throughput. I used to set up a big rack of 200 kilos throughput tester. I used to give fiber to PE router, then PU to suppose indoor loop back and all we used to do. Today you are fortunate to have handheld 10G testers. That is equal to the size of laptop, maybe height of double the size. Portable handheld testers, I think the material is already delivered. You are very comfortable to test any speeds. You can test any speeds like FTTH, VPNs, or your CPAN to core, core to PE, whatever fashion you want to test. This is a small handheld test. Each circle is probably with the 2. And this time 100G ports, this is the greatest advantage. And one more thing was all the PCs in our node in charges who is using are very old. We have seen somebody is using 2007 Windows and all. This time we are providing a PC, a dedicated PC with the latest whatever is possible to all node in charges along with the Super Edge routers. And it has got all security features also embedded. We need not worry much because 7613S are prone for attacks. So I think this replacement will help us. And we are also going to have super cyber security solution. I'll talk on this if time is available. How much time I have left with? 5-10 minutes. Right, sir. Anyway, I'll try to talk on to the latest subject, cyber attacks. Anybody can give example of cyber attack? Huh? Or DDoS is one attack.
stealing of data is second attack, SQL injection is another attack. And I don't know, when we were ADDs, all of you might have passed 25, 30 years back, there used to be Chor Bazaar in Delhi. Whatever you want, you can buy, no receipt or throwaway prices. There is a dark web available. So unfortunately, couple of days back, some of BSL customer information also floating there. Your mail ID passwords are also floating. They are selling for $10. So we are also capable enough to see dark webs now and to protect our BS infrastructure. Most of the time, what hacker, I'll give one small example. All Indian Institute of Medical Sciences was hacked some time back. I don't know, 1 year back, all must be aware. Any attacker simply cannot enter. First, he will make a strategy. He'll try to get access. First, he will breach firewall. Normally, every data center will have firewall. Then IDS. Then he'll enter into a server. They'll enter into the root. Then he'll insert some small malware program. So all of a sudden, that program will take control of that entire system. Next, he will send you the mail or approach you for what is that, some ransomware. So you pay this money, I will set to right. Or in case you don't pay money, he is going to sell this information in dark web. This is the what hackers will do normally. And best hackers are available in Ukraine. One of the reasons Russia could not win is because Ukraine hackers are much powerful in IT industry. The GPS doesn't work. The radars doesn't work properly. That's the technology they have. So in BS also, we got very critical infrastructures like your broadband NOC is there, MPLS NOC is there, your CDN platform is there, or your NGN network is there, or your GSM data centers are there. If something goes wrong, first of all, we lose the fame, name and fame. That's the goodwill is very, very premium than losing money. Second thing, your operations are stuck. You don't know what to do because what is that recently we had Corona is the vaccination dal sakte hai. Iska, I don't know, India is very bad. There is no medicine for this type of attacks. So only thing is you should be alert 24/7. You should monitor your network. And when somebody breaches firewall, that stage itself, you should prevent. Somebody inserts a software in your server or malware, you should detect and remove it. This is how we will not allow or will not lose the time of 30 days before the attacker attacks. So all this information is available in some areas. So we got one wonderful cyber security solution. It's a basket of best products. I can say Checkpoint, you must be knowing this is the best product from Israel. Why today Israel is very strong in being a small country in a big rich country places is their technology nobody can match. They built an iron dome. If any missiles are coming, yes, they'll detect within 2 minutes and smash. Same way we are going to build iron dome for BSNL with cybersecurity solution. And I think this may not be appropriate at this stage, but it has got various components. I'll just try to tell the features. It has got HTTPS filtering. Suppose government will ask you to block some website. Suppose some crime site is there, terrorist site is there. Today, we are not able to block HTTPS sites. Yes, in future, we'll be able to block. We are able to block only HTTP websites now. And second thing, it has called BDSA, Big Data Security Analytical Tool. This is a basket or bucket of water containing all crimes in cyber range happening globally. So we have an agreement with the product where a complete information analytics are happening. Suppose somebody is attacking some bank in Canada, yes, we'll know the information. Somebody is attacking some data center or mobile. I do not know, some Canada, some mobile network was hacked by some hacker some time back. So this intelligence and all will be doing. We got a manage MIDR, we call manage instant detection and response platform. This is much, much better because this is connected to all SIEMs, whatever we have in BSNL. Its job is continuously scan, detect, and tell you to prevent, or if you allow, it can also prevent. Somebody somebody attacks your firewall, yes, this will be able to know it. For that, you have to implement where they call FI, FIM, file integrated monitoring software is there that has to be put as agent in your server or firewall or IDS or whatever devices we have. That will be checking whether somebody is trying to tamper. Normally, we all know this antivirus, Kaspersky, Norton and all. These are different scale or small in nature, but these are very big scale. At the dark web, what I was telling, no, you want to buy anything, you want to sell anything globally, this has got no face. In fact, I cannot access also. But part of the cyber security solution, they have tie up with dark web, we'll be able to do.
Recently, we found some of our customer information is leaked, and SQL injections are there. We see vigorously trying to inject SQL injection is nothing but they will come and install a SQL sub program which will tamper your indexes, tamper your tables, or manipulate the databases. So these are all very predominant. We are hoping that in future we'll be able to do much more. Zero-day attacks are there. These are nothing but a new software, like new router is installed. If there is a bug, hacker will try to hack it. So this will be able to detect and prevent it. And intelligence gathering, constantly monitor, prevent before attack is the motto of this one. Maybe next couple of months this will be going live. If you got any IDC, if you got any, maybe probably BA heads, maybe having less requirement. Future customers also will ask. Security as a service, yes, we'll be able to provide proudly in future. So anyway, sir, I'll try to wind up now as time is running out. This is how we have grown 2019 to 23. It is like reverse pyramids. Customer growth is increasing, backbone links are increasing, internet is going 4 TB and above, and service links also are growing. And anyway, sir, this and all caching also, if you see, it is growing 700 to 4 Tbps. This our efficiency is increasing, but I also request if you got any young dynamic J2S or SDs, you can send on deputation to MPLS NOC because we can do wonderful things for the country. Most of the time I found, anyway, nowadays things are different. All are working hard, but this requires some work where it is more of brain related things. And anyway, sorry to say that I got one of the ST who worked almost 15 years in the field. He was doing outdoor trench, tempo van, mazdoor ko leke, diesel dal ke, bahut mehnat kar raha tha. With a lot of effort, I was after my CGM to post that person. He has come. I put him in anti-DDoS. He's not able to do anything. मैं बाद में उससे पूछा पहले क्या काम कर रहा था. He said he was really good worker. कंप्यूटर का कुछ काम किया, yes sir बोला. क्या किया मतलब OTP डालता था कहता अटेंडेंस. So this is so this is a ground reality we have to accept, but still we are very happy that our technologies are really wonderful. In fact, other operators cannot match us. Unfortunate thing is we are not knowing how to groom the system and use to the best. Anyway, our best efforts are being there because Bangalore is the knock of all broadband knock, MLL and OT and CPAN, you name. Everything is in Bangalore. One good thing is all Bangalore people are very good, hardworking, sincere, and also travel long way from Bangalore to LTDC to talk to you. Any questions to you, sir? So these are the examples. Anyway, it will take some time, but anyway, these are known to most of you also how you face customer issues. Somebody will tell one case. I'll give one nice example. There is a High Court of Andhra Pradesh, Amaravati, where they normally, Patna se koi hai kya idhar? That judge is to tell तुम्हारा GM को arrest warrant करके लेके आओ court में करके, because whenever they don't get that VC and all. So they were not getting that VC, Hyderabad High Court. So we were breaking our head because Vijayawada is close to Chennai. Our STR maintenance also is very good. Voting is up. Everything is good. 2 दिन लगा था. Then वो judge बोला DCM को court में बिठाने के मतलब they'll simply ask वो DCM को पहले court में बैठना पड़ेगा वो. And he has to see what is happening, call and all. Finally, when we found it's a very strange issue. The IP pool of that, whatever may be. Actually, one more thing is, even though we all promote Make in India, they have gone with one Blue Jeans. It's a Singapore-based company who was providing video conference facility to that core. Normally, we know Google Meet or maybe Microsoft Teams and all, but they got with some security inbuilt Blue Jeans. The server is hosted in Singapore. Uska services are catered from Ernakulam. सब खुद ही 400 millisecond latency induce कर रहे हैं उसको. Packet from Vijayawada will go to Ernakulam, Ernakulam to Cochin, Cochin to Reliance, वो कहाँ जाके पूरा दुनिया गोल मार के सिंगापुर आ रहा है. So when we removed that IP advertisement from Ernakulam to Chennai, problem solved and all are happy. So this troubleshooting is not as if what we envisage in internet. It requires a lot of things. Sometimes somebody will tell, anyway, lighter, sir, I am from Andhra, I can crack jokes and Telugu people. Anybody is there from Telugu?
Oh, nice meeting you, sir. Namaskaram. So one day what happened, our Chandrababu Naidu is a technical, he's much advanced IT and all. So he wanted one website to be launched when he was in power. So AP में एक website launch किया, www.ap.gov. Something else, NIC dot com is there. CJP को call है, site is not working. और अगले दिन चंद्रबाबू नायडू उसको क्लिक करना है. You will not believe, he was IAS person who was heading this. All 20 people were there in his room to troubleshoot. Finally, it has come to MPLS now. Normally, हमारा दिमाग में कैसा चलता है, मीडिया को चेक करते हैं, पी राउटर में CPU चेक करते हैं, otherwise, and वो URL टाइप करने पे काम करते. Same URL when you type from Bangalore, Vijayawada, of course, नहीं कर रहा. Then 1 hour हो गया, उसके बाद हम रिमोट का एक्सेस किया वो कंप्यूटर पर. तब पता चला वो IAS जो भी है charge for IT, he typed wrong URL. Page not displayed, and all 20 people are including BSL के 5 लोग. So anyway, lighter side, if there are any questions for me, I can answer. Thank you. कोई क्वेश्चन तो धन्यवाद सर. धन्यवाद. Sorry. Mr. Rai Kumar. So no questions, I think from my side there are no questions because we are in Bangalore, we are talking very regularly. Other people they may be having. I But, request. But Yes, sir, the certainly. one thing is, dear friends, wherever Rai Kumar is available, he changes the total environment. Very good. So he is such a. तालियां रवि कुमार के लिए तेलुगु में देना, तेलुगु में. Because we interact with him many times and daily in Bangalore and many occasions that we have that privilege. But he is such a very hardworking person and everything, and he takes care. All these IB customers, our important customers and bandwidth management and everything, as and when we are having some problem, the entire team, they are doing very hard work. I think with the new incoming equipment, so whatever that modern equipment, what we are planning, I think with that our network became a super powerful network. So we can have a better experience under your operation and maintenance of the MPLS market. Okay, thank you. Yeah, yeah. Sir. Yes, sir. Kindly do something to improve the speed of e-officer. I don't know whether it is relevant to you or not. E-office. E-officer. So there is one PJ called Marina Judge in Karnataka Circle. One day she called me morning 7 o'clock. I'm a principal general manager finance. My e-office is not working. What you are doing, Ravi Kumar, technical people. So answer is simple. E-office is common. We are. Otherwise also, madam is very good. I told madam a packet or URL will not recognize who is the person. Your finance or CJM or CFP, किसी को काम नहीं करेगा. Second thing, we deep analyze that time what we found, there is a router in the corporate office, even BC was not working properly. It was high. Initially 100 MB is the pipe connected from Kidwai Bhavan to corporate office. Then the firewall was overloaded. Now e-office is shifted to some other site. I'm not sure. Earlier it was, I think वो Ghaziabad में हम protest कर सकते हैं जो भी इंचार्ज है. I think all our IT is in Ghaziabad now. Your SAP and all. Huh? Yes, sir. Actually, sir, any slow speed, there is a CPU, there is a program, there is a database. If it is not working properly, yes, slow speeds are bound to happen. Then comes the network. Normally, हम लोग ऐसा आदत हो गए, जो भी हो गया, MPLS में fault है करके बोलेगा पहले. Then we'll try to prove that speed is not a problem. There are some factors like local LAN, WAN, firewall, IDS, high CPU, or maybe indexing. E-office का government कहना है, sir, I think. NIC तो nobody can reach. NIC के भी एक example था. I forgot first example NIC only. Some customers say that they are not getting one site. NIC has got connectivity with PSL in Hyderabad and Delhi. They don't do broadcasting properly. When we shut the link in Hyderabad, customer को started getting services. मतलब I can give many examples are there. But yes, we will try to take up. E-office सबके लिए problem है. आप E-office में क्यों ज़्यादा काम कर रहे हैं सर? ये मेरा personal doubt है. CMD साहब ने बोला फील्ड में जाके कस्टमर एक्वायर करो, दैट इज द जॉब ऑफ ऑल.
जो भी ई ऑफिस है SAP है सर्कल ऑफिस का काम है टेंडर प्रोक्यूरमेंट एक्चुअली CMD साहब वाज देयर इन बेंगलुरु सम टाइम बैक वो आप IFA है सर ठीक है सर ओके मेरे ने जैट मैडम को एग्जांपल करेक्ट लग रहा है आपको भी थैंक यू वेरी मच हाँ This is a mystery, like why we are getting intermittent interruptions in the speed for short period, say 15 seconds, 1 minute, throughout India in internet browsing of FTTH and broadband customers. Yeah, recurrently in a day. which area सर आपका Every area in India it is that. नहीं इंडिया विल नॉट है मेरा घर पे तो अच्छा काम कर रहा है Kurnool. So this is the experience. మీరు కర్నూలు తెలుగు వాళ్ళ సార్ అవునవును. ఓకే సార్ మా ఇంట్లో కూడా FTTH యూస్ టు గో రెగ్యులర్ली faulty नॉट रॉन्ग हियर वो आपका OLT ONT भी हाई CPU से भी ऐसा होता है साहब ने रेक्टिफाइड इन आवर ओन कंपाउंड वेयर वी हैव गॉट 200 BSNL एम्प्लॉइज एवरी टाइम स्लो स्पीड 15 दिन में एक दिन सोता था वो पूरा FTTH नेटवर्क साहब आके थोड़ा मैजिक किया दैट इज एक्सेस साइड then your IP pool advertisements are very important suppose your Kurnool ka PNG I don't know PNG is there sir Kurnool Yeah. Kurnool PNG IP pools I think Hyderabad the team has taken up to regulate and streamline IP pools because the IP pool one block is in Kurnool another block in Hyderabad another block in Bhopal aisa kuch hai deviations could be a fact because IP pools are dynamically allotted to customers so by mistake that the wrong IP gets allotted yes speeds are likely to happen or Kurnool BNG may be very old BNG, they are also getting overloaded nowadays. You have to wait for CUPS BNG. Actually, that internet problem, there is no single solution, sir. It is not like Andhra में single window solution करके चंद्रबाबू introduce किया, ऐसा नहीं मिलता internet के लिए. Ravi, that is one more issue that in Bangalore also we are facing some parts of that, our area. They suddenly dropping to zero and again rising up and other things. As and when I'll ask one sincere question. How do you test speeds? किसका? कहाँ है वो? Ookla. Ookla अमेरिका का है वो चीट भी करेगा हमको. Because we have to pay some money to Ookla. Our test is by the customer itself. The customer That's what sir. What Reliance and all are doing. नेल्लूर में कर्नूल में एक छोटा सा सर्वर लगा के Ookla सा लाइसेंस लेके रिप्लेस फ्रॉम कर्नूल. No, that is I think now it is getting now in our Now local BSNL server. is also deploying servers. True. They are going to maybe some BA heads and all. Maybe some big like Vijayawada, Nellore and Kurnool they may take up. Where we have to keep our own server, that server should reply. Actually, that is not at all internet. It is only packet sent from customer premises, looped by a server in Nellore, back to Nellore customer, we get Talia Lagata. Actual internet is totally different. This is how others are doing, probably BSNL also trying to practice. We also tried Ookla some time back. That's what Ookla, what happened? He started giving Airtel speed is better than BSNL advertisement there. So that was stopped. Ookla free mail liya to it is not good. We have to pay and take it. But I think CFA section has taken forward for the speed test. Speed tests are only to mess with. If you go to any act, he will come with 300 Mbps demonstration. He will simply loop that packets within the city, not even going out. And customers will feel the graph dekh ke wo acha lagega. Unfortunately, we are not able to show the graph, but we are able to feed perfect internet to the customer. That is only genuinity what we can claim. खरीद लिया अभी इसने अभी सर 8 or 9 we are also putting DNS in all places, CGNATs in all places, and also speed testers also in at least per zone 2 to 3 they are keeping. This may improve customer experience. Right, sir. Thank you very much and good evening to all. Thank you. धन्यवाद सर. सर ने IPMPLS पे एक बहुत अच्छा सेशन, नॉलेजेबल सेशन हम सबको दिया और बहुत सॉफ्टली दिया. और सर को ऑनर करने के लिए इसके लिए हम एक बार जोरदार तालियां बजाते हैं. और सर को ऑनर करने के लिए मैं BA हेड बेंगलोर सर से अनुरोध करता हूं कि सर डायस पे आके सर को ऑनर. रवि की हिंदी बहुत अच्छी है. रवि की हिंदी बहुत अच्छी है. थैंक यू सर. जब ये कहते हैं ना इसके लिए चाहत है इनकी तो ये हो जाएगा.
So I'm proud to take from Sar. Sar is known as Sar is our mentor in South May. And Sar was also declared one of the top leaders who has done more bolt installation, no, sir, last month. Okay. I want to take from both of you, sir. Please come, sir. बस एक फोटो MC लेते हैं Singh, sir. हमारे भी. Okay. Yes, thank you very much, sir. Thank you, sir. Thank you. 15 मिनट के लिए टी ब्रेक पे जा सकते हैं, उसके बाद डायरेक्टर साहब आ रहे हैं, रास्ते में ही है.
Business, BSNL board, Ramesh, all senior officers on the dais, ladies and gentlemen, and my distinguished participants. In fact, it is with a great pleasure and honor that we are gathered here today for the interactive session featuring the Director of Enterprise Business from BSNL board. Sir, before we start, I will like to apprise you about the happenings of today's, especially in the enterprise session. The day started with the session by Dr. D.N. Katyayan, where he touched the topics like strategy for revenue growth, pricing, empowered committee on tariff, and some of the EV cases. Then that was followed by session by Sri Upendra Tiwari, GM, BSNL Corporate Office, and his sessions included lease circuit service delivery and service assurance, which was again followed by Sri Ashish Tayal, sir, GM, Immersis, and he described about VSET and Immerset. Then the important session was followed by none other than the Sri N.K. Goyal, sir, PGM Enterprise Business, where he touched evaluation of enterprise business and EV products, analysis of sales funnel, works under enterprise vertical and escalation metrics, and important details about CPNE and the CPP policies. And after that, the session was followed by Sri Rajesh Kumar Agrawal, GM, BSNL Corporate Office, on the topics overview of BSNL core network and expansion plan, which was finally followed by Sri P. Ravi Kumar, GM, MPLS NOC Bangalore, who dealt with the introduction of IP, MPLS, SDN, and SDWN in BSNL, new services and support extended from the MPLS softwares, some applications of security aspects, all these things. Sir, these are in sorts the happenings in the today's sessions. We started from the morning till now by the EB Enterprise. Before we proceed, may I have the privilege to request all the distinguished participants to give their introductions to our director, sir. Please. Good evening, sir. I am MC Singh, BA Head, Chandigarh. Very good evening, sir. Myself Tashi, IFA Leh, BSNL J&K Circle, sir. Good evening, sir. I am Yash Panekar, PGM, BA Head, Nagpur, Maharashtra Circle. Good evening, sir. I am Nilesh Shah, IFA Ahmedabad, BA, Gujarat Circle. Good evening, sir. I am Sanjeev Singhal, PGM, Indore, BA, Madhya Pradesh Circle. Namaskar, sir. I am AK Gautam, BA Head, Amritsar. Good evening, sir. I am Viji, IFA, Mangalore, BA, Karnataka Circle. Namaskar, sir. Myself SC Bundela, IFA, GMBA, Hoshangabad, MP Telecom Circle. Good evening, sir. I am Rakesh Chandrakar, BA Head, Raurkela, Odisha. Good evening, sir. Myself Pulkit Agrawal, IFA Gorakhpur, BA, UP Circle. Good evening, sir. Myself Manoj Kumar, IFA Lucknow, UP Circle, sir. नमस्कार सर, मैं अजीत कुमार, बीए हेड हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश। नमस्कार सर, मैं सूर्यकांत सिंह राय, IFA BA सागर, MP टेलीकॉम सर्कल। नमस्कार सर, myself G Ramesh, BA Head, Kurnool, Andhra. नमस्कार सर, मैं श्याम गोपाल खत्री, IFA प्रयागराज, UP ईस्ट। Good evening, sir. Myself Shyam Singh, BA Head, Agra. Good evening, sir. I'm Mauritius, Meghalaya, BA, IFA.
नमस्कार सर, आई एम नीतीश सिन्हा, बीए हेड सुल्तानपुर यूपी सर्कल. नमस्कार सर, आई एम BK Gupta, BA Head Ujjain, MP Circle. गुड इवनिंग सर, आई एम सलील कुमार, बीए हेड तेजपुर आसाम. नमस्कार सर, आई एम दीपक गुप्ता, PGM रेवाड़ी, हरियाणा. नमस्कार सर, myself PK महापात्र, GM बालेश्वर, उड़ीसा सर्कल. नमस्कार सर, मैं सुमित दुबे, IFA सीतापुर यूपी से. नमस्कार सर, MKV राव, GM BA सतारा महाराष्ट्र सर्कल. Good evening, sir. Myself Manoj Kumar Verma, IFA GMBA Satna, MP Telecom. Sir. Good evening, sir. Myself Balbir Singh, Bahrampur BA, Odisha Circle. नमस्कार सर, वेंकटेश्वर्लु, BA Head Bangalore sir. Thank you, distinguished participants, for your brief introduction about yourself. Now, there is one presentation session by the team. I will request them to give their presentation. लगा दीजिए. Maximum. Yes. थोड़े से points हैं. Presentation. The entire group, sir, sitting together. Okay, so no problem. PPT लगा दीजिए. आप बढ़ाते जाइए. Good evening, sir. My team comprising officers from Sitapur IFA, GM Rewadi, and GM Balasore, and myself from Tejpur. Sir, we have prepared presentation. In the full day, we learned about more about EV. Most of our queries has been already answered by the previous lecturer, but still there is some problem we are facing in the field that we are going to present. Before this, sir, here is some statistics of the Assam Circle. Assam Circle EV target is 85 crore and achievement is 55 crore, in which my BA, Tejpur, new business target is 3.35 crore, but achievement is 0.18 crore. Existing business is 4 crore target and achievement is 0.5 crore. Retention business target is 3 crore and achievement is 0.76 crore. Private business target is 0.9 crore and achievement is 0.22 crore. This is my Tejpur BS. Assam Circle, my BS. Next. This one. Ji.
but sir, we are facing day-to-day problems in the field for increasing the business. That is always coming the hurdles. तो सर इसमें जैसे हम लोग जैसे रिटेंशन बिजनेस में करते हैं तो रोड वाइडनिंग के कारण केबल जो कट रही है हमारे एसएसए की। जी जी जी। और सर उसमें क्या हो रहा है कि जैसे सीएनडीएस की केबल दूसरे पॉइंट में देख रहे हैं कि सीएनडीएस की केबल ही हमारे कट रही है। तो उसमें सर ये हो रहा है कि हम लोग जब भी बात करते हैं तो वहाँ पे बिजनेस लेने जाते भी हैं तो वो बोलते हैं कि आपका मीडिया बहुत डाउन रहता है, आपका केबल कट रहता है। तो उसका सर ये है कि वहाँ पे आसाम में रिंग स्ट्रक्चर नहीं है, सीएनडीएस का भी रिंग स्ट्रक्चर नहीं है। जैसे हमारे यहाँ से जो तेजपुर है वो दो रास्ते से केबल जाती है, एक वाया गुवाहाटी होकर जाती है, एक सर डिब्रूगढ़ होकर जाती है। जी जी। सोल्यूशन सर ये है कि कुछ हमें रूट्स हमें अगर मिल जाते हैं सीएनडीएस को। देन ये क्यों रखा था? जी वही सर, उसमें सर ये हमारा ये कहना था कि जैसे मान लीजिए चलिए नेटवर्क की बात हो गई, दूसरा सर ये हमारे यहाँ एक्यूट बैंडविड्थ का शॉर्टेज भी है। तो हम लोग जैसे अगेन आई एम जी रिपीटिंग, केबल कट रहा है, जी 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 उसके लिए क्या कर रहा है आप लोग? सर हमने रिहैब के लिए कुछ सर्किट मांगे थे, प्लान हमारा करीब 100 किलोमीटर के आसपास था। तो उसमें से लास्ट ईयर हमको मिला है जो 16 किलोमीटर मिला था तेजपुर में। अभी सर हमें दोबारा रिप्रेजेंट किया है, मीटिंग हुई थी सीजे मैम के साथ और सीएनओ सेल के साथ। तो हमें कुछ रूट और मिले हुए हैं, तो सर लास्ट मोमेंट मिले हैं। तो हम लोग अभी करीब 27 किलोमीटर और मिला है, तो उसको हम लोग मार्च तक करेंगे तो हमारा इम्प्रूवमेंट आएगा। अभी दो चीज याद रख लीजिए, वन इज द लेइंग ऑफ द केबल, अदर इज hiring the cable. Nowadays you have to concentrate more on hiring the cable from the other operator instead of laying the cable. Laying the cable is very expensive. If you suppose in case if you have got some other service provider, you are having the fiber network, you can hire, and some of the places they are hiring, and we are giving the approval also. Such things you have to look out. जी सर, वहाँ मुकुंद फाइबर, मुकुंद कंपनी है, वो फाइबर देती है। तो एक हमारे यहाँ दीफू जगह है जहाँ से हमारा केबल अक्सर पेरेंट हो रहा है। तो वो उनका सर एक्चुअली पूरे हिमाचल में पूरे जो आसाम में केवल सर हाईवेज पे है, जो स्टेट हाईवेज पे आ रहे हैं उसमें उनका अप्रोच नहीं है। तो हमें अपना केबल तो लेना पड़ेगा सर। लेना पड़ेगा ये ठीक है, आप क्या किया था उस whether hiring proposal उससे negotiate करके रेट फाइनलाइज करके any proposal have you sent to the corporate office? सर जहाँ से हमको जी वहां तक उसका नहीं है सर, जहाँ हमें चाहिए है वहां तक That उसका is the केबल नहीं जाता। expectation from the corporate office. Field level BA units, they have to work aggressively instead of raising the issues and other things. They have to find out the solution. That is the expectation from the corporate office. Yes, sir. And you have to come out with some proposals. If anything help is required, we'll extend the help. जी सर। So we are sending some proposals, sir. We have sent it, some approval has been granted, but new route is As a not. BA head, आपका जिम्मेदारी है, पूरा आपका नेटवर्क संभालने का जिम्मेदारी है. It is not that you are only ऐसा रोल में नहीं आना चाहिए, just watching type of रोल में नहीं आना चाहिए. Ultimately, how to resolve the issues and what is the way forward and what are the solutions for that to resolve the issues also, you have to look at. Yes, sir. हाँ हाँ। थोड़ा आपका माइक आपका तरफ रखो. As you rightly said, we have sent a proposal from Rewari to Gurgaon from hiring of bandwidth from Realtel. रेवाड़ी में दिस दैनिक भास्कर का कुछ सर्किट काम कर रहा है क्या? जी सर, हमेशा वो कंप्लेंट आता रहता है. सर एक बार आया था सर, जब हमारे को उसमें बैटरी 24 से मतलब 48 घंटे वहाँ बरसात हुआ था, 48 घंटे से हमारा बीटीएस बंद था। बट व्हाट वी डिड, आई वाज टोल्ड कि आज ही करना है, तो वी हैव टेकन वन बैटरी फ्रॉम वन एक्सचेंज and restored it. That was the basic problem, but it was not a continuous problem. And I had monitored personally for last
since then I monitored for 2 months. It never went down. So we have sent a proposal of rail from Rewari to Gurgaon, because Rewari to Gurgaon route, not many road widening things are going, particularly at Gurgaon. So we are that is the nearest station from where we are getting connected to internet through OTN at Rewari. Now we are going to Rohtak and coming to Rewari. We are going to Alwar and coming. Already proposal based the corporate office. Yes, sir. Okay. And nowadays there is some slight restructuring happened in the corporate office. CNO we bifurcated into 2 units, CNO1 and CNO2. CNO1 is looking after the equipment portion. CNO2 is looking after the fiber portion. So this case goes to fiber portion. Mr. Sanjeev Sharan Agarwal, you please coordinate with him. So, हाँ सर हमारे पास मिल जाए वो तो खैर इशू ही नहीं नंबर एंड वन मोर थिंग आई जस्ट वांट कि कभी कभी जैसे ऐसे इंटरप्शन आता है तो हमारे को तुरंत रिएक्ट करना है तुरंत रिएक्शन के लिए हमारे को 4 फाइबर केबल डालना है एंड देन वी हैव टू रिप्लेस इट विद नॉर्मल केबल तो आप 4 फाइबर केबल के लिए कुछ मांगा था हाँ सर योर रिक्वायरमेंट दैट वी डिड but we stuck with 24 cable 24 fiber cable which we need to replace that temporarily you have to replace with 4 fiber as and when everything is over you have to make it a permanent arrangement to replace with 24 fiber. That is the normal trend way of the working. Okay, have you asked for 4 fiber? We asked for, we got it and we rectified the fault. But getting 24 fiber cable was problem at that time. But Rajesh Agrawal has told they have done lot of purchase order and lot of cable are is now come. So that was one of the point which we want to highlight कि हमको cable चाहिए होगा. But now since under your leadership, those many POs have already 24 cable already we have given so many times, and we are still we floated the tender yet to be finalized. I think by 15th of this month it will be finalized, hopefully. Once it is finalized, then we'll give that one. But as per the ERP inventory, as per the SAP inventory, still we see that almost nearly 30,000 kilometer fiber is available across India. So we'll go as per SAP only. If SAP is not cleaned up properly, then we will not give the cable. Yes, sir. We got that message very clear. I have a doubt, sir. The cable which came to us was for 4G saturation. We'll use it for rehabilitation and for capex. Can we use the same cable for maintenance? Which cable you are talking about? Sir, we got the 24 fiber cable, about 320 kilometers at Indore for 4G saturation. So Circle Office is saying that you can use it for rehabilitation work and other We capex never work. told that it is allotted only for 4G saturation. We have given and we have been giving. That's true, sir. We are using for all the development and operation work, but can we use it for maintenance? That is meant for all as per your requirement. Achha, that can be used for maintenance also because it is armored. Okay. We'll use for The maintenance. maintenance also there are the certain guidelines have been issued for armored 24 fiber certain guidelines and unarmored 24 fibers you can use for maintenance. For armored 24 fiber certain guidelines have been issued. So guidelines okay, you follow those things. So as per guidelines for maintenance we have to use unarmored. For rehabilitation and for capex OFC we have to use armored. Even rehabilitation maintenance activity also We have to, for that more than 2 kilometers and other things you should stringently follow only armored 24 fiber. That will use, but suppose we want to replace 300 meter, 400 meters. Then unarmed only we are giving. But in future everything will make armed only. We may not procure unarmed 24 fiber. Because cost wise both are same only. उनका presentation में almost similar queries है. The second point which we would we want to highlight is that our long distance or backhaul network is a bit unstable, particularly in Rewari we have 3 routes presently working.
one is via Rohtak, we are coming to Gurgaon. One is via Albert, we are coming to Gurgaon. And for going to MSP at Ambala, we are going to Rohtak. CNO section was not there. Take. So, but sir, LC and CNP were there. No. so I am in touch with Goel Sahab. So Goel Sahab, since he was earlier in Rewari, he was kind enough to add one route, direct route via highway. But the problem presently is there. The OTN is choked there. Today we got the presentation ki some equipment has been ordered, installed, and we are getting relief in congestion. But we want OTN badly, sir, because in Rewari no OTN is there. Rewari GA is not having any OTN. Not only Rewari, everybody wants OTN badly. Huh? It is pan India basis the requirement. So Mr. Rajesh has told ki it is coming soon. So that thing is certainly be taken care of. Then there is crisis in bandwidth availability. How many slides you have got? Sir, only 4. Huh? Bandwidth No, availability. actually, for presentations from any BA means you have to together you have to come out with some out of box thinking, and based on that you have to present it. And you are restricting yourself to Rewari, he is restricting himself to Assam, and that is nothing but local issues you are raising it. Local issues can be debated as per your presentation also. Because these issues are there for everybody, most of them. How many IFAs are there? Around 11, huh? 16 BA heads. So almost 50, nearly 40% IFAs, remaining BA heads. So here that is we have something to tell this person. Whenever we do for EV, we are finding some Mic on karo. Mic on karo. Start dates are higher, particularly when we start. ठीक है, आपका आवाज मेरे को सुनाई दे रहा है. ठीक है. जब हम शुरू में जाते हैं तो जो हमारे कंप्यूटर वो एकदम रैंडम फोल्ड करते हैं. फॉर एग्जांपल फॉर 500 Mbps लाइन वो 9 लाख हो गया. हमारा गार्ड रेट 19 लाख है. हमने ILL 12 लाख, 15 लाख और 14,50,000 हमारे तीन सर्किट चल रहा है 3 कंपनी में. तो हमारे को थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए कि उस टाइम हम हिट कर सकते. ठीक है, हम CGM has got full power, sir. CGM has got full power bidding. Powers have been delegated. There is no issue, but उसी टाइम पे हमारे को हिट कर रहा है. ठीक है, आपका CGM से कोऑर्डिनेट करके सर ऐसा रेट पे हम जा रहे हैं करके इंटीमेट करके कोट कर लो. Who stopped it? Even आप corporate office से ये देख कुछ ऐसा होता है जैसे वहाँ पे beyond CGM power वो बुलाते हैं और वही प्रोग्राम करते हैं. कई बार ऐसा कभी कभी कुछ मामले में we have given even 10 lakhs for 1 Gbps also. But 10 lakhs 1 Gbps, 500 Mbps, 8 lakhs is a very good rate. Then we find our team finds that we need some more vehicles in EV cell. We, as per your instructions, sir, we have deployed 4% or rather more than 4%. All of us, sir. We checked. We have deployed more than 4% staff in our EV vertical. That is total overall guideline. As per the business requirement, up to 4% you can deploy it.
If suppose in some area where that BA area, there is no business of enterprise business is not there, then need not deploy also. Depending on the potentiality of that area. Particularly, we have a larger area, then number of people, one number of people create, we feel it is less. So if that can be considered. Take a next. The transmission equipment reserve is required because many times we are very sure that this business we can garner, but हम उसको कब तक लगा देंगे जोड़ को? ठीक है, actually A1 A2 it is coming under a new MAN project. I think A3 and A4 is coming under the new MAN project. And in addition to that, under 4G rollout, all the most of the BTSs are equipped with transmission type of node. So in that you will be having lot of ports. So all the BTSs and A1 A2 and you will be having very I think availability in most of the places. And ENTA team that needs to be strengthened because what we are finding कि अगर एक बार इनका fault आता है, then हम अपने ठीक है, that is CNTX will see CNTX, but आपका BA का related में बात कर लो, ठीक है? हमारे लिए वो major problem है. Don't cross your area. नहीं सर, हमारा टॉपिक भी जा रहा है और Then CNTX will tell something about BA also. Anybody is there CNTX? Nobody is there. नहीं, this is BA head. So we would like to tell you sir, CNTX का कोई separate team हम मानते ही नहीं है, हमारे team में ही उनको मानते हैं, and we assist them whenever it is required. But we find कि उनको का constraint है, and they need to know. But they say that SSA level of transmission maintenance working is not proper. Our maintenance is better करके they say. Sir, if you come to ठीक है, वो that CNTX will see separately. और then morning itself, well have told कि BA specific SIs we are requiring, and he told policy 1 or 2 days they are coming with that policy, and they will give then in PD approval and authorization, one case I discussed with where we almost got the business, but due to some of the other reasons, we lost the business. The business was of 60 crore rupees, but it was we lost just because we could not match the offer with you and ASL. What is that business? Because they want take it next. Yeah. We want EV because it's a specific domain where we find out trade for this person. So if that can be potentially made, say two of our team is getting paid, then they can replicate. Like we are doing in motivational training. Two of my BA persons are trained. Now they are training everybody. Something like that is required. Hey, I think we see every Friday online. We are doing the capacity building trainings. So that I think that type of thing may be helpful for you also. That is going on. Yes, sir. I think you might have participated in that training also. I participated once, but we want. Okay, we'll try to do that. If that will required, I will start. And FRT teams for transmission, what we are finding, supply EV business is depending on
optical fiber quality and its predictability. FRT for this OFC cable is required to be strengthened. कैसा कैसा स्ट्रेंथन करने को बताओ। तो जैसे सर अभी हम देखते हैं कि हमने टेंडर में किया कि 200 किलोमीटर में एक व्हीकल होना चाहिए। When we are talking इसका पहले एक और चीज है, positioning of FRT team is the most important. Have you implemented that one? Yes. Your FRT team is going from the headquarters to remote places and coming back, and if that thing is there, then you will not achieve within 4 hours. First, you do positioning of the FRT. You should be placed at each and every place properly. सर 3 टीम हमारे यहाँ में अलग अलग प्लेस पे रखी है, अलग अलग जाती है। सर प्रॉब्लम इसमें ये कहना चाह रहे Anyhow, that data will be collecting from all the people where you have placed all the things, so that we are going to issue a separate guidelines for the maintenance aspect. ठीक है? सर एक पॉइंट है इसमें कि जैसे लीज लाइन का जो Because initial 2 years, because of COVID and other things, we are not touched. We got a cash flows recently around last year only. Since then only we started working in a different way. So we are procuring the equipment at this moment, and rolling out of these things also happening. Parallelly, we are working out the maintenance philosophy. Something we have implemented about the Preswell app and other things, so that only thing adaptability of these applications also in the field, that is also required. If that push also we are going to make, and unless any change is happening, and adaptability in the field is also important. Some people are adapting, some people are not. Most of them not adapting, because of that their movement will be captured. That apprehension is there. Then because of that Preswell app adaptability is not moving forward. So these things definitely will help for a better maintenance. So that anyhow will push the case. सर इसमें ये कहना चाह रहे थे कि ये जो लीज लाइन का हमारा लास्ट माइल है वो सब मतलब मिला के कब से 100 से ऊपर बढ़ता जा रहा है, और हमें कॉपर से कन्वर्जन फाइबर में कर रहे हैं। तो उसमें क्या है कि ये सर मतलब हर जगह जो है स्प्रेड है। तो अगर ये है कि अगर हम इसका कोई FRT जो है SDO बेस्ड बना दें, क्योंकि लीज लाइन सर जैसे रिमोट एरियाज में भी है, अगर वहाँ के SDO के पास अगर मशीन रहेगा छोटा तो वो तुरंत जाके ठीक करेगा। ट्रांसमिशन टीम तो 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। तो सर अगर हम FRT के लिए अगर थोड़ा सा हर SDO को एक स्प्लाइसिंग मशीन, एक OTDR दें तो हमारा ये जो रेस्टोरेशन की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। ठीक है, splicing machines and OTDRs and other things we are purchasing. Only it is on verge of delivery to the respective units. There is no depth of the testing equipment right now. Okay, and already order has been placed and it is under QA evaluation. I think hopefully it will get cleared and that delivery will happen. In addition to that, if OTDR is still a handy type of OTDR is required, that also will purchase it through GEM and will give it. But whatever we are giving, this is normal professional type of OTDR that you are going to get. OTDRs and these other things are splicing machines, there is no issue. If you want more, we'll give. But ultimately, what at present what is happening in the field, 70% almost being maintained by in-house teams, and 30% being maintained by outsourcing SLA vendors. So these 30% you don't require these testing tools or anything. So 70% is also shrinking to 60% also later on. So for 60% of your network, whatever requirement is there, that will be met. Thank you. Now open discussion, anybody can raise anything. Sir. In EB cases, very often it happens that customer is insisting for underground OFC. He keeps some requirement that if you give me underground OFC,
then I'll place order for this particular circuit. Doing tender every time and laying the OFC is a difficult job. My request is whether we can go for some sort of running tender. Some sort of, Running tender for OFC laying, which can be strata based. who stopped them? It is okay. Who stopped? Fine. I got the answer. And second is, I think SSA heads, they should function like SSA heads. sir, I have But it's been, not happening and sir. I have been doing it for last about 5 years, but some of my, senior and colleagues, they have restricted me. So I just wish to know whether I can continue it. There are certain guidelines are there, EB, whatever the, where you can incur the capex and other things, there are certain guidelines. If everything is meeting within that, you can go ahead. What is that? You can open a running contract and you do as per that. Fine, sir. And you have to anticipate how much it comes within a span of 1 year and how much work is going to come within a span of 1 year. That thing you can follow. Otherwise, you can go for 2 years also. So for that, you can open, you can place it. So this type of tender also helps me to keep check on the existing contractors. Because any contractor is not working, I can immediately terminate him and award the work to this fellow. Okay. Sir, next query is, last so many years, we have not been laying cables in urban areas. So many of the urban areas are technically non-feasible. We don't have our underground OFC. Whether we can submit some proposals under EB for extending the cable reach in urban area. Which area? Nagpur? Nagpur, yes. You can always, through your CGM, you can send the proposals. It will be categorized under EB itself. EB proposals, because If these. budgetary is required, then budget is required for you, capex approval also required for you. Fine, sir. Okay. I think for Maharashtra, we have approved something, I think. CNO is not there. They had to, I think CNO also should be part of the presentation also. Hey, something we can cut and CNO can be placed next time onwards. Agrawal ko le lo. Sir, at times, sir, Because these queries mostly coming for CNO related activities. LC nahi hai. Instead of radio, you can give CNO. sir, at times, ठीक है लेकिन प्रेजेंटेशन में वो सारी क्लियर राजेश अग्रवाल जी के गोयल साहब के प्रेजेंटेशन से बहुत सारी क्वेरीज क्लियर sir, at times EV customer want RF backup. At present, we can give RF backup using saying that some bank is there, and for bank we can request Bombay EV team to deploy one RF. So, corporate office can help us for giving 300 to 400 Mbps RF backup some vendor. You have got asset policy. You have got an open RF. This is OPEX type of RF policy. You have got a capex based RF policies also. Out of these, if anything is fitting in, you can operate those things. So, but in MP circle it is not there. Rajasthan also it was not there. In MP and Rajasthan it was not there. I was in Rajasthan 4 years back. Yeah, but circle has to finalize the vendor, na? Circle has to finalize the vendor. But if there is no vendor, there is nobody to. How You are from which circle? MP circle. MP. Okay, I will speak to your CGM why you are not finalized करके your B8 is. वो पता नहीं I don't know. Then we'll ask. किसी भी सर्कल में नहीं होगा सर. I मतलब है महाराष्ट्र में है. अच्छा. बढ़िया. But otherwise also as a business case it can value ऐसा you can. जैसे कोटा में सर मैंने एक ऑर्डर लिया था रेजोनेंस के पास कोई हमारा ऑर्डर नहीं था तो आई गॉट एन ऑर्डर विद द प्रॉमिस दैट आई विल गिव यू आरएफ लेकिन वो मिल गया था ऑर्डर तो फिर बाद में आरएफ नहीं लगाया हमने वी गिव द सर्किट ऑन रिंग Hard and fast है. Then you RF backup. And it will get what Whatever is required, overall business you are doing. so circle has to provide the vendor now. Giving a band said one band can be. If you are giving it 50,000 maybe nothing can be. It all depends. तो 10 लाख का था सर 10 लाख का लिया था पीआरआई भी लिया बहुत सारी ली थी
Sir, myself Tashi from finance side, IFA Lee, sir. There are so many Tashis are there, na, in Leh Ladakh. Yes, sir. You will find Tashi in every corner, sir. Everybody is a Tashi only. Yes, sir. Hmm. Uh, Because I know two Tashi. One is Tashi. Hunsuk and Gelson, sir. Hunsukar Tashi. Gelson, sir. Gelson. Batao. Sir, under BSNL board and under your guidance, sir. You so know many... me, I worked in Leh Ladakh. Yes, sir. Huh? Sorry, sir. I worked in Leh Ladakh. Yes, sir. You I know know, me, sir. huh? I know, sir. Sir, under BSNL board and under your guidance, so many initiatives has been taken to improve the customer services and experiences, like NAM, came, all those things. But one thing I would like to have is to enforce that customer premises visit by name and came, like for a billable amount of more than 1 lakh rupees, it should be done mandatory quarterly, sir. So while at the time of revenue realization, we can at least go with those certificates for realization. Otherwise, what happens, sir? कि तो पूरा साल आपका चला नहीं, आप पैसे मांगने आते हो. So these kinds of things we listen, sir. मेरा suggestion यही है, अगर हम इस जो it is advised in that policy, sir, but if it can be enforced, तो ये एक Enforcement क्या है? Revenue realization के लिए. यस सर, और एक कस्टमर के साथ रिलेशंस बढ़ेगा सर, ग्रीवेंसेस उसके दूर होंगे सर, एंड देन एट द एंड ऑफ द डे हमारा रेवेन्यू भी अच्छे से रियलाइज होंगे सर. NAMCAM already doing this type of job. NAMCAM only is the bringing the business, and they are if any service related aspects also only that is coming to NAM and CAM only. They are only coordinating. They are only resolving the issues that is happening entire pan India basis. We should make only thing in addition to the NAMCAM also being responsible for outstanding realization also. Actually, this type of model it will not work. In private sector, anyhow, they have to coordinate along with the OPC cell. Outstanding persuasion cell in finance it should be there. That's along with that, they have to coordinate and they have to get the business. But anyhow, it is a NAMCAM responsibility to coordinate only. But ultimately, it is the finance, IFA and the finance responsibility to collect the money. So at that time, we find very difficult to convince them, sir. It was working service. If we take quarterly performance certificate from that customer, it will be very easy for us to realize the revenue, sir. At the same time, though their grievances will get resolved so very soon, sir. There will be licensing. Most of the issues are coming because of SLA related issues only, and especially in the enterprise business. If you properly maintain the circuits, if you properly give the proper services to them, then if SLA related issues are not there, then things will be settled smoothly. Only the issue coming everywhere SLA. That needs to be handled by the BA units and circle units and CNTX. Then only things will be improved. And right now also it is doing that like that. The finance people, in case of an outstanding relation, they are going with NAM and CAM in association. We're talking to the customer. Sometimes we are getting back our customers. Some areas not. That it is going. It is Bangalore. It is happening. Sir, with respect to Bangalore, I am having one query, sir. This we identified the number of data centers and other things in Bangalore, where we are supposed to provide that connectivity, either on the with a ring connectivity. We plan everything. We have made it, sir. We have submitted the plan also to hiring that fibers and everything. It has come to corporate office. But now only one issue it is coming in between. These data centers infra maintenance vendors will be different from that actual that clients in the data centers. The infra maintenance agency will be there, who will maintain the data centers and infra power plant and the powers and other things, all those things. Whenever we try to enter into that data centers where the common room of that all TSPs will be terminated in that place, where we are supposed to put our POP there, first there. To terminate there, they will insist for that rack space cost. They are insisting for the rack space. Sir. Okay. This is a common problem everywhere in data centers. There is there will be MMR will be there. Meet my room, na? MMR is there. In that you have to terminate. You have to bring it and your fiber and you have to terminate. There for bringing also
there will be a duct and they may charge even the duct charges and other things also within the premises. So for keeping in the MMR room also, then that rack space and other things, they will be charging. So you have to work out what we are getting out of it and if it is reasonable or not, and you can negotiate and you can somehow bargain, and these things happened. We bargained to certain extent and we reduced the rates and we got it installed in certain places, Gujarat and other things. So that type of coordination is there. If any, ultimately you have to see how much we are getting, how much we are paying. Whether rate of return is okay or not, you have to see. Separately, I may not have the client, sir. Now that some places I am having existing clients and everything, okay, I can shift it. Sometimes. Business you have to anticipate, you have to go ahead only. Okay, yes, sir. Because they will insist for the 1 year or 3 years agreement. To the lock-in agreement, they will ask for minimum 1 year. So that some cost is involved there. That is. Earlier, around 2010, GMR is there, Hyderabad airport. At that moment, for entering in the airport, they asked something 50 lakhs or something. We negotiated, we reduced it, and we paid also. Everything you have to look at a business case. Okay, how much we are getting, how much expenditure is there any profitability within that proportion or not, we have to see. Accordingly, you have to take a call. Anything? Sir, in Himachal, we have an issue of old splicing machine. All our machines are 13, 14 years old. And now they are not. These machines are coming. You have to wait for some more time. Okay. This is a very basic problem and all else is all right. Okay, thank you participants for your queries and issues. And thank you, sir, for giving solutions. I believe that there are challenges and issues which are being faced by the head of BAs and IFAs. And I am sure that these discussions in this training will serve as a valuable compass, helping our BAs, IFAs to navigate these challenges with the confidence and agility. Thank you, sir. After proceeding ahead, if you have any queries, you can ask it. Otherwise, I will proceed. Are you permitting me? Okay, fine. Sir, so we are coming to the agenda. Keynote address by our director, sir. We would like to hear with you the new happenings in Board of Directors as a whole and BSNL as a whole in enterprise section. Please, sir. Good evening to all. In BSNL, the only main focus point is revenue generation. The remaining so many aspects will be there, quality of parameters, that thing, this thing, like that, so many things, so many verticals, so many areas of working. Ultimately, the focus should be given on only one main parameter, that is the revenue parameter. At present, you might have seen our revenue parameter over a period of 3 to 4 years, it is at a plateau of 19,000 only. That needs to be improved through various services only. At present, if you see the services, whatever we are giving, the products, whatever we are giving, only potential products are only two. One is FTTH, other is enterprise business. The remaining products, landline is declining and broadband is going down, and DSL broadband I am talking about going down. FTTH only there is a growth. Even though there is a growth, 50% is going to tip partner, and that also is there.
And enterprise business is the one way we have to increase the revenue. 4G yet to come. Once we roll out, only 4G revenues will come. The service rolling out and getting the revenue, it takes its own time. So at present, your focus should be the remaining months of this financial year. Your focus should be on these two parameters. One is FTTH, other is enterprise business. Kindly focus and generate the business in these two segments. And as you are aware that we have committed to the cabinet that almost 5,700 crores will be achieved in this financial year towards the enterprise business. Similarly, CFA vertical, similarly CM verticals also, they committed. Ultimately, there should be a growth of 20% compared to the previous financial year. That means the previous financial year, if you achieved of around 20,000 crores, it is the expectation of the management is you have to achieve at least 24,000 crores, 20% of previous. So for that, you have to work in a focused manner, in a planned manner to achieve these goals. Whatever constraints are there, constraints will be there. In spite of that, your hard work and hardship only will get the revenues. So for customer, the most important is the quality of service, is throughput and bandwidth is the most important for him. For FTTH customer, definitely it is quality of service. His connection should not get interrupted and he should get almost 24/7 type of service. In addition to that, once he gets satisfied with this customer, if all service providers are providing, giving the such type of services, then comes another thinking of the commercial aspect. He will compare with the tariff of other and this and other things, whichever is cheaper, and he will try to move towards that. If provided, if all service providers are giving the same type of service. One is quality of service is the one parameter, other is commercial conditions also, there will be a churn. Nowadays, a lot of Airtel and Jio also, they are providing lot of different means, these FTTF type of connections. They are laying, they are putting the pole installations and taking the fiber and in a structured manner, rather than BSNL in comparison with BSNL. They'll be providing and they'll be attracting the customer at lower rates also. So these types of challenges also there. In spite of the challenges, some areas we are finding that a lot of aggressive business they are doing and aggressive provisions are happening towards the FTTH, whereas some areas it is not happening. So the local leadership matters much. I request all the BA heads, they have to push, they have to be more pushy in their areas and they have to show their leadership skills and they should not work in a routine manner. They have to be, as a leader, they have to guide their team and with a team only they can get the results. So in a management perspective, 1 + 1 is not a 2. In management perspective, 1 + 1 more than 2. It could be 3, it could be 11 also. It could be more than that. So that type of team results should come from each and every area, be ahead. From corporate office, if you see, we know all the problems. So we cannot address the problems at a time, instantaneously. So it takes its own time. For that, whatever we are doing at present is, you raise some issue of FRT. You raised some issues of OFC maintenance and related aspects. You raised the issues of requirement of some testing tools and other things, so much material and other things also. Definitely the testing and material and resources, without resources you cannot get the results. It is our responsibility to provide the resources.
then we will ask for the results. That is the normal approach of the any management. So definitely we will be providing the testing tools. Either it could be OTDR, or it could be splicing missions, or it could be power meters anyhow delegated, you can purchase it. And all the materials will be issued. Even mini OTDRs also are being issued. There is no dearth of any testing equipment or anything. Coming to OFC, OFC material also will be providing it. And again, already provided. And the tender is there in a pipeline that we are going to provide. And SJC kits also we have provided. And whatever materials you are asking, we are providing it. In addition to that, these media converters also we are providing if it is useful to you. Whatever we have taken a call, we are going ahead. Media converters from our side, we will be delivering to all the points so that wherever fiber to Ethernet conversion is required and you can connect, you can put media converter, you can provide that one. These are the normal material. In addition to that, equipment side also, I think CNP might have told all the materials that Super Edge is being rolled out, that outlived already end of life expired. These Super Edge rotors are being replaced with new rotors. In addition to that, CPAN equipment is also going to come, where backhaul network and aggregation point and access point, these things are very much required. So that also we are going to give. That is under supply will start in this month. At least 25% of the whatever we ordered, that is going to come in this month. And for that, you kindly plan properly. The equipment room for that. All the equipment should be placed at a single point. One place only you have to keep all the equipment. Kindly plan. And all the transmission element, switching elements, everything should be in already for that guidelines have been issued. I think most of the places you may be doing it. If not, this CPAN equipment you plan properly at switch rooms so that all the equipments will be migrated to switch room. If not now, after some time. So planning of these equipments also very important. Kindly look at it in your BAS and all these places, so that unnecessarily we should not waste so much money towards the other towards the other infra charges, other infra connectivity. That is for AC and other things, we will be spending more energy bills that can be reduced. So in that aspect, kindly plan properly. In addition to that, OTN also we are going to give. That is tender is under finalization. Once it comes under OTN. So our core networks, as you are aware, I think CNP might have told, our core network consists of one is anyhow passive OFC network is there, or that the OTN will come, or that the edge super core and routers will be there. And the aggregation part is MAN network and CPAN network and access network part also it will be there. So this is the total elements, transmission elements. For there are so many elements are there in the network. In order to monitor these networks, we require some NOC type of facilities. At present, we have got some NOC. Then we want to upgrade it to some type of transport NOC, transport NMS type of thing. We want to upgrade it. So that is also in the pipeline, so that we will be having a single view of all the transmission elements. Not only the transmission elements, we'll be integrating fixed line all the elements also in that. So this NMS will be integrated for CFA and enterprise business, so that overall view of entire thing will come in this. And there will be our plan is to have this zero touch type of provisioning part also.
If something, suppose small rotors, if you CPAN or something, if somebody wants to plug into this network, automatically plug and play type of things should happen. Such type of thing also we are planning. Ultimately, the future is automation is only the key for that. So we are moving towards that automation slowly. That is the main aspect of that. To monitor and control and having a total view of entire transmission network, inventory management, all these aspects should be controlled from the single NMS. That is our main aim. For that also we are moving towards in that line. In addition to that, we already procured RFTMS. I think CNP might have told. RT, that is real-time fiber management system, RFMS or RTFMS or something, whatever may be. Ultimately, it is a real-time fiber management system where these most of the voting nodes will be equipped with nodes and the fiber will be connected. Automatically, if any cut happens at a certain place, it will be detected, it will be intimated to the certain the field personnel so that he can move immediately. So such type of automation also we are bringing in the system also. So these are the lot of measures we are taking. Parallelly, the control, the maintenance, in order to improve the maintenance philosophy of BSNL, what we are doing is we got it developed this Preswell app, which is very useful tool. Have you implemented in the Bangalore? Totally all FRTs are under that Preswell app. Okay. That is very useful tool. The movement of FRTs, at what time the fiber cut happened and movement at what time we moved and at what time we got it resolved, that fiber cut, all these aspects will be recorded in the Transnet through Preswell app, and all these things are integrated. So this is very important tool to enhance the maintenance and give a better quality of service to the customer. So kindly use this Preswell app also, because wherever we have seen, whichever circles, whichever SSAs or BS using this Preswell app, they are doing a better quality of service parameter. They are having a better quality of service parameters compared to the others. So this is a very useful tool, and in addition to that, this Preswell app we are again evaluating with the industry standard some big applications, software applications are available. We are evaluating, and we are seeing whether these all the features are captured in this app or not. If something is missing out, we'll try to take those features also. If not possible, we'll go for the industry standard application at later date also. That also in the pipeline. All these aspects, ultimately our aim is to give a better service to the customer so that the customer retention will happen, and once customer retention happens, if you give a better service through word of mouth, we can generate more customer base so that we can generate the revenue. For BAs, the main role is you have to focus on generating the revenue. You have to see the quality of service parameters to all the customers, and day-to-day monitoring and persuasion with all your teams, and so you have to be more pushy. So with that only you can get the results. I hope that this training section, whatever happened today through our team, it might be useful to you. If any further developments you require, you give the feedback so that we can modify and we can come back. And somebody is suggesting that requesting and suggesting that some more EB related training programs and such type of skills sets are to be required for NAM, CAM and other things. For that we'll plan separately, either through online program or offline program also we'll see, so that at least that training schedule and those capability buildings also very much required, because EB NAM camps is nothing but a sales force with some technicality. Both are required. He has to provide a technical solutions along with the commercials, that type of
skill set is required. For that also we'll definitely we'll try to conduct some more training programs for them. So with this, I hope this financial year will be good and we'll move forward in a better way. And glory days should come for the BSNL. Thank you. Thank you, sir, for giving insightful of what is happening in BSNL and the measures being taken. Sir, your presence have added unparalleled values to our sessions, training sessions. We are deeply grateful for your time and expertise. Without further ado, I will request my our PGM Sri Dhore sir to give a moment to as a token of love from ALTTC. Please. After that, may I request PGM Sri Dhore sir for giving a formal vote of thanks to this house. Please, sir. Honorable Director, Enterprises Business, Sri B. Ramesh sir, guest speaker, reputed BA heads, IFAs participating in this prestigious training. It is a matter of great pride and gratitude to express my vote of thanks on this fourth day of the seventh batch of this prestigious BA head IFA at trainings. On behalf of ALT fraternity, I sincerely thank Sri B. Ramesh sir, Honorable Director. This interaction session and addressed concluding remarks is very effective and informative for all BA heads, IFAs. ALTTC is once again grateful to Director sir for sparing precious time from his busy schedule to interact with the BA heads. We are grateful to our distinguished speakers who are imparting this training to train and groom our officers as future leaders and to hold the important position of BA heads. We are grateful to all the participating officers who took interest in the day-long session. We are also thankful to all the GMs, DGMs, faculty heads, and all the officials of ALTTC for the good and smooth conduct of today's session. Finally, I am grateful to all those who are directly or indirectly involved in the smooth conduction of this session. We are trying our level best in future also. Thanks. Thank you, sir. Before we disperse after the closing of this session, I will request all of you to please come near the dais so that we can have a photo session with the director, sir. Sir, it will take only 1 minute, sir, please.